Who's the pretty face now? Where's my cargo? Always keep them on the prize, cause when I take a look over my life, it always go left and never go right. You stole Lupe. Lupe? For you, stupid, it's Guadalupe. Lupe! What'd they do to you, girl? Shh. Huh? Darn right. And a traitor doesn't deserve such a pretty face. Whatever. Just shut it. Why? You're not enjoying a little tete-a-tete? Who's the pretty face now? Hey, you! You stole Guadalupe! Get a real girlfriend, dumbass! Not a real... screw you! I had to sprint all over town for my deliveries. I'm no thief. I just borrowed your ride for a job. Steal this white whale van and I'll give you twice as much. Why are you here? Funny you'd ask. Sorry, miss. Someone just stole my Lupe and I had to sprint all over town. Yeah. Noodles won't get you out of the city, you know. If you want real cash, work for me. I know a loser could use some help. A loser? Come on, can't you stop wasting your life with these dirty jobs? When you stop acting like your crooked dad! He was your father too, Tatsuya. Oh, was he? The Garcia brothers. What are you doing here, kiddos? Well, my brother here was about... Shut up, man. Shiro, Tatsuya, you don't have to take your father's path. It's all here. Okay, good job. Send it to HQ. You are at a crime scene, kiddos. I'm afraid I have to detain you. No! It's my fault, Mr. Mark. My bike was stolen, so I... Couldn't you just call us, Shiro? Be smarter than that. Yeah, I'm sorry. So, we're good? Good wouldn't begin to describe the electric atmosphere here for the Prison Tower grand opening. The building will finally open its doors to the lucky ones. What? I was defending you. Great job, noodle At least guy. we're not involved in that gal's mess anymore. Explosives? Thanks, but no hey! Where's my cargo? No fireworks for you. The warder's got it. I came here through the evidence room. Nothing else than an ugly bike. Hey! Lupe is not... What are you saying? If that Moby Dick truck is not here, it's been taken. Moby Dick? Wait, you think that the whales... Have a mole here? Yep. That still doesn't tell us where... The best catering companies are ready to serve delicious food for the most important... Mwah! Losers. Guess what I'm thinking? Saving the day with your fave bro to clean the Garcia's name and... Borrow a swank car from some drunk rich people and scram. Man, rich people can't hold their liquor. Yeesh. Okay, let's beat it. Beat it? With all these people in the building? That is the idea. Yes. Mr. Mark, sir, it's great you're here. He's the crook, stupid. Crook? No. I'm a supplier. I bring chaos, and then I provide order. Full circle, see?
We won't let you do this! Your father said the same. Keep my friends close, but my enemies close. Thought we were family, but now I see that I can't trust nobody in this world. And this name is in the whole world. My life ain't safe, I never know I gotta go get this money. You wanna go against but I never see you try. And I lost focus, but now I'm back. Gotta tell the story. My heart is racing, it's like music. Sometimes I feel like I'm blue. This pain will not leave me down, 'cause in my back that's where you stand. And here we are right at the top of the brand new Grizzly Tower. The view from that glass terrace. What? I used a pocket knife just like this one on your Snoopy dad. Full circle indeed. Your whole family are bad apples after all. Huh? Supplier! How'd you like them apples? My friends close, but my enemies close. What was... Did you just drop our only evidence? You're welcome. Full circle indeed. Full circle indeed. You two suck at following orders, but against losers was a bit hard. Need a ride? Thanks, miss, but I think my bro and I need to... Tatsuya? Tatsuya! Welcome to the auctions of the inaugural season of Booyah Premier League. मैं हूं आपका होस्ट कुणाल सलूजा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्री फायर मैक्स के वो खिलाड़ी जिन्हें आपने मोबाइल गेमिंग पे देखा है, जिन्हें आपने स्ट्रीमिंग करते हुए देखा है, आज वो यहां आपको उनके लिए बिड करते हुए टीम्स दिखाई देंगी और बहुत जल्द वो आपको क्रिकेट के मैदान पर चौके छक्के लगाते हुए दिखेंगे। लेकिन उससे पहले कि हम ऑक्शन की तरफ बढ़ें, आइए सर मैं आपको मेरे दोस्तों से इंट्रोड्यूस कराता हूं। मेरे दो बेहतरीन दोस्त ऑरा एंड शैडो। व्हाट्स अप गाइस, हाउ आर यू? थैंक यू फॉर द वार्म वेलकम कुणाल। बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स अ फर्स्ट एडिशन ऑफ बूया प्रीमियर लीग एंड काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है। देखिए आपने बिल्कुल ये बात सही कही है कि देखिए फाइनली हम इनको ग्राउंड पे जाते हुए देखेंगे, पर उससे पहले ये नेसेसरी स्टेप है जिसको क्लियर करेंगे, ये टीम बनाएंगे, देन उसके बाद ग्राउंड पे जाएंगे। यार शैडो, मुझे एक बात बता, गेम में तो चलो आप अपनी उंगलियों से बुया कर लेते हो, यहाँ पे तो अपने ब्रेन्स से बुया करना होगा अगर आपने, क्योंकि बिडिंग में आपने कमाल किया तो ही फिर ग्राउंड में प्लेयर्स आपकी कुछ कमाल कर पाएंगे। व्हाट्स अप ब्रो? यस, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये जो ग्राउंड है, मैच है, वो ग्राउंड में खेला जाएगा। हाँ। नॉर्मली घर पे बैठ के बैटल ग्राउंड का गेम घर के पे खेलते थे, बट आज पहली बार होने जा रहा है बूया प्रीमियर लीग फर्स्ट सीजन। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मुझे लगता है सभी ऑडियंस जो हमें देख रहे होंगे स्क्रीन के उस तरफ, वो लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है जहाँ पे सभी अपने ओनर्स बैठे हैं, सबका दिल धम 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 करते दिख रहा है। मैं थोड़ी देर पहले गया था थोड़ा इंस्टाग्राम पे लाइव करने। हाँ, वो मैंने देखा था, आपका सोशल मीडिया गेम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है शैडो। वैसे मुझे एक बात बता यार, बिकॉज देयर आर सो मेनी प्लेयर्स, गेम में तो इतने बढ़िया खेलते हैं ये लोग, है ना, इस कोने से उस कोने तक भाग भाग के चले जाते हैं, उछल जाते हैं, लेकिन वो गेम में होता है, क्रिकेट के मैदान में खुद करना होगा। हु डू यू थिंक इज द फिटेस्ट प्लेयर, जिसको लगता है कि यार ये बंदा ना क्रिकेट के मैदान पे भी तबाही मचाएगा? फिटेस्ट? मैं कल एक देखा, जितना मेरे को कल मैंने पूरा ऑलमोस्ट सभी प्लेयर्स को देखा। मेरा एक है प्लेयर, मेरा चॉइस प्लेयर है, मुझे पता नहीं कितने लोगों को चॉइस होगा वो, बट अंशु जूनियर इज वो ऐसा जिम में बहुत टाइम नहीं बताता है, जिम एंड आई थिंक ही इज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर। ओहो हो अंशु, उन पे खास करके निगाहें होंगी, लगता है सबसे ज्यादा पर्स उन्हीं पे खर्चा होने वाला है। व्हाट डू यू थिंक ब्रो? और कोई नाम?
आई थिंक सो जो आज के डे में सबसे ज्यादा हाईलाइट में रहेंगे मेरे ख्याल से ब्लैक वन ऑफ दोज प्लेयर्स, एंड आई थिंक सो ओल्ड मॉन्क वन ऑफ दोज प्लेयर्स रहने वाले हैं जो काफी ज्यादा हाईलाइट में होंगे, क्योंकि दोनों का ही काफी इंटरेस्टिंग गेम जाने वाला है। आपने अभी अभी ऐसा नाम लिया, मैं आपको उसके बाद मेरा गेमिंग नेम बताया तो माय नेम इज आईजी सोबर। ओके, चलिए अब ऑक्शन की तरफ बढ़ते हैं। आपको सबसे पहले बता दिया जाए कि सब टीम्स को 11 प्लेयर्स लेने हैं। अब 11 प्लेयर्स तो सबको लेने हैं, टोटल 6 टीमें हैं। एक प्लेयर सारी टीम ले चुकी है, वो मार्की प्लेयर्स हैं, तो बच्चे 10-10 सबको लेने हैं, जिसमें से 3 बल्लेबाज मिनिमम लेने हैं, मैक्सिमम आप 6 ले सकते हैं। 2 गेंदबाज मिनिमम, मैक्सिमम 4, एंड 2 ऑलराउंडर मिनिमम, मैक्सिमम 4। कैटेगरी ए के 25 प्लेयर्स आएंगे सामने, कैटेगरी बी के 38 प्लेयर्स आएंगे सामने। टोटल स्क्वाड साइज होना चाहिए 11 प्लेयर्स का। एक मार्की प्लेयर सबने ले लिया है, तो अब अपने पर्स में से उन्हें 10 प्लेयर यहां पर 6 की 6 टीम्स को खरीदने हैं। 5 करोड़ FF कॉइन्स का पर्स मिला, और जब प्री ऑक्शन में मार्की प्लेयर्स को लेने के लिए हिडन बिड्स हुए, तो उस समय क्या हुआ, आइए आपको वो भी दिखाते हैं कि किस किस टीम ने किस किस खिलाड़ी को लिया और उसके बाद किसका कितना पर्स बचा। बॉस, प्री ऑक्शन में काफ़ी तहलका मचा। कुछ लोगों को स्टील डील मिली, तो कुछ लोगों ने करोड़ तक खर्चा कर दिए। बिल्कुल, है ना। चलिए थोड़ी देर में उसकी तरफ भी आपको लेके चलेंगे। उससे पहले हम आपको ऑक्शंस दिखा देते हैं। 3 राउंड में ऑक्शन होंगे, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। राउंड 3 में वो सारे अनसोल्ड प्लेयर्स आएंगे जिनके ऊपर बिडिंग हुई, लेकिन वो किसी कारणवश किसी ने उन्हें खरीदा नहीं। प्री ऑक्शन में आप देख सकते हैं मार्की प्लेयर्स बिके, बेस प्राइस था 20 लाख। कैटेगरी ए के प्लेयर्स, उनका बेस प्राइस भी होगा 20 लाख, एंड कैटेगरी बी के प्लेयर्स, उनका बेस प्राइस होगा 10 लाख। और जो बिडिंग की इंक्रीमेंट होगी वो 5-5 लाख से बिडिंग इंक्रीमेंट होती जाएगी। तो जो फर्स्ट बिड होगी दैट विल बी 20 लाख। उसके बाद जो भी दूसरी टीम बिड करना चाहेगी वो सीधा बढ़ के पहुंच जाएगी 25 लाख। बिल्कुल, आइए आपको दिखाते हैं किस टीम के पास फिलहाल ऑक्शन के लिए कितने पैसे बचे हैं। और ये आपके सामने भाई साहब, यहाँ पे कलहारी नाइट्स ने तो बहुत ही ज्यादा स्टील डील ले लिया। और देखिए ऑलरेडी वो काफ़ी अच्छे मार्जिन के साथ चल रही हैं, और जितने ज़्यादा आज आपके पास इकोनॉमी होगी, पर्स पे वैल्यू होगी, उतना ज़्यादा आपको आज हेल्प होगी। आप ज़्यादा वाइड बाई कर सकते हैं। तो ऑलरेडी 0.20 CR ये एक सही आंकड़ा रहने वाला है। अब देखते हैं आज के डे में किस तरीके से इनका पर्स खाली होता है। बट अगर हम ध्यान दें, ऑन दी अदर साइड हमें नजर आएंगी कुछ ऐसी टीम्स जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्पेंड कर दिया है। 3.80 CR ये होने वाले हैं अल्पाइन एसेस। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ रहने वाली है। 1.2 CR उन्होंने ऑलरेडी स्पेंड कर चुके हैं, और वो 1 करोड़ 20 लाख शैडो जिस पे खर्चा किया है, दैट इज फौजी अजय। और बहुत खतरनाक प्लेयर है यार, लेकिन ये एक प्लेयर क्या क्रिकेट के मैदान पे भी उतना ही खतरनाक साबित हो सकता है। व्हाट डू यू थिंक ब्रो? यस, फौजी अजय भाई गेम के बैटल में सबके छक्के छुड़ाते हैं, जितना हमने देखा है। और वहां छक्के उड़ाएंगे ये तो अपने को दिखेगा क्रिकेट के मैच में, बट आज तो ब्रेन गेम होने वाला है, क्योंकि देखा जाए तो सबसे ज्यादा कॉइन उन्हीं के ऊपर खर्चे हुए हैं। पर्स थोड़ा ढीला है, बट मुझे लगता है अगर स्ट्रैटेजी परफेक्ट होगा तो बाजी मार लेंगे। बट गाइस, डू यू थिंक क्या कोई ऐसा प्लेयर है ऑक्शन में जो आएगा जिसपे फिलहाल जो हाईएस्ट बिड है 1 करोड़ 20 लाख, उससे ज्यादा भी बिड होगी? आई थिंक सो, मेरे को लगता है एक प्लेयर आने वाला है। आई थिंक सो वो ओल्ड मॉन्क रहने वाला है, क्योंकि काफ़ी कमाल का वो खेलते हैं। एंड मुझे लगता है कि 1.2 CR ये मेरे ख्याल से वो नहीं रहने वाला कि मैक्सिमम बिड, इससे ऊपर भी जाएगी। और मुझे लगता है कि कई सारे कैप्टन ऐसे होंगे जो ज़्यादा स्पेंड करेंगे शुरुआत में। एंड व्हाट डू यू थिंक शैडो, तेरे को लगता है कोई प्लेयर पार करेगा इससे? आज मेरे को लगता है एक प्लेयर पार करेगा, क्योंकि उस प्लेयर ने अपना आज ही फेस रिवील करा है, डैडी कॉलिंग। मैं उसके ऊपर तो बैट लगाऊंगा, क्योंकि जिस टीम के ऊपर वो जाएगा, जितना मैंने देखा उसका ट्रेलर दमदार, तो मुझे लगता है गेम के अंदर भी वो दमदार बैटिंग करेगा, क्योंकि जितना अपने वीडियो में देखे थे अपन, बहुत छक्के छुड़ाता है वो। भाई अल्पाइन एसेस का आपने देखा था, पर्स बचा है 3 करोड़ 80 लाख। 1 करोड़ 20 लाख उन्होंने टीजी फौजी अजय पे खर्च कर दिए हैं। तो अब 3 करोड़ 80 लाख में उन्हें लेने हैं 10 खिलाड़ी। मैक्सिमम ए कैटेगरी से आप 5 प्लेयर्स ही ले सकते हो, बाकी आपको सारे बी कैटेगरी से ही लेनी है। और ये भी तो एक रूल है ना यार, कि ए कैटेगरी से आप 4 प्लेयर्स बिड कर लिया, 5वें के लिए तब तक बिड नहीं कर सकते जब तक बाकी टीम्स के मिनिमम 3 प्लेयर्स फ्रॉम ए कैटेगरी ना हो जाए। बर्मुडा ब्लास्टर्स की तरफ बढ़ते हैं। रॉकी रॉक्स 30 लाख रुपए, RDX माफी चाहूंगा, रॉकी RDX यार 30 लाख रुपए में स्टील डील शैडो। ऑब्वियसली आई थिंक एक ही 2 बिडिंग इसके ऊपर गए हैं, एंड मुझे लगता है बहुत ही सस्ते में मिले, और लगता है ऑलराउंडर ही है।
चलिए अगली टीम की तरफ बढ़ते हैं। कलहरी नाइट्स, टीजी, डिलीट। भाई ये दो भाई अलग अलग टीम में है, फौजी अलग टीम में, डिलीट अलग टीम में, फौजी 1-20 में, डिलीट 20 में। ये अन्याय क्यों हो रहा? देखिए सबसे पहली बात ये है कि इनका बॉन्ड बहुत अच्छा है और आज अगेंस्ट खेलने वाले हैं एंड दोनों के दोनों अलग टीम में जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल भी ये रहने वाला है कि इनके अलावा 2 प्लेयर और आने वाले हैं टीजी की तरफ से, तो वो कौन उठाएगा? क्या डिलीट की तरफ जाएंगे या फिर फौजी जी की टीम की तरफ जाएंगे? क्या मजा आ जाना, सारे अलग अलग टीम में जा रहे हैं। चलिए अगली टीम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्टरा नवाब्स एंड यहाँ पर टीएसजी लेजेंड 50 लाख में इन्होंने लेजेंड को अपनी टीम में ले लिया, अनदर लेजेंड ऑफ द गेम। यस, क्योंकि मैंने जितना देखा उस टीम के ओनर जो अपने ऋतिक भाई एंड सुनीता है, पहले तो बात यह है कि ऋतिक भाई टीएसजी एंड लेजेंड इज आल्सो फ्रॉम टीएसजी, सो पहले से ही थोड़ा कोऑर्डिनेशन बना हुआ है उनका। सो मुझे लगता है वो बहुत ही अच्छा होगा उनका भाई। और एक और टीम जो बिल्कुल यहाँ बिडिंग में पीक पे जाना चाहती है, उस टीम का नाम है पीक पैंथर्स। जॉन्टी गेमिंग, इन्हें भी अपनी टीम में लिया उन्होंने इन 100 lakhs एंड काफ़ी अच्छी बिडिंग हुई थी इनके लिए भी वहाँ पर। बिल्कुल। पीक पैंथर्स के अंदर मुझे लगता है कि एस12 के और प्लेयर्स आ सकते हैं, क्योंकि एस12 रिलेटेड ये टीम बन सकती है, क्योंकि ऑलरेडी सिड एंड पहाड़ी वहाँ होने वाले हैं। इसके अलावा अभी भी एस12 से कुछ और खिलाड़ी, जहाँ तक मुझे याद है 2 खिलाड़ी और आने हैं, तो शायद से उनको उठाने की कोशिश करेंगे, पर वी नेवर नो कि इन्होंने प्लान क्या कर रखा है। भाई पीक पैंथर्स हो गया और इसके बाद अगली टीम की तरफ बढ़ते हैं जिनका नाम है सोलारा सुल्तान्स। वासियो, ये खिलाड़ी बहुत ज़्यादा चर्चा में हर जगह। वासियो है तो मुमकिन है। यस, वासियो है तो मुमकिन है एंड सोलारा सुल्तान्स में वासियो है और उस टीम के और 2 नवाब भी हैं जो कि हैं मुन्ना भाई एंड नॉन स्टॉप गेमिंग। क्या बात कर रहे सर्किट? सो बहुत ज़्यादा सोच समझ के प्लान। कल रात को मैं देखा नॉन स्टॉप भाई एंड वासियो भाई रात के 2:30 बजे तक अपना स्ट्रैटेजी लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे? वो मुझे नहीं पता है वो। मुझे ये बताया वो स्ट्रैटेजी लिख रहे थे। तो चलिए हमने आपको सारी टीम के पर्सेस बता दिए, हमने आपको ये बता दिया कि कौन कौन से मार्की प्लेयर्स वहाँ पर उन्होंने प्री ऑक्शंस में लिए जिनके लिए हिडन बिड्स हुए, और उसके बाद ये बड़े बड़े नाम उस टीम में चले गए। अब इन 6 टीम्स को 10 और खिलाड़ी अपने टीम में लेने हैं और वो जो 10 नाम होंगे वो इस ऑक्शन में बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग करनी होगी। जैसे कि हम शुरू से कह रहे हैं, इट्स टाइम टू डू बूया विद ब्रेन्स, क्योंकि यहाँ पर अगर सही समय पर बिड नहीं किया तो शायद आपकी पसंद का खिलाड़ी आपके हाथ से निकल सकता है। ओके गाइस, मुझे कुछ ऐसे नाम बताओ जिनके लिए आज मतलब यहाँ पर टेबल टूटने वाले हैं कि ये तो चाहिए ही चाहिए हमें। आई थिंक सो मैंने ओल्ड मॉन्क का नाम ऑलरेडी ले लिया है। उसके अलावा बताओ, तेरा फेवरेट हो गया ये। लुइस वन ऑफ दोज प्लेयर्स, काफ़ी कमाल का प्ले करते हैं एंड काफ़ी लोग पसंद भी करते हैं उनका, और ऑलरेडी इन गेम तो जितना अच्छा खेलते हैं आप ग्राउंड पे अगर आप उनको देखेंगे, एक्चुअली हमने उनका प्ले देखा था, कमाल की फॉर्म है, कमाल का प्ले करते हैं, तो आई थिंक सो वो प्लेयर रहने वाले हैं। 3 हो गए नाम। एंड इसके अलावा डैडी कॉलिंग का नाम लिया था इन्होंने, बिल्कुल आज फेस रिवील भी होने वाला है, और इसके साथ ही साथ यहाँ पे उनका जो प्ले स्टाइल है, अभी भी काफ़ी लोग कह रहे हैं कि कुछ छुप रखा है, कुछ छुपा रखा है, बट देखते हैं कि किस तरह के उनका बैकग्राउंड भी है क्रिकेट का। ओके, आप बताओ और कौन से प्लेयर? एक और प्लेयर मेरे दिमाग में है, बादल। वो बहुत बढ़िया खेलता है, मुझे लगता है उसके ऊपर भी बहुत आज टूटने वाला है बिडिंग पूरा। अच्छा, मतलब आपको लग रहा है कि ये खिलाड़ी होने वाली हैं जो कि सबसे ज़्यादा हाई बिडिंग्स पे जाने वाले हैं, which is wow, too good। तो भाई ऐसे कुछ खिलाड़ी हैं, आपको पता चल गया, जिनके लिए यहाँ पर बिडिंग में एक्चुअली में वॉर होने वाला है। एक बार फिर से आप सबको बता दें, दिस इज द ऑक्शंस ऑफ द इनॉग्रल सीजन ऑफ बोया प्रीमियर लीग। फ्री फायर मैक्स के खिलाड़ियों को आपने आज तक मोबाइल गेमिंग में देखा है, आपने स्ट्रीमिंग पे देखा है, लेकिन अब बहुत जल्द आप उनको क्रिकेट के मैदान पर क्रिकेट खेलते हुए देखेंगे। कई कमाल के ऑलराउंडर्स, कई कमाल के गेंदबाज, कई कमाल के बल्लेबाज, बहुत ही जल्द बिडिंग की तरह हम आपको लेके जाएंगे। ओके गाइस, टीम डायनामिक्स की हम बात करें, जैसे हमने बात किया कि यार फौजी अलग जगह है एंड हमारे डिलीट अलग जगह हैं और बाकी लोग हैं। बहुत ही जल्द हम वहाँ पे जाने वाले हैं, मिनी के पास हमारी स्टेज होस्ट हैं, वो बहुत ही जल्द ऑक्शन शुरू करेंगी। एक नाम बता दो, क्या लगता है फौजी और अजय को किसका साथ मिल जाना चाहिए? सॉरी, फौजी और डिलीट को। आई थिंक सो माफिया और माफिया वाला दोनों होने वाले, तो शायद से माफिया की तरफ जा सकते हैं वो ज्यादा। अच्छा, माफिया की तरफ जाएंगे। चलिए, ये तो माफिया की तरफ जाएंगे। हम चलते हैं हमारी स्टेज होस्ट मिनी की तरफ, जो कि ऑक्शन शुरू करने के लिए बिल्कुल तैयार है। मिनी, हम आपसे दरख्वास्त करेंगे जल्दी से इनॉग्रल सीजन ऑफ बीपीएल का ऑक्शन शुरू करें। Well, good evening, ladies and gentlemen. A very, very, very warm welcome
to everyone in this room and, of course, the lakhs of viewers watching us live on YouTube. Welcome to the player auction of Booyah Premier League. Can we make some noise? Can we have a round of applause, a louder cheer? Come on. That's more like it. Ladies and gentlemen, this is where India's favorite game, Free Fire Max, will meet India's favorite sport, that is cricket. तो Free Fire Max की ये जो Booyah Premier League है, ये सिर्फ एक cricket league नहीं है, बल्कि of course it's a celebration of passion, of competition, and of course our community sitting together under one roof today. Ladies and gentlemen, Free Fire Max के e-sport athletes, content creators, आज हम सभी we are going to step on to the world of cricket and of course show our love to the game. This is your host Mini Devan, and I'm going to make sure that we have fun along with all the auction participation. Over the coming days, of course, we can expect some high intensity cricket, fierce team activities, and let's not forget some electrifying fan moments क्योंकि आप सभी के fans आपको देख रहे हैं. I hope you can send some love in the chat box and in the comment box as well. उसी के साथ मैं आपको बता दूं कि this is going to be one of a kind league, ladies and gentlemen, जहां आप गेमिंग एनर्जी का ब्लेंड देखेंगे क्रिकेटिंग ड्रामा के साथ. तो आज की ये शाम है बीपीएल के ऑक्शन के नाम. But before we dive into the further formalities of the days, it's very, very important, ladies and gentlemen, to also hear it from the visionaries themselves. जैसे कि आप देख सकते हैं आज यहाँ बहुत ही खास 6 teams हैं, right from Solara Sultans to Kalahari Knights to peak Panthers to Bermuda Blasters to Nexterra Nawabs and Alpine Aces. आज आपकी टीम कंप्लीट होने वाली है, लेकिन यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे आपके टीम ओनर्स, द विजनरीज, जिन्होंने ये टीम बनाने का जिम्मा अपने कंधे पे उठाया है. सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी स्पेशल मोमेंट, अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट मोमेंट. And now, without any further ado, I would actually call all these team owners on stage one by one. We'll invite them क्योंकि आज ये सिर्फ एक टीम नहीं बनाने वाले हैं दोस्तों. They are also going to build a legacy for this first season of Booyah Premier League और साथ ही हो सकता है आने वाले कई seasons के लिए भी. So are you set? If you're set, just give me a loud cheer so that we can begin and call these owners and introduce all the teams to you one by one. Are we set, ladies and gentlemen? Yes? That's more like it. That's more like it. Thank you. On that note, ladies and gentlemen, please put your hands together for our very first team. Let's begin with Alpine Aces. Can we make some noise for the owners? Ladies and gentlemen, PN Rose and Badge 99. Welcome, PN Rose. Unfortunately, Badge 99 could not join us today, but PN आप आ चुकी है. How's the feeling, यार? टीम की शुरुआत आज उद्घाटन इस ऑक्शन का आपके साथ हो रहा है. फीलिंग कैसी है? बिल्कुल चश्मा वश्मा लगा के आप पूरे सेट लग रहे हो. How's the feeling? How's the जोश? बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है. बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है. चलो आते ही माइक खराब हो गया. बट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है. शुरुआत मेरे से हो रही है तो आई होप, पैसे भी सबसे ज़्यादा मैंने ही लगाए थे. मैं बिल्कुल इस पे आने ही वाली थी कि इतने ज़्यादा पैसे जो आपने लगा दिए, जबकि मैं थोड़ा सा रुकूंगी क्योंकि जिस पे आपने पैसे लगाए हैं उसको भी स्टेज पे बुलाना बहुत ज़रूरी है. और फिर ये सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी क्योंकि द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एज ऑफ नाउ, लेडीज एंड जेंटलमैन, PN रोज अपना धावा बोल चुकी हैं. तो बट बिफोर वी डाइव इनटू दैट, क्यों ना आपकी जर्सी रिवील कर ले पहले. व्हाट से? लेट्स सी द कलर्स दैट अल्पाइन एसेस विल फाइट फॉर. लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर्स the jersey.
क्या बात है? Can we make some noise as the jersey is revealed? Ladies and gentlemen, bleeding blue on PN Rose already. Can we have a round of applause for this? Wow, PN Rose, I think you're all set. I can see you in that tie already. But jersey हमारे सामने है, आप हमारे सामने हैं. क्यों ना आप बुला लिया जाए the face of your team? What say? Yes? Ladies and gentlemen, it's time now to welcome the marquee player of Alpine Aces. Can we make some noise for TG Fozzy Ajay? Welcome, 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 sir. क्या बात है यार, आप लोगों ने ऐसे पूरा सेटल किया हुआ है यार. The look, the shade, this is pre-planned. एकदम हम style से आएंगे, swag से आएंगे. Is this the team identity that we are going to see for the rest of the members also? बिल्कुल, अगर टीम हमारी आई है तो अभी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, अब फाइनली आ रही है ये. तो जैसी अभी हमारी वाइब रहने वाली है, तो सेम जो हमारी टीम में प्लेयर आएंगे उनकी वाइब ऐसी रहने वाली है. तो इस वाइब को मद्देनजर रखते हुए पीएन अब बताइए, द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर लाइक वी सेड 1.20 CR, ऑलरेडी आपका पर्स कम हो चुका है, आपने अपने काफ़ी सारे पैसे फौजी पे ऑलरेडी लगा दिए हैं. ऐसा क्या देखा आपने इनमें? ऑब्वियसली सबको पता है कैप्टेंसी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है. कैप्टेंसी. तो चलिए इसी के साथ साथ ही ये दावा भी हो चुका है कि टीम को आप ही लीड करने वाले हैं. लेकिन फौजी, ऐसे में देखा जाए जो आपका दोस्त है, आपका भाई है, वो यहाँ अभी तक नहीं है क्योंकि वो जा चुके हैं कालहारी नाइट में टीजी डिलीट. तो क्या लगता है अब हमें फील्ड पे कंपटीशन देखने को मिलेगा या भाईचारा ऑन टॉप रहेगा? अभी भी भाईचारा तो ऑन टॉप रहने वाला है, लेकिन वो अलग टीम में गया, मैं अलग टीम में, तो एक अलग मजा आने वाला है. तो उसको हम भी इंजॉय करेंगे और ऑडियंस भी इंजॉय करने वाले काफी ज्यादा. लेकिन कंपटीशन देखने को तो मिलेगा ना? ऐसा तो नहीं है कि भाई भाई के चक्कर में एकदम कंपटीशन स्पिरिट कम हो जाए. 1 करोड़ 20 लाख लगे हैं. हाँ. तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा. एब्सोल्युटली. क्या बात है यार. वेल, which is fantastic. Can we make some noise for both of them and the team Alpine Aces? Thank you, thank you, thank you, thank you. Please take your seats. All the best for the auctions. Well, I hope कि बिल्कुल जो आप चाहते हैं वही आपको मिल जाए in this. All right, ladies and gentlemen, this was Alpine Aces for all of you. Let's move ahead and now let's move to the team 2. Ladies and gentlemen, our second team of this evening, Bermuda Blasters. Can we make some noise for the team owners, Assassin's Army and Aditya Kulshresht aka Kulu? Hi, hello. Welcome, 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 Assassin. कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? बिल्कुल, आपकी आवाज़ सुन के मज़ा ही आ गया. इट सीम्स लाइक आप में काफ़ी ऑलरेडी दम के साथ आए हैं. अनफॉर्चुनेटली कुल्लू आज यहाँ नहीं है, बट आप आ चुके हैं. आप ऑलरेडी एकदम दमदार लग रहे हैं. यस, पूरी तैयारी है और बहुत तगड़ी टीम बनाने वाले हैं हम आज. अच्छा, मैंने आपके बारे में सुना है आप बहुत प्रैंकिंग में माहिर हैं और कुल्लू तो हम जानते ही हैं कॉमेडी में माहिर हैं. तो क्या आपकी टीम जो बनने वाली है उसमें क्रिकेटिंग के अलावा बहुत सारा एंटरटेनमेंट, बहुत सारी प्रैंकिंग, एंटरटेनमेंट बिहाइंड द सीन्स, ये सब चलने वाला है? यस, टीआरपी तो हमारी टीम से ही आएगी आप लोगों को. क्रिकेट आप लोग देखते रहो, टीआरपी हम आपको दे देंगे. बर्म्यूडा ब्लास्टर्स के पास कंटेंट की कोई कमी नहीं रहने वाली है ना? ट्रॉफी भी आएगी हमारे पास. ट्रॉफी भी आएगी लग रहा है. अच्छा, एक बात बताओ, क्योंकि ट्रॉफी की बात हो ही गई है, आपको क्या लग रहा है? बिकॉज बाय नाउ वी नो मार्की प्लेयर्स, बाय नाउ वी नो क्या टीम कैसी, क्या ओनर कौन कहाँ बैठा है, और आप इन लोगों को जानते हैं, राइट? सो कैन यू टेल मी कि आपको क्या लगता है कौन सी टीम जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा आपको कंपटीशन दे सकती है? मुझे कलारी नाइट्स पे लग रहा है कि वो उनके पास बजट ज़्यादा है, उसके वजह से वो हमें बिल्कुल उनका पर्स उन्होंने बड़ी स्ट्रैटेजिकली पिट किया है. हमारा भी बहुत अच्छा पर्स है, लेकिन उनका हमसे ज़्यादा है. वो एक ही टीम है जो हमें टक्कर दे सकती है, परेशान कर सकती है हमको. परेशान कर सकती है. वेल, दैट इज ट्रू. अब देखते हैं कि परेशानी आने वाली है या आप उनको परेशानी दे देंगे, ये तो वक्त ही बताएगा. अगर उन्होंने हमको परेशान किया तो ऑब्वियस सी बात है हम भी उन्हें परेशान करेंगे. क्या बात है. वेल, दैट्स द स्पिरिट. ऑन दैट नोट, लेडीज एंड जेंटलमैन, अब क्योंकि इन्होंने दावा दे दिया है कि हम भी परेशानी देने के लिए तैयार हैं, तो इनके फेस ऑफ द टीम यानी कि मार्की प्लेयर को भी एक बार स्टेज पे बुला देते हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर रॉकी एंड RDX aka रॉकी मामू and the jersey. Ladies and gentlemen,
jersey of Bermuda Blasters. क्या बात है यार, एकदम full love दिख रहा है मुझे आपकी jerseys में. With that, ladies and gentlemen, as you can see, the jersey of Bermuda Blasters, Rocky Mamu. ये पहली बात तो रॉकी मामू नाम कैसे पड़ा, मुझे ये बताइए. प्यार से दर्शकों ने दिया, हमने अपना लिया. अच्छा, बट आप बताओ, आप तो जाने जाते हो यार, तो ये माइक से बॉल पकड़ने तक का जो ये फासला जो आपने ये तय किया है, व्हाट डू यू थिंक, क्या दिमाग में आया एकदम से कि चलिए यार अब थोड़ा क्रिकेट के मैदान पे उतरा जाए? नहीं, पहले भी खेल चुका हूँ और मुझे लगता है अभी भी अगर प्राइम में नहीं भी हूँ तो भी इतनी कैपेबिलिटी तो है कि अपनी टीम बरमूडा ब्लास्टर्स को जिता सकूँ. तो ये जैसे कह रहे हैं कि इनको लग रहा है कि कालहारी नाइट से थोड़ा सा कंपटीशन आने वाला है, आप सहमत हैं? कंपटीशन तो सभी से मिलेगा, लेकिन क्या है ना, ट्रॉफी रिवील होने से पहले भी उसके ऊपर लाल है और इस रेड जर्सी में उसको हम लिफ्ट भी करेंगे. क्या बात है, इसी बात पे एक हाई फाई हो जाए यार. दैट्स द स्पिरिट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. लेकिन एक और सवाल खासकर आपसे रॉकी, आपके सारे भांजे तो पीक पैंथर्स पहुंच चुके हैं. जॉन्टी पे पूरा बाय द वे 1 करोड़ एफएक कॉइन उन्होंने लगा दिया है. क्या बात है, आप क्यों रह गए, क्या लग रहा है, ये गुरु दक्षिणा मिली है आपको? नहीं, वहाँ पे उनको बैट्समैन चाहिए था मार्की प्लेयर में, दैट्स वाई. एंड ईदर वेज वी आर इन वन फैमिली, तो इतना कोई दिक्कत नहीं है. एट द एंड अगर हम जीते या वो जीते, ट्रॉफी तो मुंबई महाराष्ट्र ही आएगी. अच्छा, तो ये एजेंडा है, ट्रॉफी मुंबई जानी चाहिए. बट दैट मीन्स, क्योंकि सब भाई हैं, आई एम श्योर सब दोस्त हैं, लेकिन कंपटीशन मैं देख रही हूँ कि आपकी कंपटीशन स्पिरिट जो है उसकी दाद देनी पड़ेगी. सो ऑल द बेस्ट फॉर द बैटल्स. आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट बोथ ऑफ यू. आप जाते जाते एक मैसेज अगर देना चाहें अपने फैंस को जो आपको देख रहे हैं, वो क्या होगा रॉकी मामू स्टाइल में? बोलो आप. Bermuda Blasters में Nayan and Rocky and RDX are ready to do kaboom. Kaboom! All right, क्या बात है, जोरदार तालियां. Thank you so much. You can take your seats. Once again, ladies and gentlemen, this was Bermuda Blasters for you. Thank you so much. On that note, wow. The team spirit is already up front. हम सभी का जज्बा देख रहे हैं स्टेज पे, और इसी जज्बे की अगर हम बात करें तो आपको लेके चलते हैं तीसरी टीम की तरफ. Ladies and gentlemen, now please put your hands together for Solara Sultans. Can we make some noise? Also, Non-Stop Gaming, the owners with Munna Bhai. क्या बात है. ऑल राइट, ऑन दैट नोट, मुन्ना भाई आज नहीं आ पाए हैं क्या, बट क्या मैं बोल सकती हूँ मुन्ना भाई के सर्किट, या क्या इक्वेशन है आप दोनों का? मुन्ना भाई सर्किट भाई बोलेगा क्या? बिल्कुल, मुन्ना भाई को देखो मिस तो जरूर हम लोग कर रहे हैं, बट आई थिंक मैं और वासियो भाई काफ़ी ऑक्शन के लिए तो काफ़ी भरोसा उन्होंने जताया कि आप दोनों ही आज ज़बरदस्त बैलेंस सारी बढ़िया टीमें हम लोग क्रिएट करने वाले हैं. सो वो एक फैमिली ट्रिप पे भी गए हैं तो उधर मज़े कर रहे हैं, और इधर आप इधर करोगे, मजे करने वाले. उनकी तरफ के भी आप ही कर लेना जी. बट आई एम श्योर उनको हम बहुत जल्द मिलेंगे. लेकिन आप दोनों जाने जाते हैं फॉर मेकिंग पॉपुलर टीम्स. आपका स्क्वाड जो है वो हमेशा से पॉपुलर रहा है. एनी स्ट्रैटेजी दैट यू हैव इन माइंड ऑलरेडी, कुछ सोच के आए हैं? किस प्लेयर पे नजरें हैं आपकी, किस पे आप बिट करना चाहेंगे? बिल्कुल, स्ट्रेटेजी तो पिछले 2-3 दिन से बहुत सारी बन रही है, बट अभी के लिए वो रिवील नहीं कर सकते. तो अभी वही है कि बोल के नहीं करके दिखाएंगे, तो लेट्स सी क्या चीज़ें होती हैं. अच्छा, और अगर मैं आपसे वही सवाल पूछूं कि हम तो कॉन्फिडेंट हैं सोलारा सुल्तान को लेके, लेकिन अगर एक ऐसी टीम जिससे आप ऑलरेडी फियर कर रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं ऑलरेडी बिड्स जो है बहुत हाई लग चुकी है. फौजी 1.20 CR में बिड हुआ है. तो आपका उस ये अभी करंट माहौल को देख के क्या लगता है, किस टीम का पकड़ा अभी से भारी है? आई थिंक जिन्होंने भी अभी मार्की प्लेयर ज्यादा में खरीदे हैं तो उनका पलड़ा भारी नहीं, पलड़ा बहुत ज्यादा हल्का हो गया. बिकॉज बहुत सारे अंडररेटेड प्लेयर्स हैं अभी जो आने वाले हैं ऑक्शन में. तो आई थिंक मेरे को लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं थोड़ा रेस से हमें बाहर होते हुए नजर आ रहे हैं अभी. बिकॉज एक प्लेयर पे वो 1.2 CR 1 CR लगा चुके हैं. बट अभी हम दिखाते हैं कौन कौन से प्लेयर हैं जो कमाल करने वाले हैं, धमाल मचाने वाले हैं.
तो कमाल और धमाल की लिस्ट आई थिंक इनके माइंड में ऑलरेडी तैयार है, ये अभी रिवील नहीं करेंगे, लेकिन ऑक्शन टेबल पे हमें देखने को मिलेगा। लेकिन एक स्ट्रैटेजी जो आप ऑलरेडी लगा चुके हैं, द फेस ऑफ योर टीम, उनको बुला लिया जाए? जी बिल्कुल। एक काम करती हूँ, इस बार आप अपने स्टाइल में बुलाओ अपने मार्की प्लेयर को। लेडीज एंड जेंटलमैन, द मार्की प्लेयर ऑफ सोलारा सुल्तान। वासियो है तो मुमकिन है, बिल्कुल। एंड वासियो हमारे साथ है तो चीजें बिल्कुल मुमकिन करने वाले हैं। वासियो है तो मुमकिन है, क्या बात है। ये कब से नारा लगा शुरू हुआ है, वासियो है तो मुमकिन है? अराउंड 2020 में जब फ्री फायर मैक्स का टूर्नामेंट हुआ था FFIC, तो जब हम चैंपियन बने थे तो तब से ये स्टार्ट हुआ है कि वासियो है तो मुमकिन है। अच्छा, तो अच्छा ऑल्सो वासियो CRJ7 भी है साथ में, तो CR7 तो सुना था, ये CRJ7 के पीछे की कहानी भी जरा दर्शक सुन ले। वो मेरे मतलब फैमिली मेंबर्स के इनिशियल्स हैं ऐसे, तो फर्स्ट अल्फाबेट से उनके। अब मैं पेरेंट्स और अच्छा, तो ये वहाँ से। हाँ, अच्छा अच्छा, तो जाहिर सी बात है इनकी बातें सुन के ऑलरेडी पता चल गया है कि इनके दिमाग में बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं। इतनी सारी स्ट्रैटेजीज को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने मार्की प्लेयर आपको बनाया अपनी टीम में, तो जाहिर सी बात है कुछ तो देखा होगा आप में, कोई गेम प्ले होगा। एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू से अबाउट हिम, या आप कोई एक ऐसी चीज़ जो बताना चाहें कि मैं ये स्ट्रैटेजी लेके तैयार हूँ, बाकी मैदान पे देखेंगे? आई थिंक स्ट्रैटेजी तो हमारी क्लियर थी, बिकॉज वासियो मेरे को चाहिए था, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी में था, और बैट्समैन भी है, बॉलर भी है, तो एक ऑलराउंडर वाला जो मेरा स्लॉट है वो ऑलरेडी फिल हो चुका है एक स्लॉट, सो दैट्स व्हाई मैंने चूज किया है। बाकी स्ट्रैटेजी तो अभी रिवील नहीं करना चाहते हम लोग, लेकिन दाद देनी पड़ेगी कि पूरा दिमाग में ना पूरी मैथ्स कैलकुलेशन सब इन्होंने बिठा रखा है। ऑलराउंडर रख रही है ऑलरेडी, ऑलराउंडर है, कितने बल्लेबाज चाहिए, कितने गेंदबाज चाहिए, इनके दिमाग में इनको सब कुछ पता है एकदम। क्या बात है यार, क्या एकदम रेडी आए हो आप। इसी के साथ आप जाते जाते अपने फैंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि थोड़ा सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बट थोड़े लक की भी ज़रूरत है, तो प्लीज़ हमारे लिए थोड़ा विश कर देना कि हमें अच्छे प्लेयर्स मिल जाए आज। अच्छा, वो तभी हो पाएगा, अभी म्यूजिक बजेगा, आप जाते जाते डांस करके जाएंगे, ठीक है? ऑक्शन की शुरुआत मस्ती मोड में होनी चाहिए, ये सिंपल वॉक नहीं चलेगी। कम ऑन लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप वंस अगेन फॉर सोलारा सुल्तान। कम ऑन, वूहू! I like the swag, Vasio. I like the swag, Vasio. Very good. क्या swag है यार, superb. On that note, ladies and gentlemen, we have already introduced 3 teams to you, and you have already met the visionaries and the marquee players behind these teams. एक के बाद एक क्या strategies, क्या जज्बा हमें देखने को मिल रहा है। और क्योंकि हम जज्बे की बात कर रहे हैं, तो जो अगली टीम है वो शायद और भी ज़्यादा तैयार है, क्योंकि जस्ट मैं उनके टेबल पे देख रही थी कि कितनी ज़्यादा हलचल है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ मेक वे फॉर टीम 4, none other than Kalahari Knights. Can we make some noise for the team owners, Desi Gamers and Kashwi? Well, on that note, ladies and gentlemen, we have Desi Gamer. आप नमस्कार वो जो आपने किया था एक बार जरा दोबारा हो जाए, ऐसे लग रहा था एकदम नेता जैसे आते हैं ना, एकदम वॉक करके स्टाइल में, एक बार दोबारा हो जाए अपने फैंस के लिए। नहीं यार, एंट्री दोबारा क्यों करना, हम गेम में दिखाएंगे अभी जो दिखाना है। बिल्कुल, गेम में देखने को मिलेगा, बट क्या देखने को मिलेगा? व्हाट थॉट्स डू यू हैव? आप यहाँ आए हैं, आई एम श्योर 2-3 दिन से आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा। क्या चल रहा है, कुछ शेयर करना चाहेंगे? अभी हमने सबसे कम प्राइस में मार्की खरीदा है, बेसिकली 20 लाख में, तो अपने पास अभी 4.8 CR टोकन्स पड़े हुए हैं। तो आज बस वही होप रहेगा कि हम लोग बेस्ट प्लेयर्स को सिलेक्ट करें, खरीद पाएँ, और इन फ्यूचर जब भी मैच होगा उस टाइम कप जीत उठाएं। बट जैसे कि सोलारा ने भी बोला कि जिन्होंने सबसे कम बिड करके मार्की प्लेयर लिया, आई थिंक उन्होंने सबसे बढ़िया काम किया, क्योंकि उनका पर्स जो है वो बहुत बड़ा है, एंड देयर आर सो मेनी प्लेयर्स, उनकी भाषा में अगर बोलूँ, जो कमाल और धमाल मचा देंगे। तो ये एक स्ट्रैटेजिक मूव था कि आपने एक तो TG फौजी और डिलीट भी अलग हो गए, गैंग भी टूट गया, और TG डिलीट आपके पास आ गए। कुछ सोचा था इसके पीछे? नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। देखिए, हमने 20 लाख रुपए खर्च किए और डिलीट हमारे पास है, बेसिकली वो भी ठीक ठाक खेल लेगा। बट जिन लोगों ने पैसे खर्च किए उन्होंने भी एक अच्छे प्लेयर उठाया हुआ है, जैसे कि जॉन टी बाई को मैंने 80 लाख रुपये डाला था, बट पहाड़ी ने वहाँ पर 1 करोड़ डाल दिया।
तो मेरे को जॉन्टी भाई नहीं मिले क्योंकि वो अच्छे ऑलराउंडर है, बॉलिंग करते हैं, बट बैटिंग आप चाह करते रहे हैं। थे कि आपकी तो टीम में आ जाए। पहाड़ी ले गया, अगर पहाड़ी नहीं लेता तो शायद मेरे पास जॉन्टी भाई होती और मेरा हाँ। पर्स थोड़ा खाली होता। खाली होता। अच्छा, क्या बात है। बट मे बी whatever has happened for good, क्योंकि अब आपका पर्स इतना बड़ा है कि आई थिंक सबसे बड़ा पर्स इस वक्त आप ही की टीम का है, तो आप बहुत अच्छे से बिड्स कर सकते हैं आज, विच आई एम श्योर यू आर रेडी फॉर। क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल, बट हाँ अब मैंने जिस प्लेयर का लिस्ट बना के रखा हुआ है, डेफिनेटली वो काफ़ी अच्छे प्लेयर है, काफ़ी अच्छे उन्होंने वीडियोज हमने देखे थे सबमिट किए हुए हैं, और सारे मार्की एंड ऑनर्स का उसमें नज़र है, तो मे बी वो लोग काफ़ी महंगे बिकेंगे। वेल दैट्स what auction is all about। नज़र तो सबकी उन्हीं प्लेयर्स पे है, लेकिन कौन आज बाजी मारेगा वो हमें ऑक्शन में देखने को मिलेगा। लेकिन इसी बात पे क्यों ना हम इतनी देर से उनकी बात कर रहे हैं, आपके मार्की प्लेयर को स्टेज पर बुलाएं। यस, हमारे मार्की प्लेयर नॉन अदर देन बेस्ट TJ Dilip, ladies and gentlemen, can we make some noise for TJ Dilip? Welcome। ऑफ कोर्स मैंने फौजी से भी ये सवाल पूछा था, आपसे भी पूछना बनता है। क्या उन्होंने तो बता दिया है कि मज़ा बड़ा आएगा देखने के लिए क्योंकि सब अलग अलग टीम से खेल रहे हैं, लेकिन जब आप अलग अलग टीम से खेल रहे होते हो तो मुश्किल भी बहुत होता है क्योंकि कंपटीशन तो कंपटीशन ही है। तो क्या लग रहा है, थोड़ी सी साइड में जाके एक दूसरे को गाइडेंस देखने को मिलेगी हमें, टीम इंटर टीम, या फिर एकदम कॉम्पिटिटिव स्पिरिट ऑन स्काई हाई? अब तो उसी दिन पता चलेगा कौन जीतेगा। अच्छा, मैं कुछ बोलूँ? मुझे लगा था डिलीट एकदम एवरेज प्लेयर है, मतलब कहीं ना कहीं हमने सबसे लोएस्ट प्राइस में लिया था, बट हम जब स्ट्रैटेजी बना रहे थे तो डेफिनेटली ये माइंड गेम बहुत अच्छा लगा रहे हैं कि किस प्लेयर को कितना पैसे डालना चाहिए। अच्छा। एंड सच बोलो तो मेंटली काफ़ी बंदा मिला है, अरे बंदा मिला है। तो मतलब खर्चा भी नहीं हुआ और काम नेक्स्ट लेवल का। क्या बात है, हाई फाई ऑन दैट TG। एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू से टू मे बी फौजी और द अदर टीम, आपकी क्योंकि गैंग तो अब इधर उधर हो जाएंगे, कुछ कहना चाहेंगे क्या? दे शुड वॉच आउट फॉर समथिंग क्योंकि आप यहाँ से खेल रहे हैं। फौजी भाई मिलते हैं, ठीक है? फौजी भाई होगा। तो बट क्या लग रहा है ऐसे, मतलब अगर किसी ने अगर यहाँ पे वहाँ से बॉल आई तो क्या लग रहा है, छोड़ दोगे या छक्के पीटने? मैंने मुझे बोला है कि घर जाते ही नेट प्रैक्टिस शुरू, आपको कंप्लेन करने का मौका नहीं मिलेगा। कंप्लेन करने का मौका नहीं मिलेगा? फौजी भाई कह रहे हैं वो बच के रहना। फौजी भाई कह रहे हैं देख लूंगा। Alright, on that note, ladies and gentlemen, can we make some noise? And the beautiful jersey that we have here, Kalahari Knights. Can we make some noise for the team, the marquee player, and of course the team owner? All the best, and I hope जो आपने सोचा है, जो आपने बोला है, वो पूरा हो. Let's see what auction holds for you. Can we make some noise? Can we have a louder cheer for the team, ladies and gentlemen? Chaliye, on that note, 4 down, let's move to the 5th team of the day. Ladies and gentlemen, ugly team, बहुत ही खास team, very, very two special people. और मैं एक बार फिर से चाहूँगी that all of us should welcome them with a huge round of applause. Ladies and gentlemen, make some way for Nexterra Nawabs, and of course the owners TSG Rithik and Sunita aka Sunita Didi. Can we make some noise for both of them? अच्छा ये मुझे भी करना है, क्या है? कोरियन हार्ट्स. So good. Yeah, can we actually continue with the music because finally we have someone who's in the mood. Can we have that music again? All right, let's go. High five. Wow, super. अच्छा, before we dive into the rest of the questions, मैं आपसे पूछना चाहूँगी पहले तो सुनीता से सुनीता दीदी कैसे हो गया? अब पता नहीं, रिस्पेक्ट बोल सकते हैं लोगों का मेरे प्रति. लोगों का प्यार है आपके प्रति? All the people who love her, can we see in the comment box and the chat box, love and Sunita Didi. जल्दी दोस्तों. जल्दी. Okay. Well, on that note, चलिए ऋतिक आपसे पूछेंगे. Well, you have played smart. You already have one of your friends in the team. अभी हम उनको इंट्रोड्यूस भी करेंगे मार्की प्लेयर को आपके, लेकिन
जो पूल है वो अभी भी काफ़ी अच्छा खासा है, आपका पर्स काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट आपके पास पड़ा है, तो क्या लग रहा है पूरा TSG गैंग जो है, बिकॉज काफ़ी लोग हैं, अर्जुन है, दक्ष है, मान है, क्या लग रहा है आपकी नज़रें अपने गैंग को एक ही टीम लाने के लिए प्रिपेयर्ड है या शायद बाकी टीम्स बाजी मार लें और गैंग तोड़ दें? ट्राई पूरी रहेगी कि सारी TSG मेंबर्स आ जाए, बट यहाँ पे है कुछ लोग जो मेरे को पीछे बोल रहे थे, तो कंपटीशन पूरा देंगे। क्या बोल रहे थे, फैंस को भी बताओ। वही बजट तुम्हारा हिला देंगे, बट ये पूरा कोशिश करेंगे, पूरा जेब उस पे ही खाली कर देंगे। बिल्कुल, तो बाकी लोग तो बैठे हुए हैं आपका बजट हिलाने के लिए, बट आई थिंक आपकी स्ट्रैटेजी आपके माइंड में क्लियर है। आई होप यू गेट योर गैंग इन योर टीम, बट आप ऑलरेडी एक पे सौदा लगा चुके हैं, राइट? तो उनको पहले बुला लेते हैं, फिर बाकी की बात करते हैं। Ladies and gentlemen, now it's time to welcome the marquee player of their team, Nexterra Nawabs, TSG legend. Can we make some noise? Hey, hey, hey! Wow! Woohoo! Can we have a louder cheer for them, ladies and gentlemen? Wow! What was that? Is that your style? थोड़ा नाम ऐसा है तो थोड़ा स्टाइल करना। अच्छा, अब एकदम लेजेंड वाला नाम है तो लेजेंड वाले पोस्ट तो हम करेंगे ही ना। क्या था वो, ऐसा क्या ऐसा था? सो व्हाट इज इट? दिस इज डस्टिंग ऑफ ऑल द कंपटीशन। चलिए, कंपटीशन बूया बाय बाय ऐसा हाँ काइंडा। अच्छा, अब आपसे एक सबसे टफ सवाल मैं पूछने वाली हूँ, क्योंकि मैंने इनसे ऑलरेडी गैंग की बात कर ली है, आपको तो उन्होंने ले लिया है। क्योंकि यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हो सकता है कि गैंग पूरी की पूरी आपकी टीम में ना आ पाए, तो अगर एक ऐसा प्लेयर जिसको आप बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते हैं, आपकी नज़रें बिल्कुल उसी पे है कि इसको तो ले ही लेंगे तो मेरा एक कमराडरी अच्छी रहेगी, मेरी टीम में होगा तो हम अच्छा खेल पाएंगे, ऐसा कोई? वैसे मैं बताना नहीं चाहता था, सब सुन लेंगे, बट स्टिल हम दक्ष पे जाएंगे। दक्ष हम काफ़ी टाइम से खेलते हैं, ऐसे 5-6 साल से सब साथ में हैं, वो बेस्ट प्लेयर है हमारा क्लाइंट का। तो वो अगर हमारी टीम में रहेगा तो ही खेलेगा, दूसरी टीम में रहेगा तो भी हमारी टीम से खेलेगा। तो वही देख लो, सोच समझ के लेना। ऐसा रहो आप अपनी टीम में दक्ष को ले लो और पता चले खेल वो यहाँ से रहे हैं। सो प्लीज़, वेल, वार्निंग आ चुकी है, फेयर वार्निंग आ चुकी है। आई होप वी आर ऑल सेट और हम सभी ये सुन रहे हैं। ऑल्सो लेजेंड, आपसे ये सवाल है दैट यू आर नोन टू बी वन ऑफ द मोस्ट अग्रेसिव रशर्स, राइट? तो क्या ये अग्रेसिव स्टाइल जो है आपकी बल्लेबाजी में भी देखने को मिलेगा? बल्लेबाजी में तो शायद ना दिखे, बट स्लीप में बैठ के मैं स्लेज कर लूंगा अग्रेसिवली। Now that you have even mentioned that, क्या यही स्टाइल जो आपका है, आप सोच रहे हैं आप दक्ष को ले ले, या हो सकता है मान आ जाए आपकी टीम में या अर्जुन आ जाए, यही सेम स्ट्रैटेजी या सेम स्टाइल इन लोगों का भी है? सो दैट, बिकॉज आई एम श्योर यू पार्ट ऑफ द सेम गैंग, डू यू थिंक सेम? मतलब मैं उनको बोलूँगा तुम गेम पे फोकस करो, गेम के बाहर हम कर लेंगे। तुम बस छक्के लगा दो, बाकी मैं संभाल लूँगा। अच्छा, जाते जाते आप सभी से एक सवाल, आप दोनों में से कोई एक, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप भी फील्ड पे उतरेंगे? ऑब्वियसली ऋतिक उतरेगा। ऋतिक, तो TSG तो इन दैट केस, क्योंकि ऋतिक भी मैदान पे आपको देखने को मिलने वाला है, तो आई थिंक TSG की पूरी प्रिपरेशन है कि पूरा गैंग पिच पे देखने को मिलेगा, फील्ड पे देखने को मिलेगा। मैं right? Well, on that note, ladies and gentlemen, can we make some noise for the beautiful, beautiful team, Nexterra Nawabs! With all the Korean hearts, with all the love in our hearts, and all the viewers who are watching us live, you know the drill. You step off the stage with a little bit of groove move as we begin with the auction in some time. Can we have some music? Once again, Nexterra Nawabs, ladies and gentlemen. Superb. Thank you so much. On that note, ladies and gentlemen, one final team, the last but not the least. Ladies and gentlemen, without any further ado, I won't take time for this one. Let's welcome our final team of the evening. Ladies and gentlemen, give it up for Peak Panthers! Can we make some noise for the team owners as well? Sid and Pahadi.
little bit of groove. I can imagine a little bit of groove here. कम है थोड़ा सा Come है थोड़ा. But also, ladies and gentlemen, can we make some noise for their jersey color? Can we make some noise? Wow, you're looking bright as the sun, and I hope यही sunshine जो है वो आपकी टीम पे बरकरार रहे. Well said, पहाड़ी. ये सवाल मैं already पूछ चुकी थी जब रॉकी मामू स्टेज पे आए थे. तो आप लोगों से भी मैं पूछूंगी, लेकिन उसके लिए आपके मार्की प्लेयर को पहले स्टेज पे बुलाऊंगी. बट बिफोर आई बिगिन, सिड आपसे एक सवाल है. आप जाने जाते हैं अपनी वॉच पार्टीज़ के लिए, तो क्या आप खेलेंगे इस बार, या हम आपको देखेंगे ऑर्गेनाइजिंग वॉच पार्टीज ड्यूरिंग द टूर्नामेंट? प्लान तो वही है कि हम तीनों खेलने वाले हैं. आई थिंक वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम हियर, क्योंकि वी नो ओनर्स भी खेलते हैं और हमारा मार्की प्लेयर भी अच्छा खेलता है. तो दैट्स द प्लान. लेट्स सी. दैट्स द प्लान. इन योर स्टाइल स्किल है. On that note, also Pahadi, you are known as the sniper god. तो जाहिर सी बात है, स्नाइपर गॉड हैं तो आपकी टारगेट हिटिंग की वजह से आप एक बॉलर ही होंगे. क्या आप मैदान पे उतरने वाले हैं? हाँ, मैं उतरने तो वाला हूँ मैदान में, बट ना मैं अच्छा बॉलर हूँ ना अच्छा बैट्समैन हूँ. मैं हूँ लप्पेबाज. कोई बात नहीं, जो आपकी स्ट्रेंथ है हम फील्ड पे तो देखेंगे ही देखेंगे. आपका जो स्टाइल है, आई थिंक वो अपने आप में एक बहुत ही कमाल का स्टाइल है. फैंस आपको उतना ही प्यार करेंगे, और चाहे बॉलिंग हो या चाहे बैटिंग हो, आई थिंक वी ऑल वांट टू सी यू ऑन द फील्ड. दैट इज़ व्हाट मैटर्स, राइट? और इसी के साथ आपके मार्की प्लेयर को बुला लिया जाए. आपका कोई पर्सनल स्टाइल या अंदाज है, आप बुलाना चाहेंगे अपने अंदाज में अपने दोस्त को, अपने बिड़ू को, अपने भाई को? जोटी भाई. Jyoti Bhai! Ladies and gentlemen, please make some noise for the marquee player, Big Panther Jyoti! Jyoti ji, second most expensive player of the tournament so far. क्यों इतना पैसा आपने इस पे लगाया? क्या देखा आपने? मैंने नहीं लगाया, इसने लगाया था. तो दोस्त है तो वी वांट टू हैव फन. दोस्त तो रॉकी माँ मूवी दे, फिर वहाँ क्यों नहीं? दो नहीं ले सकते ना मार्की प्लेयर, इसलिए. बट व्हाई दिस ओवर हिम, मैं ये पूछना चाहूंगी. बिकॉज लुक एट हिम, ही इज सो फिट. लाइक यू कैन क्लियरली सी ही इज अ वेरी एथलेटिक पर्सन. बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा लगता है सुबह शाम जिम में ही बैठे रहते हैं. दौड़ लगाते हैं, डंड पेलते हैं, ऐसा ये रीजन था आपका. तो ये क्या करने वाले हैं? गेंदबाजी, बल्लेबाजी? ये एंटरटेनमेंट करेंगे वहाँ पे प्लेयर्स का. तो अगर मोरल डाउन हुआ तो he'll boost it for us. अच्छा, तो ये तो एंटरटेनमेंट करेंगे. क्रिकेट कौन खेलेगा फिर इनके हिस्से का? हम लोग है प्लान के साथ एक आए हैं. हम लोग सारे अनसोल्ड प्लेयर्स हम लोग लेने वाले हैं. सारे अनसोल्ड प्लेयर्स ये लेने वाले हैं, ऐसा है क्या? अच्छा, क्या स्ट्रैटेजी है आपकी? अच्छा, तो क्योंकि अब ऑलरेडी मैं देख रही हूँ भाईचारा इस टीम में काफ़ी टॉप का है. यहाँ भाईचारा ऊपर है, गेम नीचे है. तो अब एक और टफ सवाल, कैप्टेंसी किसके पास आने वाली है? मेरे पास. इनके पास मुझे भी. अरे मैं 1 करोड़ क्यों खर्च करे मेरे पे? 1 करोड़ खर्चा करा है तो 1 करोड़ वाला काम भी होगा. क्या बात है, 1 करोड़ खर्चा करे तो 1 करोड़ वाला काम भी होगा. सो गुड. ये तैयार है अपने 1 करोड़ वाले काम के लिए, ये भी तैयार है एंटरटेनमेंट के लिए. बिकॉज मुझे इस टीम से एंटरटेनमेंट की तो पूरी कंटेंट यहाँ से नज़र आ रहा है मुझे. ब्राइट तो आप हैं ही, ब्राइट किड्स हैं, लग रहा है बचपन से ही ब्राइट थे. एक चीज़ जो आप कहना चाहेंगे उन दोस्तों को जो इधर उधर चले गए हैं, जैसे उन्होंने तो कहा पिछली टीम ने कि जाए दक्ष कहाँ भी जाए खेलेगा तो वो हमारी तरफ से, ऐसा आपकी भी कोई साझेदारी है यहाँ पे? हमको एक ही प्लेयर चाहिए, मिस्टर जय वाइटी. मिस्टर जय वाइटी. अच्छा, ये आपने सोच रखा है? बस. और कोई और? एक बंदा और चाहिए बस. एक बंदा और, अगर कोई और बाजी मार गया उसमें तो? नहीं, जय को आई डोंट थिंक कोई और लेगा. ऐसा क्यों? क्योंकि हम उस पर 2 करोड़ लगाएंगे. उसके बाद क्या करोगे? फिर हम 4 ही खेलोगे. तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ आपको मिलने वाला है फुल ऑन एंटरटेनमेंट विद वन एंड ओनली बिग पैंथर्स. कैन वी मेक सम नॉइज फॉर द टीम? विद दिस मस्ती से जाइएगा. खैर, ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, well,
This was peak Panthers for you, ladies and gentlemen. Now that we have met all the 6 teams, all the team owners, and the marquee players, there's one thing that's left. There's one thing I'm sure that we all are waiting for. But before we dive into that, there's a special surprise for all of you. We have a very special video here which we're going to play. I would request all your eyes on the screen because, ladies and gentlemen, now is the time for the league teaser. चल दे देखा किस मिट्टी से तेरे सपने बने कर दे धुआं जिस रास्ते पे भी तेरे पाँव पड़े बस किसी से कभी मैं डरा नहीं फालतू की बातों में पड़ा नहीं नजर निशाने पे दुश्मन ठिकाने में कभी भी रुका मैं जरा नहीं मेरा मुकाबला खुद से मौसम बदले तेरे रुख से कि खुदा भी किस्मत लिखने से पहले तेरी रजा पूछे तुझसे तू शेर की दहाड़ दे चितड़े तू डर के फाड़ दे इस दुनिया के हर कोने तक तू ख्वाब अपने पसार दे खोल दे जो बंधा बैठा तेरी रग रग में तूफान है 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 तू जीत का ऐलान है तूफान 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 है तू जीत का ऐलान है तूफान है तूफान है तूफान है Thank you so much, ladies and gentlemen. This was fab. Clearly, tufan hai, boss, tufan hai. Well, now that we've met the teams, we've met the leaders, we've met the visionaries, the marquee players, एक चीज रह गई है जैसे कि मैंने कहा था. What's that? Any guesses? बिल्कुल सही. KBC स्टाइल में like this is 7 करोड़. बट आपके पर्स में जितना है उतने की आज बात करेंगे. So ladies and gentlemen, it's time for the trophy reveal. But to do the honors, we would request all the marquee players from all the teams to please step on the stage. And while the marquee players are coming on stage, can we also welcome them once again with a huge, huge round of applause. Woohoo! You know the drill. Come grooving. Come grooving. Just gather around the trophy. If you can just make and just gather around the trophy. आसपास आ जाइए बिल्कुल. किसी से कभी मैं डरा नहीं फालतू की बातों में पड़ा नहीं नजर निशाने पे दुश्मन ठिकाने में कभी भी रुका मैं जरा नहीं मन में जो ठाना वो पाना है चलना ना कोई बहाना है कितना है दम बाजुओं में ये दुनिया को बिना झिझक के बता. All right, ladies and gentlemen, before we do the honors, let's ask the marquee players. Are you ready? Are you ready? All right. On that note, let's ask the audience as well. Are we ready? All the viewers watching us live. It's time for the big trophy reveal of the Booyah Premier League. On the count of 3, let's do this together, ladies and gentlemen. 3, 2, 1. There you go. There you go. Ladies and gentlemen, I proudly present to you the trophy of Booyah Premier League Season 1! Can we have a louder cheer? Come on, it's the trophy reveal, guys. Woohoo! Thank you. That's more like it. I love the spirit. On that note, ladies and gentlemen, Booyah Premier League trophy is right here in front of you. And on that note, all the best to all the teams. Let's see who takes the trophy home. And on that note, ladies and gentlemen, the stage is set. The teams are ready. So are we. Now it's time to move and dive into the auctions. And it's time for you to build the squads. And
And to do the honors, let's welcome the man himself who will take this auction forward. Ladies and gentlemen, huge round of applause. Please help me welcome Mr. Raman Bhanot. Welcome, sir. Over to you. Thank you very much, Minnie. We just saw the 6 marquee players very close to that trophy. By the time we finished the auction, teams would have been put together. And then by the time the season ends, out of those 6 marquee players, only one is going to be walking away with that trophy that's just been taken away. But right, ladies and gentlemen, time to head into the auction now. My name is Raman Bhanot, as Minnie just introduced me. Very quickly, I'll take you through the rules before we start this auction. सबसे पहले तो हर टीम के 11 प्लेयर होने थे. आपने मार्की प्लेयर पहले ही पिक कर लिया है हर टीम ने, तो अब आपको 10 प्लेयर्स इस ऑक्शन में पिक करने हैं. That's the story. We will take a look at the team purse very quickly. I'm going to first explain the rules for everyone's benefit. There are 2 categories of players, category A and category B. Category A की base price 20 lakhs होगी, और जब bidding शुरू होगी तो 5 lakhs के sequences के अंदर bids accept करी जाएंगी. So each incremental bid will be at an additional 5 lakhs, and that's how teams can bid. Only 2 teams will be involved in a bidding war. तीसरी team can only come into the bid once one of the initial 2 teams drops out of the bid. That's the way the rule's going to be. Make sure that you put that paddle up high enough above your shoulder for me to be able to see that you've gone in for a bid for a particular player. Remember, there are rules. You can have a maximum of 6 batters, 4 bowlers and 4 all-rounders in your squad of 11. And the other rider is कि उसमें कम से कम 3 batters, 2 bowlers और 2 all-rounders आपके squad में होना ज़रूरी है. So the team composition is something that we'll keep an eye on and ensure that your squad composition is going as per the rules. Right, ladies and gentlemen, we will have 6 sets that will come in for the auction. We will be starting with set 1 very shortly. Right, are we all set? Teams ready, marquee players ready, owners ready, paddles ready. So chaliye, it's hammer time. Let's get the show on the road. A round of applause for all teams. And very quickly, let's take a look at the purse for each team before we start with the first set. Let's very quickly, on the screens, take a look at what is the purse that all 6 teams come in with. Alpine Aces, remember, they spent the maximum on their marquee player. The 5 crore purse is whittled down to 380 after having their marquee player in. But the team that comes in with the maximum purse is Kalahari Knights. They've got 4.8 crores still left in the kitty as they go in for this auction for the 10 players that they're going to get. So interesting strategies by the 2 teams, Alpine Aces and Kalahari Knights. It's the first set. Can we have the first set brought out, please? Yes, can you get that for us, please? Thank you very much. Right, I'm going to be pulling out names one by one. We'll have the number of the player and the name so you can see the details on your screen. And the first player to go under the hammer here is going to be player number 11 from set A, and that is going to be Lohit. Can we have, there you have him, he goes with the gaming name GODL Echo 7, a batsman, and bids for Lohit start now. We have a bid coming in at for the Peak Panthers at the base price, which is of course, remember, his base price of 10 lakhs because he's a category B player. We have a bid that's come in from the Peak Panthers. Is there anybody else coming in to match that bid of 10 lakhs from the Peak Panthers? It's 10 lakhs. Going once, going twice, and sold. Lohit sold to the Peak Panthers for his base price of 10 lakhs. We're good. We're moving into the next one now, ladies and gentlemen. Are we all set? Keep your paddles ready. And we head into the second player for this auction from set A. It's player number 7. That's Anurag Thakur. Can we have Anurag's name and details up on screen there? There you have him.
Ladies and gentlemen, a Category A player. The all-rounders, always hard to come by. Are we ready for RNTX.Black? That's Anurag Thakur for you. Accepting bids now. Peak Panthers up quickly with this base price of 20, but we've got a match from Nexterra Nawabs who've come in at 25. So are we going to see a matching bid? Peak Panthers with 30 lakhs there. Nexterra Nawabs take it straight away to 35 lakhs. Are you still in it, Peak Panthers? Straight away the battle goes up. 40 lakhs for Anurag Thakur from the Peak Panthers. 45, say the Nexterra Nawabs. 50, the battle goes up straight away from the Peak Panthers. 50 lakhs for Anurag Thakur from the Peak Panthers. 55, 60 lakhs from the Peak Panthers. This is going to be 65 from the Nexterra Nawabs. Yes, 70 lakhs. Peak Panthers take it up to 70 lakhs within a span of a few seconds. 75 lakhs, Nexterra Nawabs. 80 lakhs, the Peak Panthers have taken it to 80 lakhs for Anurag Thakur, the Category A player. So it's straight away. Now, in fact, it's showing 85. So the bid comes in at 85. We've got now a matching bid that's come in from the Peak Panthers. They have a matching bid. That's going to go up to 95 now, ladies and gentlemen. Can we have that updated, please? 95 is that bid from the Peak Panthers. So what's the bid going to be from the Nexterra Nawabs? Nexterra Nawabs. Yes, they have it there. They've got in with a bid. You've come in with a bid at 95, Nexterra. So 1 crore from the Peak Panthers. 1 crore. It's 90, but yeah, 1 crore. 1 crore from the Peak Panthers. We've had 2 back-to-back bids that come in very quickly. 1 crore from the Peak Panthers. Our Nexterra Nawabs going to take it to 105. Is that going to come through? Yes, 105 for Anurag. Wow, what a scenario here. 105. Well, the Peak Panthers are out of it, but the Bermuda Blasters come in at 110 now. 110 for Anurag from the Bermuda Blasters. Are the Nexterra Nawabs going to better that with a 115? Or will it go to Bermuda Blasters? Bermuda Blasters have a bid of 110 for Anurag Thakur. Is it going to be Nexterra Nawabs? Are you going to match it? Otherwise, it's going once, going twice. Are you out of it? Nexterra Nawabs, they're out of it. We had a bid that came in earlier from Solara Sultans. They're going to take it to 115 now. 115 from... One second. Bermuda Blasters are in it with Solara Sultans. So Kalahari Knights, you'll have to wait. 115 was the bid from Solara Sultans. 120, the bid from Bermuda Blasters. Are you going to match that to 125? Yes, 125 from Solara Sultans. Are you still in it, Bermuda Blasters? It's 125 for Solara Sultans. 130 from the Bermuda Blasters. 135 from Solara Sultans. 135 from Solara Sultans. Bermuda Blasters are out of it. 135 Solara Sultans. It's going once. It's going twice. Kalahari Knights come in. Yes, they come in with 140. 145 Solara Sultans are not letting go. 145 from the Solara Sultans. Kalahari Knights, are you in it or are you out of it now? They're out of it. So going once to the Solara Sultans. 150, the bid from Peak Panthers. 155 Solara Sultans are in it. 160 from Peak Panthers. 165 Solara Sultans. 170 Peak Panthers. Wow. 175 Solara Sultans. I need some water here. Going once, Solara Sultans at 175. Going twice to the Solara Sultans and sold at 175 to the Solara Sultans. Anurag Thakur. Well, there was a mighty bidding war for him. Congratulations to the Solara Sultans. They bag Anurag Thakur at 175 lakhs. That's 175 lakhs just to be sure. Right, ladies and gentlemen, moving on to the next player in this auction round. In set A, we've got player number 1, Pankaj Lakhotia, who is now going to go under the hammer. Pankaj Lakhotia, another Category A player, a bowler. Remember, you can have a maximum of 4 bowlers in your squad. He's one of them. Could he be one of them for the teams? Gaming name, Black Flag Army. And the bids for Pankaj Lakhotia start now. Bermuda Blasters come in with a bid matching his base price of 20 lakhs.
Bermuda Blasters matching the 20 lakh base price. 25 lakhs for the Kalahari Knights. Bermuda Blasters at 30 lakhs. 30 lakhs for the Bermuda Blasters now. Is it okay? Kalahari Knights are out. 30 lakhs for the Bermuda Blasters. Are we going to see a bid for 35? Or is it going to be 30 lakhs for Bermuda Blasters? Going once, going twice, and oh, a late bid from the Alpine Aces at 35 lakhs for Pankaj Lakhotia. Alpine Aces get into the act now. 35 lakhs for the Alpine Aces. Bermuda Blasters, are we going to see a bid that betters that? Yes, 40 lakhs for Bermuda Blasters. 40 from the Bermuda Blasters. Alpine Aces are out of it. So sold at 40 lakhs once, going twice, and sold to the Bermuda Blasters at 40 lakhs. Pankaj Lakhotia, congratulations. A category A player, a bowler, going for 40 lakhs here. Right, we move on to the next name on the auction list today in set A, player number 2, Anshuman Borua. And Anshuman Borua is a category A player, a batsman, and he goes with the gaming name of Anshu Jr. Bids starting for Anshu Jr. Now, Alpine Aces off the blocks with a base price of 20. Kalahari Knights come in with 25. 30 lakhs for Alpine Aces, 35 from the Kalahari Knights, 40 lakhs Alpine Aces not holding back. 45 from the Kalahari Knights, 50 lakhs Alpine Aces, 55 lakhs Kalahari Knights, 60 lakhs for the Alpine Aces, 65 for Kalahari Knights, there 70 lakhs Alpine Aces, 80 lakhs Kalahari Knights. For Anshu Jr., Kalahari Knights, you get him for 90, 95. Bermuda Blasters come in again. And Kalahari Knights take it straight away to 100 lakhs. Now 1 crore for Kalahari Knights. Bermuda Blasters are out of it. So 1 crore, going once, going twice. Anshu Jr. is sold to the Kalahari Knights for 1 crore. Congratulations to Anshuman Borua. Right, and congratulations to the Kalahari Knights as well. Are we in it, gentlemen? Moving on to the next name on our auction list. And this is going to be from set A, player number 3. It's Arjun Mungare. Arjun Sachin Mungare, a category B player, a bowler. And he goes by the name of TSG Arjun. That's his gaming name. Bid starting now. Peak Panthers off the blocks very quickly at his base price of 10 lakhs. Peak Panthers bidding for 10. Nexterra Nawabs, 15 lakhs now to Nexterra Nawabs for Arjun Mungare. 15 lakhs, going once, going twice, and fair warning, sold to Nexterra Nawabs for 15 lakhs. Congratulations, you got a very good deal there. Nexterra Nawabs at 15 lakhs for Arjun Mungare. Sold to the Nexterra Nawabs there. Right, ladies and gentlemen, in set A, our next player who's going under the hammer. Set A, player number 4, Arup Jyoti Sarkar is going to be the next player that we have. Another category B player, a bowler, and he goes by the gaming name of Gigi Arup. Are we set, ladies and gentlemen? First bid, Peak Panthers, they've got that paddle up straight away. Base price 10 lakhs for the Peak Panthers. Do we have a better bid coming in from anyone else for Arup Jyoti Sarkar? Otherwise, going once to the Peak Panthers, going twice to the Peak Panthers, and sold to the Peak Panthers for base price of 10 lakhs. It's Arup Jyoti Sarkar.
Can we have the name put in the bag of sold players, please? Arup Jyoti Sarkar, sold to the Peak Panthers for his base price of 10 lakhs. Congratulations. The next player who comes up under the hammer in set A, player number 5, and that's Ashwini Kumar. Gaming name Ash, category A player, a bowler, and we're going to start bids for him now. Straight away, Peak Panthers, the center of the group, and they bid for his base price 20 lakhs. Ashwini Kumar going for 20 lakhs to the Peak Panthers. Do we have a better bid? Solara Sultans have been awfully quiet, as have the Alpine Aces for a bit. Are we going to see a better bid from any one of the teams here? Or is it going to be base price for Ashwini Kumar? Ash it is. Going once to the Peak Panthers. Going twice to the Peak Panthers. Fair warning to all teams. And sold at base price to the Peak Panthers. Ashwini Kumar. Congratulations. You've picked up another bowler there now, have the Peak Panthers. At the end of this set, we'll take a look at your team composition, about how it's going. But now, let's move on to our next player who goes under the hammer. And in set A, player number 6, it's going to be Sangram Behara. Ladies and gentlemen, Badal is his gaming name, category B player, role of a batsman, and bids will start at base price for a category B player at 10 lakhs. And the bid starting with the Peak team going in one more time, not holding back at all. You've got the Peak Panthers with a bid at base price of 10 lakhs. Do we have a team matching that? In fact, there were 2 teams that went up for it, Nexterra, but Solara Sultans went for it before you. So I'm going to give them that shot. Solara Sultans, 15 lakhs to Solara Sultans. 20 lakhs for the Peak Panthers. 20 lakhs to the Peak Panthers for Sangram Behara. Solara Sultans, are you going to better that? 20 lakhs the current bid. Are we going to see 25 from the Solara Sultans? Fair warning. No, they're out of it. Is someone else going to come in? Yes, Nexterra Nawabs come in with 25 lakhs for the Nexterra Nawabs. 25 lakhs for Badal. That is Sangram Behara. Going once. Going twice. Are we going to see a matching bid? Yes, 30 lakhs from the Peak Panthers. 30 lakhs the bid from the Peak Panthers. Are we going to see any other team get into this battle now? Nexterra Nawabs, the ball is in your court. Are we going to see a bid for 35? Or is it going to be the Peak Panthers who take the player away? Nexterra Nawabs, are you in it? Fair warning. No, they're out of it. So going once to the Peak Panthers at 30 lakhs. Going twice on 30 lakhs and sold for 30 lakhs. That Sangram Behara goes the Peak Panthers where he's found his team. Congratulations. Right. I would request the cameraman to kindly move to one side so that I can see the paddle. Thank you very much. We move on to the next player who goes under the hammer here. In set A, player number 8. और ये प्लेयर है विकी मातो. Vicky Kumar Mato, Desi Chora, category B player, a batsman, and we have bids starting for Vicky now. Is there a bid that's going to come in for Desi Chora? That's Vicky. Fair warning to all teams. Fair warning once. Fair warning twice. And unsold. We're going to put him in the unsold box, and we will probably bring that name back later when we have the final round. Vicky goes unsold at the moment, ladies and gentlemen. Next player जो अब bid के लिए आ रहा है वो है set A के player number 10, and that is Darshan Sharma. Darshan Sharma. Darshan 26, a category B player, batsman, and bids will start at base price. 10 lakh की base price है for a category B player. Bids starting now for Darshan. Bermuda Blasters bid at 10 lakhs, the base price for Darshan Sharma.
Going once to Bermuda Blasters for 10 lakhs. Are we going to see a bid come in from anybody? Going once. No, we've got a bid from Alpine Aces. 15 lakhs for Darshan Sharma. Alpine Aces, 15 lakh rupai. Darshan ke liye. Bermuda Blasters are out of it. Is there any other team that's going to come in? Fair warning to all teams. Going once to the Alpine Aces. 15 lakh FF coins. 15 lakh FF coins. That's what it's going to be. 15 lakh FF coins. It goes once to the Alpine Aces. Goes twice to the Alpine Aces. Kalahari Knights, I'm giving you fair warning now. And the hammer is about to come down on Darshan Sharma. Yes, Alpine Aces sold to Alpine Aces. Darshan Sharma goes there for 15 lakh FF coins. That's Darshan for you. Congratulations. Alpine Aces pick up the batsman, a category B player, 15 lakh FF coins ki price ke upar. Chaliye. In set A, we now have the final name that's going to come up on your screen. And that's Chirayu Gandhi, player number 9. Chirayu Gaming, his gaming name. Category B player, a bowler. And bids starting for Chirayu now. कौन bid कर रहा है इनकी base price 10 lakh FF coins है 10 lakh FF coins. Solara Sultans with a base price of 10 lakh FF coins. Solara Sultans bid for Chirayu at 10 lakh FF coins. Alpine Aces 15 lakh FF coins. 15 lakh FF coins for Alpine Aces. Chirayu's got that bid from Alpine Aces. Solara, are you going to match that or better it? Solara, are you out of it? Fair warning, Solara, they're out of it. Kalahari Knights come up with a bid of 20 lakhs for Chirayu. Alpine Aces, are you going to better that? They're out of it. So Kalahari at 20. We've got Bermuda Blasters with a bid at 25. Bermuda Blasters bidding for Chirayu at 25 lakhs FF coins. And Kalahari Knights are out of it. So going once at 25 lakh FF coins. Bermuda Blasters get Chirayu Gandhi going once, going twice, and sold to Bermuda Blasters. Congratulations, well done. Chirayu Gaming, that's Chirayu Gandhi, goes to the Bermuda Blasters, the bowler, a category B player at 25 lakh FF coins. That, ladies and gentlemen, brings us to the end of set A for the players that we had in set A. Now, I'm going to request the next set pouch to be brought over to me, please. And a quick reminder, we had only one unsold player in this set. That was Vicky Mato, who goes unsold. Teams, very quickly, let's take a look at what your budget looks like. Alpine Aces, how much do they have in their kitty? They have 3.65 crores still left with them. Now, who spent a lot of money now? In this, we see Peak Panthers. At the moment, their budget's taken a bit of a hit, as has Solara Sultans' budget, where they've spent 2.2 crores so far, while we've had 1.7 crores spent by the Peak Panthers in players in set A. Time to move into set B now, ladies and gentlemen. Are we ready? Teams, you've got to keep your budgets in mind. The FF coins that you've got, they've taken a little reduction after that first set. Right, now, set B. The first player to go under the hammer, or ye hai player number 7. Krishna Vamsi is the player who goes up under the hammer now. Krishna Vamsi, category A player, all-rounders who are always in demand. Opening bids at base price of 20 lakhs. The bid came in first from Peak Panthers even before I said anything. Nexterra Nawabs were in it at 25. Yes, is that a bid? Nexterra, you have the paddle. 25 from Nexterra Nawabs, 30 lakhs from the Peak Panthers.
Nexterra Nawabs, 35 lakhs from Nexterra Nawabs. Peak Panthers, 40 lakhs. 40 lakh FF coins. Peak Panthers bid at 40 lakh FF coins for Krishna Vamsi. 40 lakh FF coins. Are you still in it, Nexterra Nawabs? 45 lakhs. 50 lakhs by the Peak Panthers. Very quick response. 50 lakh FF coins. Peak Panthers want this player, the all-rounder. Nexterra Nawabs, are you in it? Are you in it? Is that an exit? Yes, they're out of it. So is there any team that's going to stay in the hunt now? Kalahari Knights come in at 55 lakhs. 60 lakhs. The 60 lakhs, 65 lakhs from the Kalahari Knights. 70 lakhs from Peak Panthers. 75 lakhs from Kalahari Knights. Is that 80 lakhs from Peak Panthers? Yes, 80 lakh FF coins by the Peak Panthers. 85 Kalahari Knights. 90 lakh coins by the Peak Panthers. 90 lakh FF coins. Peak Panthers are willing to break the bank here. Are we going to see the Kalahari Knights go to 95? They do go to 95, but 1 crore FF coins. Peak Panthers have a bid at 1 crore. See, Kalahari Knights, are you in it or are you out of it now? Fair warning, going once, they're out of it. Is there anyone else who's going to join in with this battle? Going once to the Peak Panthers at 1 crore FF coins. Going twice at 1 crore FF coins and sold at 1 crore FF coins. Krishna Vamsi goes the Peak Panthers way. A serious bidding war there, ladies and gentlemen. But Peak Panthers very quickly have picked up a few players and spent quite a bit of their purse. Right, set B, player number 5 who goes under the hammer. और ये है नरेंद्र पुरोहित. नरेंद्र पुरोहित, category A player, एक batsman. और इनके लिए bids base price पे शुरू होंगी. Base price 20 lakh FF coins. Do we have a bid coming in for Narendra Purohit? Do we have a bid from anyone? Narendra Purohit is under the hammer. Yes, there's a bid at base price from Alpine Aces at 20 lakh FF coins. Alpine Aces, 25 lakh. Kalahari Knights come into the battle. 30 lakhs Alpine Aces ki taraf se. 35 lakhs Kalahari Knights. 40 lakh Alpine Aces. 40 lakh FF coins Alpine Aces. Kalahari Knights are out of it. Is there anyone else coming into this battle? 40 lakh FF coins Alpine Aces. Going once, going twice, fair warning, and Narendra Purohit sold to the Alpine Aces for 40 lakh FF coins. Congratulations, Alpine Aces. Well done. Sold, the batsman, a category A player, sold to Alpine Aces. Now, the next player going under the hammer, और ये है set B के player number 8, Ayush Jangir. Can we have his profile? Yes, Ayush Jangir, category B player, bowler हैं ये, और Luis 5. चलिए, he is going to go under the hammer now. Bid, inviting bids. Nexterra Nawabs bidding for Ayush Jangir at his base price of 10 lakh FF coins. So the first bid from Nexterra Nawabs, Solara Sultans, 15 lakhs is what they take it to. 15 lakh FF coins, Solara Sultans ki taraf se bid hai. Do we see Nexterra Nawabs going to 20? Yes, they are. 20 lakh FF coins, Nexterra Nawabs. 25 lakhs, Solara Sultans. 25 lakhs, Solara Sultans. 30 lakh FF coins, Nexterra Nawabs. 35 lakhs, Solara Sultans. 35 lakh FF coins, Solara Sultans are bidding for Ayush Jangir at 35 lakh FF coins. Nexterra Nawabs, fair warning to you. They come in at 40 lakh FF coins. 45 lakh FF coins. Solara Sultans have taken it up to 45 lakh FF coins for this category B player, Ayush Jangir. Nexterra Nawabs, are you in it? Fair warning. 50 lakhs. They've taken it up to 50. Now Solara Sultans, 55 lakhs. 55 lakh FF coins for Solara Sultans. 55 lakhs to Solara Sultans. Nexterra Nawabs, are you in it?
Giving you a fair warning. 55 lakhs is the bid. Are you going to get a bid for 60? Yes, 60 lakhs. 65 lakhs, Solara Sultans immediately upping the bid. 65 lakh FF coins, Solara Sultans are in it at 65 lakhs. Nexterra Nawabs, are you still in the Solara Sultans, 85 lakhs, 90 lakh FF coins, Bermuda Blasters. क्या आप मैच करेंगे इसको? 90 लाख की बिड है Bermuda Blasters की. 90 lakh and they're out of it. Solara Sultans are out of it. So fair warning to everyone. Going at 90 lakh FF coins. Ayush Jahangir going once, going twice and sold. Ayush Jahangir sold for 90 lakh FF coins to Bermuda Blasters. Congratulations. 90 lakh FF coins. The bowler, Ayush Jahangir, started off with a base price of 10 lakhs, has been sold for 90 lakh FF coins. Bermuda Blasters get that player. Next player in set B is player number 10. और ये player हैं Heath Vora, category A player, और TG Mafia Bala, batsman. Heath Vora, bid starting at base price of 20 lakhs for Heath Vora. Alpine Aces off the blocks quickly. 20 lakh FF coins, Alpine Aces ने bid किया है Heath Vora के लिए. 20 lakh FF coins to the Alpine Aces. Are we going to see someone matching that, bettering that bid? Alpine Aces have got a 20 lakh bid, 20 lakh FF coins. Fair warning, going once. Fair warning, going twice. And sold to the Alpine Aces. Heath Vora goes to the Alpine Aces. Can we have his name collected, please? Ladies and gentlemen, Heath Vora has been sold at the base price of 20 lakh FF coins to the Alpine Aces. Can we have someone collect the name card, please? Sir, nod if you can hear me. Perfect. हिंदी में करना अपने को. अगला प्लेयर सेट बी का प्लेयर नंबर 4 है और ये हैं संदीप पंचपाल. संदीप सिंह पंचपाल, कैटेगरी बी प्लेयर, ऑलराउंडर हैं. इनसेन अरीना इनका गेमिंग नेम. ऑलराउंडर्स की हमेशा डिमांड रहती है. बेस प्राइस 10 लाख रुपीस. ओपनिंग बिड्स बर्म्यूडा ब्लास्टर्स. ओपनिंग बिड उनकी आती हुई 10 लाख FF coins की बिड है बर्म्यूडा ब्लास्टर्स की. Is anyone else going to match that bid of 10 lakh FF coins? 15 lakh comes the bid from Nexterra Nawabs. Nexterra Nawabs bidding at 15. Bermuda Blasters at 20. Nexterra Nawabs at 25 lakh FF coins. 25 lakh FF coins for Nexterra Nawabs. They've come in with that bid. 30 lakh की bid है Bermuda Blasters की तरफ से संदीप के लिए. 30 lakh FF coins की bid Insane Arena संदीप सिंह पंचपाल के लिए. 35 lakhs की bid Nexterra Nawabs की. 35 lakh FF coins की bid है ये Nexterra Nawabs की तरफ से. Bermuda, are you still in it? Bermuda Blasters, are you coming in with a bid? No, they're out of it. So at 35 lakh FF coins, Nexterra Nawabs will not get it. Kalahari Knights jump into the fray at 40 lakh FF coins. Kalahari Knights की bid है 40 की. Nexterra Nawabs at 45. 50 lakhs from Kalahari Knights. 50 lakhs from Kalahari Knights. Nexterra Nawabs are out of it. 50 lakh FF coins going once to the Kalahari Knights, going twice to the Kalahari Knights, and fair warning, sold to the Kalahari Knights, ladies and gentlemen, at his price of 50 lakh FF coins. संदीप पंचपाल जाते हैं कालाहारी नाइट्स के खेमे में. एक ऑलराउंडर. राइट. अगला प्लेयर जो अब जिसके लिए बिड शुरू करेंगे सेट बी
के प्लेयर नंबर 9 ये है दक्ष गर्ग. दक्ष गर्ग कैटेगरी बी प्लेयर हैं. टीजी माफिया गेमिंग नेम, एक बैट्समैन है और इनकी बेस प्राइस 10 लाख FF coins. 10 lakh FF coins. Bid from Peak Panthers. Peak Panthers की bid 10 lakh की, 15 lakh की bid Solara Sultans की. 15 lakhs की bid Solara Sultans की तरफ से है. Are we seeing a counter from Peak? No, they're out of it. Peak Panthers are out of it. 15 lakh FF coins going once to the Solara Sultans, going twice to the Solara Sultans, and fair warning, sold to the Solara Sultans. Daksh Garg sold to the Solara Sultans at 15 lakh FF coins. Mubarak aapko. Category B player के category B के batsman. अब जो अगले प्लेयर हैं जो ऑक्शन के अंदर जिनका नाम आ रहा है वो सेट बी के प्लेयर नंबर 6 जुनैद थेबा. जुनैद इनका कैटेगरी ए प्लेयर हैं, एक ऑलराउंडर, गेमिंग नेम RTX Deoxys, राइट. और इनकी बेस प्राइस 20 लाख FF कॉइन्स की. ओपनिंग बिड्स नाउ at 20 lakh FF coins. Do we see a bid for Junaid Teba? Fair warning to all teams. Do we see a bid for Junaid? Fair warning. All right. Kalahari Knights come in with a bid at base price of 20 lakh. 25 from the Alpine Aces. 30 from the Kalahari Knights. 30 lakh FF coins. 35 from the Alpine Aces. 35 is the bid from Alpine Aces. Are we going to see a counter from Kalahari Knights? Are we going to see a counter? Yes, 40 is the bid from Kalahari Knights now. 40 lakh is the bid from Kalahari Knights. 40 lakh FF coins, Kalahari Knights. 45 from the Alpine Aces. 45 lakh FF coins, Alpine Aces want Junaid Teba. Kalahari Knights are out of it. 45 lakhs. Fair warning to all teams. Going once to the Alpine Aces. Going twice to the Alpine Aces. And sold to the Alpine Aces for 45 lakh FF coins. The all-rounder, Junaid Theba. Quality pick. You've got a category A player, an all-rounder. Always a premium on all-rounders. Well done, Alpine Aces. Right. The next name, जो अगला नाम आ रहा है अब बिड के लिए, सेट बी से प्लेयर नंबर 3 जल्ला सतीश. जल्ला सतीश कैटेगरी बी प्लेयर, एक बैट्समैन है और इनका प्लेयर नंबर 3 है ये. प्लेयर नंबर 3 जल्ला सतीश. So we'll have his name very quickly. B3. There you have him. Hello Telugu is his gaming name. A batsman. Base price of 10 lakh FF coins. The bid has come in from Solara Sultans at 10 lakh FF coins for Satish. 10 lakh FF coins. Is there anyone else who's going to come in and join this bid? Fair warning to all other teams. Solara Sultans have bid 10 lakh FF coins for Jalla Satish. Going once, going twice. Fair warning to all teams. And sold to Solara Sultans for just 10 lakh FF coins. Congratulations, that's a value buy. You get a batsman in Satish there. Congratulations, Solara Sultans. Getting him at base price. Right, next player, जो अगला player है, वो set B से player number 11, player number 11, और ये है नमन. Category A player, एक batsman, यानी base price 20 lakh FF coins की. Mokria, gaming name, Ari Mokria. Naman ke liye bids at 20 lakhs coming in from Solara Sultans. Solara Sultans at 20 lakh bid, 25 lakhs for Nexterra Nawabs. At 25 lakhs, Nexterra Nawabs have bid for Naman. 25 lakh FF coins, Nexterra Nawabs. No, Solara Sultans say 30 lakhs. 30 lakhs the bid for Naman from Solara Sultans. Are you still in it, Nexterra Nawabs? Yes, 35 lakhs is the bid from Nexterra Nawabs. 40 lakhs from Solara Sultans.
40 lakh FF coins, 45 lakh FF coins from Nexterra Nawabs. 45 lakh FF coins. Nexterra Nawabs have opened their purse for Nawab. They want him. They want Naman here. Nexterra Nawabs. Going once, fair warning. Solara Sultans, are you in it or are you out of it? Are you out of it? Yes, they're out of it. 45 lakh FF coins for Naman. Going once, going twice. Fair warning to all teams and sold to the Nexterra Nawabs. Naman goes the Nexterra Nawabs way. Many congratulations at a price of 45 lakh FF coins. Set B is almost about to come to an end. Just 2 players left to go under the hammer. इस set के अंदर और फिर अगले set की ओर जाएंगे. Set B का player number 1, player number 1 from set B, it's going to be Gokul Kumar. Gokul Kumar category B player हैं, batsman हैं. GODL Nancy 15, godlike Nancy 15 इनका gaming name. चलिए इनके लिए bids शुरू होती हैं. इनकी base price 10 lakh FF coins के लिए. Is there anyone coming in with a bid now? Or no? No teams raising their paddle for Gokul Kumar. Fair warning to all teams. Fair warning once. Fair warning twice to all teams. And unsold at the moment. Gokul Kumar is unsold. So he will go back in the bag. अभी के लिए अनसोल्ड जाते हुए गोकुल कुमार पास किया सब टीम के नाम. लास्ट नेम, आखिरी नाम सेट बी के अंदर इस ऑप्शन में सेट बी प्लेयर नंबर 2 हर्ष कुमार. He goes under the hammer. Category B player, a bowler, and bids open at 10 lakh FF coins. 10 लाख FF coins के ऊपर opening bid किसी टीम की तरफ से आ रही है. Solara Sultans come in with a bid at 10 lakh FF coins. Solara Sultans bidding for Harsh Kumar. Solara Sultans ने bid कर दिया है 10 lakh FF coins पे. क्या matching bid किसी और टीम की तरफ से आ रही है? Fair warning to all teams. Going once. Fair warning. Going twice. And sold to Solara Sultans. Fair warning there to everyone. Solara Sultans get Harsh Kumar at his base price of 10 lakh FF coins. Many congratulations. Right, ladies and gentlemen, that brings us to the end of set B. We have one more set that we will have in this round of the auction. So far, we've only seen one player unsold in set A, and we've seen only one player unsold in set B. What's it going to be for set C now? Can we have the bag brought up, please? Overall, 2 unsold players. That's the way it is. 1 player unsold in set A, 1 player unsold in set B. We'll have their names drawn later if there are still spots remaining in the team's quota. पर हिंदी में भी बोल देना same line. चलिए हम आपको याद दिला रहे हैं फिर से कि अगर टीम्स के कोटा में स्पॉट बचा रहा तो ये अनसोल्ड प्लेयर्स जो हैं ये थर्ड राउंड के अंदर हम ड्रॉ करेंगे फॉर वन क्विक ऑक्शन. पर फिलहाल तो अब सेट सी की ओर हम रुक कर रहे हैं. टीम्स तैयार? Before I draw out a name, very quickly, I want to see on screen the funds that each team has. आपने कितना खर्चा अब तक कर लिया है FF coins का? ये देखिए, Alpine Aces के पास है 2.6 crores FF coins अभी भी बचे हुए. Category A के 3 players ले चुकी है Alpine Aces. So interestingly, they've gone in for their Category A players. They met the minimum quota. याद दिला दूं, minimum quota 3 का है. Maximum quota Category A के 5 players का है. लेकिन अगर आप 4 प्लेयर तक पहुंच गए और बाकी टीम्स के कैटेगरी ए के प्लेयर्स 3-3 पूरे नहीं हुए तो आप वो 5th प्लेयर के लिए तब तक बिड नहीं कर पाओगे. सो जस्ट रिमाइंडिंग Alpine Aces of how it stands as far as category A is concerned. Category B, no problems there. What's the spend like? So far, सबसे ज़्यादा spend किया है किसने? Peak Panthers ने. Overall, they spent 2.7
Solara Sultans 2.55 and Alpine Aces with 2.4 crore FF coins spent. But पर्स कितना बचा हुआ है वो देख लीजिए. Nexterra Nawabs के पास अभी भी 3.9 crore FF coins पड़े हैं और 3 crore plus के budgets Kalahari Knights और Bermuda Blasters के पास अभी भी बचे हुए हैं. So they're waiting. एक रोल अपडेट है कि बर्मुडा ब्लास्टर के पास 4 बॉलर हो चुके हैं. They cannot bid for another. One very quick update. Very quick update. याद रखिए, apart from category A and category B, जो मैंने आपको बताई थी कि कैटेगरी ए के मैक्सिमम 5 मिनिमम 3 प्लेयर्स हो सकते हैं आपके स्क्वाड के अंदर. एक और बाइफर्केशन ये थी कि मैक्सिमम सीलिंग है ऑफ रोल्स ऑफ प्लेयर्स. मैक्सिमम 6 बैट्समैन, मैक्सिमम 4 बॉलर्स, मैक्सिमम 4 ऑलराउंडर्स is what you can pick in your squad. Bermuda Blasters. I'm just rechecking one more time with the technical team. Bermuda Blasters ने 4 bowlers pick कर लिए हैं. So Bermuda Blasters अब यहाँ पे आप किसी और bowler के लिए bid नहीं कर पाएंगे. So that's a quick update for all teams, including Bermuda Blasters, that they've already bid for their 4 bowlers. They cannot bid for another bowler now for the remaining 4 sets of the auction that remain. Clear? Right, now we're heading into set C. Taiyar hai sab teams? Keep your paddles ready, ladies and gentlemen. Let's have a round of applause also for all of you. Come on. There's some energy in the house. Come on. Are we ready for this? Chaliye. No bola ya yo bola? I hope that was a yo. All right, great. Yes is right. In set C, player number 6, player number 6, set number C. और ये प्लेयर जो अब हैमर के नीचे आ रहे हैं वो हैं राहुल मंडल. राहुल मंडल कैटेगरी बी प्लेयर, ये बॉलर हैं. तो बर्म्यूडा ब्लास्टर्स इनके लिए बिड नहीं कर सकते. लेट मी क्विकली रिमाइंड बर्म्यूडा ब्लास्टर्स, दे कैन नॉट बिड फॉर हिम बिकॉज द कोटा ऑफ बॉलर्स इज ओवर. राहुल गेमिंग इज हिज गेमिंग नेम. बिड्स ओपनिंग एट बेस of 10 lakh FF coins. We already had peak Panthers with 10. They'd already raised that bid. Nexterra Nawabs coming at 15 lakh FF coins. 15 lakh FF coins for Nexterra Nawabs. 20 for the peak Panthers. 20 for peak Panthers. Nexterra Nawabs 25. They come in with a bid of 25 lakh FF coins. Peak Panthers are out of it. 25 lakh FF coins. Nexterra Nawabs. Will they get Rahul Mondal or Rahul Gaming 25 से 30 की bid आ गई है Solara Sultans की. 30 lakh FF coins. The bid from Solara Sultans. 35 from Nexterra Nawabs. 35. 40 from Solara Sultans. 40 from the Solara Sultans. For Rahul Gaming, 40. Nexterra Nawabs, are you in it? You want time? I give you 10 seconds maximum. The clock is ticking. 40 is already on the board. Are we going to see 45? Yes, 45 from the Nexterra Nawabs. 50 from Solara Sultans. 50 lakh FF coins. Solara Sultans have upped the stakes here. 50 lakh FF coins. Nexterra Nawabs, are you in it? 50 lakh FF coins. Solara Sultans. Nexterra Nawabs, you've got 5 seconds to decide. Are you in it? No, they're out of it. 50 lakhs for Rahul Gaming. Solara Sultans get it. Going once, going twice. Fair warning to all teams. And sold. For 50 lakh FF coins, Solara Sultans get Rahul Mondal. Congratulations. Technical team, keep an eye on the number of bowlers and all-rounders for all teams while we still have the bids going. Right. Next player, set C, player number 7. Player number 7. And that is going to be Rohit Kumar, who comes under the hammer now. Rohit Kumar. And that is Tux Raju, category A player, a bowler, which means inki base price 20 lakh FF coins ki hai. Bids starting for Rohit. Kalahari Knights with a base price bid of 20 lakhs. 25 from Nexterra Nawabs. 30 lakhs from Kalahari Knights. 35 from Nexterra Nawabs. 35 from Nexterra Nawabs. And Kalahari Knights are out of it. 35 lakhs FF coins. Nexterra Nawabs have very quickly gone for Rohit. 35 lakh FF coins. Fair warning to all teams. Are we going to see someone coming in and bid? For Rohit Kumar, 35 lakh FF coins. Going once,
35 lakh FF coins going twice. Fair warning to all. And Nexterra Nawabs get Rohit Kumar. Congratulations for 35 lakh FF coins. The category A player, a bowler, goes to Nexterra Nawabs. Congratulations. They've bolstered their bowling arsenal. I can see some teams are holding their purse back for the all-rounders. I see that. Right. Tactics, tactics, tactics in the auction. Chaliye, agla player. Set C ka player number 1. Player number 8 in this set C, that is Mudassir. Godlike Nobita is his player gaming name. Category B player, a batsman. Bid starting at base price of 10 lakh FF coins for Mudassir. Peak Panthers bidding for him at 10 lakh FF coins. Base price for Peak Panthers, they bid at 10 lakh FF coins for Mudassir. Are we going to see any other team jumping into the fray here? You don't want batters, do you? You want batters to come into your squad and get you the runs. You can pick a maximum of 6, remember. Fair warning to all teams. Fair warning, going once to the Peak Panthers, going twice to the Peak Panthers, and sold to the Peak Panthers for his base price of 10 lakh FF coins. It's Mudassir who's found his team in the Peak Panthers. Right, the next player who's going to come under the hammer, or ye player, set C ke player number 4, player number 4. Partik. HTG Partik, category B player, a batsman. Bid starting at base price of 10 lakh FF coins. Bermuda Blasters off the blocks very quickly. 10 lakh FF coins. Kalahari Knights with 15 lakh. 20 lakhs from Bermuda Blasters. 25 from Kalahari Knights. 25 lakhs from the Kalahari Knights. 25 lakh FF coins. Bermuda Blasters are out of it. 25 lakh FF coins. Kalahari Knights, they have thrown down the gauntlet. Koi aur taiyar hai bid karne ke liye. 25 lakh FF coins. That team owner is ready. He's got the paddle in his hand. He says, you ask for it, I'm going to go for it. Going once. No, we've got a bid of 30 coming from Solara Sultans. 30 lakh. 35 from Kalahari Knights. 40 lakhs from Solara Sultans. 40 lakh FF coins. 45 from the Kalahari Knights. 45 lakh FF coins from the Kalahari Knights. 50 lakhs Solara Sultans, not going down without a fight. 50 lakh FF coins, Solara Sultans ki bid hai. 50 lakh FF coins ki. Is category B batsman ke liye. Kalahari Knights say they're out of it. 50 lakh FF coins, Solara Sultans are going to get Partik going once. Fair warning to all teams. Going twice. And sold. Sold there is the batsman Partik to the Solara Sultans at 50 lakh FF coins. Tactics are so important. That's why this is a tactical knife that I've got in my hand. Set C, player number 5. Player number 5 to go under the hammer in this set. Penem Madhu. Penem Madhu, category B player, a batsman hai. Gaming name Madhu Penem. Bid starting at 10 lakh FF coins for Penem Madhu. Anyone coming in with a bid of 10 lakh FF coins for Penem Madhu? Fair warning to all teams. Fair warning once. Oh, we got a bid from Bermuda Blasters at 10 lakh FF coins for Madhu. 10 lakh FF coins, Bermuda Blasters. Is there anybody else coming into this battle now? Going once, fair warning to all teams. Going twice, fair warning to all teams. And sold to Bermuda Blasters. Penem Madhu goes at his base price of 10 lakh FF coins. He's found a team, Bermuda Blasters. Congratulations. Agla player is set C, is C3. Player from set C, player number 3, Naitik Kosto. Naitik Kosto,
The interesting gaming name of Old Monk, category A player, all-rounder, bid starting at 20 lakhs. Peak Panthers have straight away gone into the bid. 20 lakhs, the base price. 25 lakhs, Kalahari Knights come into it. Peak Panthers, वो paddle नीचे भी करना पड़ेगा raise करने से पहले. You have a bid at 30. Yes, 30 lakhs for the Peak Panthers. 35 from the Kalahari Knights. 35, 40 from Peak Panthers. 45 from Kalahari Knights. 50 from Peak Panthers. 50 lakh FF coins Peak Panthers की तरफ से. 55 from Kalahari Knights. 60 lakhs from Peak Panthers. 65 lakhs Kalahari Knights. 70 lakhs from Peak Panthers. 75 from Kalahari Knights. 80 lakhs from the Peak Panthers. 85 lakhs from Kalahari Knights. 90 lakhs from the Peak Panthers. 1 crore from Kalahari Knights. 1 crore 5 lakhs from Peak Panthers. 1 crore 10 from Kalahari Knights. 1 crore 15. Peak Panthers are not backing down. 120 from Kalahari Knights. 125. Peak Panthers are really breaking the bank at the moment. 125 is your bid. 130 is your bid now. Are you going to come in with a bid of 130? Are you coming in with a bid of 130? Yes, Kalahari Knights with 130. Are you going to get a bid of 135? 135 from Peak Panthers. 135 from Peak Panthers. Kalahari Knights say they're out of it. 135 from Peak Panthers going once. Are you in it? 140 from Kalahari Knights. 145 Peak Panthers. 150. 155 from the Peak Panthers. 155, that's 1 crore 55 lakh FF coins. Going once, going twice, and sold to the Peak Panthers. Naitik Kosto. Well, I have to say, this is very expensive, Old Monk. Well done. सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव अगर कोई प्लेयर अब तक रहे हैं एफएफ कॉइन्स के अंदर इस ऑक्शन के, पीक पैंथर्स ने बैंक ब्रेक किया नैतिक कॉस्टो के लिए at 155 lakhs, 1 crore 55 lakh FF coins to Old Monk, the gaming name, of course, for Naitik Kosto. They've got the all-rounder. We all knew that the all-rounders are going to be in demand, and he's gone Peak Panthers way. Well done. Chaliye, next player in set C, and this is player number 9, Jitendra Singh. Jitendra Singh is a category B player, batsman, and goes by the gaming name of Rufani. Base price of 10 lakh FF coins. Have you got a bid coming in for this batsman? Yes, Solara Sultans with a base bid of 10 lakh FF coins for Jitendra Singh. 10 lakhs, the bid from Solara Sultans. Kalahari Knights, 15 lakhs. 20 lakh FF coins, Solara Sultans. 20 lakh FF coins, Solara Sultans. Do we have a bid coming in from Kalahari Knights? Yes, 25 lakhs Kalahari. 30 from Solara Sultans. 35 from Kalahari Knights. 35 lakhs from the Kalahari Knights. 35 lakh FF coins. Kalahari Knights have bid 35. Solara Sultans go to 40. It's all on this side of the room at the moment. 40 lakh FF coins for Solara Sultans. 45 from the Kalahari Knights. 50 from Solara Sultans. 50 from the Solara Sultans. 50, and Kalahari Knights say they are out of it. 50 lakh FF coins, Solara Sultans, going once, fair warning to all teams, going twice. 55 lakhs is the bid from Bermuda Blasters. They come in for a batsman at 55 lakh FF coins. Bermuda Blasters, late entrants into this bidding war. Chaliye, Bermuda Blasters ki 55 lakh FF coins ki bid hai. Solara Sultans, are you out of it? They're out of it. So 55 lakhs, going once to the Bermuda Blasters, going twice to the Bermuda Blasters. Fair warning to all teams for Jitendra Singh. 60 lakh FF coins. Solara Sultans come back to it very, very late. 60 lakh FF coins. Bermuda Blasters, 65 lakhs. Solara Sultans, are you still going to come in it? 65 is the bid from Bermuda Blasters. Going once, fair warning.
going twice, fair warning, and Solara Sultans, last warning, they're out of it. Anyone else who's coming in for this is going to Bermuda Blasters at 65 lakh FF coins. Many congratulations, Jitendra Singh, the category B player. 65 lakh FF coins goes to Bermuda Blasters, please. Bermuda Blasters win it at 65 lakh FF coins. Jitendra Singh, Rufani, गए Bermuda Blasters की ओर. अगले player, category C, player number 10, C10 that is. It's going to be Pankaj Kanwal. Pankaj Kanwal, the all-rounder, a category A player, goes by the gaming name of Ronith. And bid starting at 20 lakh FF coins for Pankaj Kanwal. Bid starting now. Is there anyone bidding for Pankaj Kanwal? An all-rounder, always a premium player. An all-rounder in this format. Remember, you can have 4 of them in your side. What's it going to be? Are you going to bid for it? Yes! Solara Sultans come in with a bid. He comes in with a bid of 20 lakh FF coins, Solara Sultans. 20 lakh FF coins, the bid from Solara Sultans for Pankaj Kanwal. Do we have anyone matching that bid? Is there anyone else coming in? Fair warning to all teams, going once. Fair warning, going twice at 20 lakh, the base price, and 25 lakhs. Bermuda Blasters come in late into that bid. 25 lakh FF coins for Bermuda Blasters, their bid for Pankaj Kanwal. Solara Sultans, are you going to up that? Are you going to up that to 30? No, they're out of it. 25 it is for Bermuda Blasters. 25 lakhs going once. 25 lakhs going twice. And 25 lakh FF coins, it's sold to the Bermuda Blasters. They pick up an all-rounder, a category A player, a bargain by Pankaj Kanwal. Congratulations. Right, ladies and gentlemen, only 2 more players left in this set to go under the hammer. 2 और player हैं जो इस set में हम auction करेंगे और उसके बाद break के बाद आएंगे round 2 के लिए. चलिए, इस set यानी set C का player number 11. Player number 11, that's Roshan Bogati. Roshan Bogati is an all-rounder, category A player, gaming name Roshan. Bid starting at 20 lakhs. 20 lakh FF coins. Kalahari Knights come in with that bid of 20 lakhs. Kalahari Knights with a bid of 20 lakh FF coins. 20 lakh FF coins, Kalahari Knights. Nexterra Nawabs, 25 lakhs. 25 lakhs to the Nexterra Nawabs. 30 lakhs to Kalahari Knights. 30 lakhs. 35 to Nexterra Nawabs. 40 lakhs to the Kalahari Knights. 40 lakhs to the Kalahari Knights. Nexterra Nawabs with 45. 45 lakhs. 50 lakh FF coins, Kalahari Knights. 50 lakh FF coins. 55. The bid from Nexterra Nawabs. They're not holding back. Nexterra Nawabs की bid 55 lakh FF coins की है. रोशन के लिए 55 से bid गई 60 पे Kalahari Knights की तरफ से. 60 lakhs to the Kalahari Knights. Are you still in it, Nexterra Nawabs? Can we see a bid of 65? क्या अब 65 की bid आएगी? 5 more seconds for you or you're out of it. No, 60 it is right now. Kalahari Knights. Will they get Roshan Bogati, the all-rounder, at 60 lakh FF coins? Fair warning to all teams. Going once, going twice, and 65 is the bid from Nexterra Nawabs. They come back late. 65 the bid from Nexterra Nawabs. Kalahari Knights are out of it. They don't want to bid any further. 65, Nexterra Nawabs. Going once, Roshan Bogati. Going twice, Roshan Bogati at 65 lakh FF coins. And sold to the Nexterra Nawabs. A late comeback by the Nexterra Nawabs to back the all-rounder, a category A player, Roshan Bogati, goes the Nexterra Nawabs way. Congratulations. और अब इस सेट सी के अंदर जो आखिरी प्लेयर है, जो लास्ट प्लेयर है, जो हैमर के अंडर आने वाले हैं यहाँ पे, इट्स हैमर टाइम. सेट सी, प्लेयर नंबर 8, इट्स ऋतिक, another all-rounder, a category A player, goes by the nickname of SRV Smarty. Bid starting at 20 lakh FF coins.
Peak Panthers with the bid, 20 lakh from the Peak Panthers, 25 from Kalahari Knights, 30 lakhs from the Peak Panthers, 30 from the Peak Panthers, it's going to be 35 for the Kalahari Knights, 40 from the Peak Panthers, 40, 45 from the Kalahari Knights, 45 is the bid from Kalahari Knights, Peak Panthers are out of it, 45 is the bid from Kalahari Knights. Is there anyone else coming in for this all-rounder? That's Ritik, 45 lakh FF coins. Fair warning to all teams, going once, going twice, and sold. Congratulations, Kalahari Knights. Get the all-rounder, a Category A player. Ritik has found his team. It's going to be the Kalahari Knights. So, ladies and gentlemen, that brings us to the end of set C, and this is the only set we've seen so far where we did not have a single unsold player. All players in this set were sold, but overall, in round one, we've had 2 unsold players. We'll see if the team quotas, agar team ke quotas mein jagah bachi round 2 ke baad, to hum unsold players ko dobara auction hammer ke liye layenge. Let's very quickly, before we take a break, look at how things stand. That's the auction summary for you. We've got the maximum spend by the Peak Panthers, 4 crore 35 lakh FF coins spent by them in this auction so far in round one, which means they've got their core and the nucleus of the team already in place. Now it's about filling the gaps as we go into round two. When you look at the team with the least amount of fund remaining after the Peak Panthers, it's going to be Solara Sultans, who have only 1.45 crores remaining, which means that teams like Kalahari Knights have kept their budget intact and they're waiting for round two to fill the gaps. दिलचस्प रहेगा round two. फिलहाल के लिए हम यहाँ पे एक recess लेंगे. We'll take a recess for the moment and we will take a 20-minute recess and come back with round two of the auction soon. Thank you. Well, what an amazing round one of Booyah Premier League. Free Fire Max के खिलाड़ी यहाँ पर ऑक्शन के लिए आए और क्या कमाल की बिडिंग हुई है इनके लिए. स्पेशली बात करें सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर 1.75 करोड़. नाम बताओ शैडो. देखना पड़ेगा, कहीं मुझे अंधेरा अंधेरा चारों तरफ दिख रहा है. It's black. Yes, it's black. Wow, what an amazing auction. हम लोग बात कर रहे थे कि फौजी अजय का 1.2 करोड़ का क्या कोई वो बेंचमार्क क्रॉस कर पाएगा, एंड बहुत सारे खिलाड़ियों ने किया. ओल्ड मॉन्क he did 1.55, then Black did 1.75, and there was fight for many players यार. Yeah. आई थिंक सो सबसे ज्यादा मेरे लिए जो इंटरेस्टिंग टर्न था वो था माफिया को ना लेना. माफिया वाला लिया फौजी अजय ने, एंड माफिया को नहीं लिया, उसके लिए कोई बिड भी नहीं डाली. वो सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग एंगल था मेरे लिए, एंड आपको भी शायद से वो काफी पसंद आया होगा. बट ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है अभी तक की कि अनसोल्ड प्लेयर काफी कम रहे हैं. मतलब ओनली राउंड वन के अंदर 2 ही अनसोल्ड प्लेयर्स हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. नो, इनफैक्ट राउंड वन में जो सेट सी आया, सेट सी में एक भी प्लेयर अनसोल्ड नहीं गया. सेट सी के सारे प्लेयर्स को खरीदा गया. तो वो जो अनसोल्ड राउंड आने वाला है उसमें सेट सी से कोई खिलाड़ी नहीं आने वाला. अब अगला राउंड होगा, वहां पे भी सेट डी ई एफ आएंगे, एंड अगर उसमें सारे खिलाड़ी, सारी टीम्स ने अपने अपने पर्स से सारे खिलाड़ियों को खरीद लिया, जो 10 खिलाड़ी खरीदते हैं, तो उसके बाद अनसोल्ड वाले प्लेयर्स के राउंड पे हमें जाना ही नहीं पड़ेगा. बट वन थिंग जो हमने देखी बॉस, पर्स, पीक पैंथर्स का पर्स इज जस्ट 65 लाख एफएफ कॉइंस रिमेनिंग. उन्होंने सारा पर्स खाली कर दिया है. बिल्कुल. देखिए काफी खर्चा करा है, हैवी बाई करा है, हैवी बिड डाली है. इट्स वेरी क्लियर कि अब राउंड टू थोड़ा स्लो डाउन हो सकता है, थोड़ा स्लो हो सकता है. जस्ट लुक एट द स्टेट्स, जस्ट लुक एट द ऑक्शन सरमी. यहाँ पे अगर हम चर्चा करें तो 1.45 सीआर अभी भी रिमेन है सोलारा सुल्तान के पास. बट आपने बिल्कुल ये बात सही की, 0.65 सीआर. मतलब अब बहुत सोच समझ के बाय करना पड़ेगा. इवन तो उन्होंने मेजोरिटी ऑफ प्लेयर्स ले लिए हैं, लगभग उनकी टीम पूरी है, पर अब बेस प्राइजेस के ऊपर उनको जाना पड़ेगा. जो बड़ी बैटल होने वाली है यहाँ पर Alpine Aces, Bermuda Blasters, Kalahari Knights और Nexterra Nawabs के बीच में होने वाली, because they have a purse of more than 2 CR. In fact, Nexterra Nawabs उनका तो करीब 3 करोड़ के आसपास का पर्स बाकी है, which is 2.90 CR, which is amazing. सबसे ज्यादा खिलाड़ी पीक पैंथर्स ने लिए हैं, उन 7 खिलाड़ी उन्होंने ले लिए. उसके बाद दूसरे स्थान पे सोलारा सुल्तान्स, उन्होंने 6 खिलाड़ी अपने पूरे कर लिए. इनफैक्ट एक और चीज जो है, बर्मुडा ब्लास्टर्स ने 4 गेंदबाज ले लिए, सो दे कैन नॉट बिड फॉर एनी मोर बॉलर्स, क्योंकि उनका अपर लिमिट
पे पहुंच गए। आप बोलर्स 4 से ज्यादा नहीं ले सकते। यस बिल्कुल सही कहा। जैसे हमने देखा कि बरमूडा ब्लास्टर्स का मैंने देखा सबसे पहले ही बोलर्स का डन हो गया। लेकिन अल्पाइन एसेस इनकी टीम देखो और बताओ शैडो व्हाट डू यू थिंक? टीजी फौजी अजय 120 लाख। अल्पाइन एसेस टीम्स हमारी दर्शन 15 लाख, देन GNX जस्ट 07 40 lakhs एंड माफिया वाला को 20 पे एंड डिऑक्सिस 45 lakhs पे लिए हैं। ये था हमारा अल्पाइन एसेस का पूरा। वेल यहाँ पे छठे खिलाड़ी की जगह पे माफिया का नाम हो सकता था, बट लाइक वी हैव डिस्कस्ड कि उन्हें टीजी एक और नहीं चाहिए था। उन्होंने कहा 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा हो सकता है, तो हम 2 के साथ ही रहते हैं। आई थिंक सो चैट ने भी काफी अच्छे से रिएक्ट किया था कि ये सरप्राइज क्या हुआ है, एंड जितने दर्शक हमारे से जुड़े थे उन सभी ने कहा कि यार इसकी तो हमें उम्मीद थी। पर ऑन दी अदर साइड बर्मुडा ब्लास्टर्स की अगर हम बात करें, लगभग इनकी टीम पूरी हो चुकी है। 30 लाख से इन्होंने यहाँ पे रॉकेन आरडीएक्स को बाय करा था, देन ब्लैक फ्लैग आर्मी की तरफ गए 40 लाख, इसके बाद चिरायू गेमिंग 25 लाख, लुइस विद 90 लाख। ये काफी इंटरेस्टिंग बिड थी, हमने चर्चा भी करी थी कि लुइस काफी हैवीली बाय होंगे। आप बोलने वाले थे, आप तो बता रहे थे कि लुइस के लिए शायद 50-60 जाएगा, लेकिन 90 चला गया था। बिल्कुल, और इसी के साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम बात करें तो और भी प्लेयर्स उन्होंने बाय करे। लास्ट बाय जो उन्होंने करा है रोनित का करा है, बहुत कमाल के IGL हैं। आई थिंक सो दे हैव लीडरशिप, बट राइट नाउ एक ऐसी कंपेनियन टीम है जिस पर आप रिलाई कर सकते हो। रोनित वन ऑफ दोज प्लेयर्स। तो बर्मुडा ब्लास्टर्स का स्क्वाड आपके सामने है। उन्हें अभी भी 3 और खिलाड़ी लेने हैं अपने आज इस ऑक्शन में से। पूरे 11 उन्हें कंप्लीट करने, एक बाकी प्लेयर एडेड है, तो इनफैक्ट 4 और खिलाड़ी उन्हें अभी लेने पड़ेंगे। ये बर्मुडा ब्लास्टर्स का स्क्वाड आपके सामने आ गया। चलिए अब अगली टीम की तरफ बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं और दूसरी टीम्स की किस तरीके से उन्होंने अपने स्क्वाड को भरा। एक बार फिर से सारे दर्शकों को याद दिला दें कि बैट्समैन आप मैक्सिमम 6 ले सकते हो, लेकिन ऑलराउंडर मैक्सिमम 4 एंड बॉलर्स मैक्सिमम 4। कलहारी नाइट्स का स्क्वाड आपके सामने। बिल्कुल। TG डिलीट, अंशु जूनियर, इंसेन अरीना एंड SRV स्मार्टी। एज वी ऑल नो स्मार्टी अमित भाई के फेवरेट है एंड एज ओनर उन्होंने अपना काम दिखाया। एंड इस टीम के जो अंशु जूनियर है, एज वी सेड 100 lakhs और 1 करोड़ वी कैन से। एंड जैसा कि मैंने बोला था, प्रोफेशनल प्लेयर। अंशु जियर की हमने चर्चा करी थी कि काफ़ी ज़्यादा उन पे इन्वेस्ट करेंगे एंड काफ़ी ज़्यादा बिड उनके ऊपर जाएगी, एंड हुआ भी है। ऑन दी अदर साइड अगर हम बात करें तो इंसेन एरिना, इनकी मैं जरूर चर्चा करना चाहूँगा। हैवी प्लेयर होने वाले हैं। अगर पावर प्ले की बात आए तो ये हैवी शॉट्स ले सकते हैं, एंड आई थिंक सो ये एक ऐसा पिक रहने वाला है जो मुझे लगता है बहुत स्मार्ट पिक है, एंड बहुत क्विकली उन्होंने लिया और दूसरे को किसी को मौका नहीं दिया। तो आई थिंक सो इंसेन एरिना वन ऑफ दोस कहते हैं कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स हो सकते हैं। भाई इंसेन एरिना कलहारी नाइट्स के हैवी ड्राइवर हो रखे हैं। ये होंगे इनके हैवी ड्राइवर। वेल चलिए अगली टीम की तरफ बढ़ते हैं। कलहारी नाइट्स के बाद अब लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट्रा नवाब्स। इनका बहुत ज्यादा पर्स अभी बाकी है, इनफैक्ट सबसे ज्यादा पर्स वैल्यू इन्हीं के पास बाकी है। कई स्टील डील्स मिली इन्हें। यस बिल्कुल ही। नेक्स्टेरा नवाब में हमारे जैसे ऋतिक भाई एंड सुनीता, उन दोनों का पूरा माइंड गेम ही स्टार्टिंग में ही उन्होंने दिखाया। जैसे TSG लेजेंड हमारे 50 lakhs पे, देन अर्जुन को 15 lakhs में उठाया उन्होंने, एंड मोखरिया को 45 lakhs, राजू को 35 lakhs एंड रोशन को 65 lakhs पे। मुझे लगता है इन्होंने जो बाय किया है, इनका स्ट्रैटेजी पहले ही ऐसा था कि अपने को देख के लेना है, एंड सेकंड को मे भी ये लोग मैक्स पुश कर सकते हैं, क्योंकि हमने जितना देखा बहुत सारे टीम के जो रिमेनिंग करेंसीज है वो भी डाउन हो चुके हैं। तो इनके पास अभी ये चीज़ का एडवांटेज हो सकता है कि जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम अपना गेम दिखाएंगे। चलिए अब आपको उस टीम का स्क्वाड दिखाते हैं जिसने करीब अपना पर्स खाली कर दिया। सिर्फ 65 लाख उनके पर्स में बचे हैं। नाम है इस टीम का पीक Panthers. They've spent 4.35 CR and they are left with just 65 lakh FF coins, and that's the squad. आई थिंक सो यही एक ऐसी टीम होने वाली है जो सबसे ज्यादा क्लोज आ चुकी है अपनी टीम को पूरा करने के। तो अगर उन्होंने स्पेंड करा है तो इसके बाद अब देखिए बेस की तरफ उन्हें जाना पड़ेगा। जैसे कि हमने बात करते हैं बेस प्राइजेस की तरफ जाना पड़ेगा। जॉन्टी गेमिंग के ऊपर ही पूरी टीम को उन्होंने डिजाइन करा है। इवन तो अगर हम बात करेंगे तो KV18, इसकी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि ये काफी ऊपर जाने वाले हैं, एंड 1 CR इट मींस 100 lakhs की तरफ हो गए। इसका ओल्ड मॉन्क, तो इट्स वेरी क्लियर कि किस तरीके से एसएट्यूएल ओरिएंटेड या फिर वो ओल्ड एलीट, आई थिंक सो जितने फैंस होंगे उनके लिए एक ओल्ड मेमोरी रहेगी ओल्ड मॉन्क के साथ। तो वो 155 लाख या फिर 1.55 CR वो एक नॉस्टैल्जिक पार्ट होगा। तो आई थिंक सो ये एक परफेक्ट टीम होने वाली है, एक सॉलिड टीम है। पावर प्लेयर्स हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर्स जो रेगुलर क्रिकेट खेलते हैं।
एंड एक्चुअली में अगर हम इन पीक पैंथर्स के 3 खिलाड़ियों को ही देखें तो 3.5 करोड़ एफएफ कॉइंस वही हो जाते हैं. जॉन्टी गेमिंग, देन वी हैव KV18 एंड ओल्ड मॉन्क, दैट इज 3.55 CR एफएफ कॉइंस. चलिए आखिरी टीम बूया प्रीमियर लीग की, उनका स्क्वाड दिखाते हैं. सोलारा सुल्तान्स, ये रहे आपके सामने. 6 खिलाड़ी इन्होंने भी यहाँ पर ऑक्शन में अपने लिए लिए, एंड वासियो उनके मार्की प्लेयर. यस, RNTX ब्लैक को 1.75 करोड़, इट मींस 175 lakhs में ब्लैक अभी तक की सबसे हाईएस्ट बिड गई है. अब आई थिंक सो किसी के पास इतनी स्पेंडिंग पावर भी नहीं है, ना पर्स है कि भाई यहाँ पे वो ऐड कर सके प्लेयर्स को. और इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे उनके पास हेलो तेलुगु गेमर्स HTG भी होने वाली हैं, 10 lakhs, बहुत सारे प्लेयर्स हमने देखा कि इन्होंने 20 प्राइस के ऊपर लिए हैं. एंड यहाँ पे राहुल गेमिंग 50 lakhs हमें नजर आएगी. तो ऑफ कोर्स एक इंटरेस्टिंग टीम है. देखिए हमें साफ नजर आने लग गया है कुछ प्लेयर्स ने जो सिनर्जीज हैं उनके ओरिएंटेड, ई स्पोर्ट सिनर्जीज के ओरिएंटेड ये चीजें बनाई, टीम बनाई है. पर कुछ प्लेयर्स ने, कुछ टीम कैप्टन्स ने आई थिंक सो कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स करें, उनमें से एक नाम होने वाले हैं. भाई तो चलिए हमने आपको 6 टीम्स बता दी और हमने आपको उनका स्क्वाड दिखा दिया. एक बार फिर से आपको बता दूं, इस वक्त सबसे ज्यादा पर्स नेक्स्ट्रा नवाब्स के पास है और सबसे कम पर्स पीक पैंथर्स के पास है. पीक पैंथर्स दे जस्ट हैव 65 lakhs. ये है ऑक्शन समरी आपके सामने. और यार ये थोड़ा आप बताओ मुझे यहाँ पर क्या हो रहा है, अब क्या लगता है किस तरीके से आगे लेकर जाएंगे? बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो अल्पाइन एसेस हमें जरूर से यहाँ पे नजर आएंगी विद 5 CR. एंड ऑन दी अदर साइड अगर हम बात करेंगे 5 CR में से उनके पास 2.6 CR उनके पास बचा हुआ है. ऑन दी अदर साइड अगर हम बात करेंगे बर्मुडा ब्लास्टर्स के बारे में, देखिए 5 CR का पर्स था उनके पास भी, 2.15 CR उनके पास बचा हुआ है. इट मींस 215 lakhs. इसके अलावा अगर हम बात करेंगे देखिए कैटेगरीज के बारे में, देखिए कैटेगरी A के अंदर मेजॉरिटी ऑफ टीम्स ने अपनी जेब भर ली है, पर सोलारा सुल्तान हमें जरूर से नजर आएंगे विद ओनली 1 कैटेगरी 1 प्लेयर. तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा उन्हें कि अब उन्हें कैटेगरी A से कुछ प्लेयर्स को उठाना पड़ेगा. कैटेगरी B में उनके पास 5 प्लेयर्स होने वाले हैं, पर देखने वाली बात रही किस तरीके से वो आगे जाने वाले हैं. पर देखिए अगेन 0.65 CR का जो ये पिक पैंथर्स के पास रिमेनिंग वैल्यू है. अब देखिए मैं बार बार यही बात कह रहा हूं कि देखिए बेस वैल्यूज के ऊपर बहुत सारे प्लेयर्स को बाय करने की जरूरत है, पर देखिए अल्टीमेटली उनकी टीम पूरी हो चुकी है. एंड अगर हम चर्चा करें नेक्स्ट्रा नवाब्स 5 CR. एंड अगेन कैटेगरी A से उनके पास 3 प्लेयर्स होने वाले हैं, कैटेगरी B से 1 प्लेयर. और मैं अगेन बात करूंगा कालाहरी नाइट्स के बारे में. देखिए 5 CR की पर्स वैल्यू के साथ वो भी आए थे, अब बचे हुए 2.85 CR. एंड 2 कैटेगरी A प्लेयर एंड 1 कैटेगरी B प्लेयर. सो देखने वाली बात रहेगी किस तरीके से आगे टीम बनाने वाले. अल्टीमेटली ध्यान इस चीज़ का भी रखना पड़ेगा कि पर्स को भी ध्यान में रखना है. एंड देखिए पॉकेट के साथ ही साथ वो अच्छे प्लेयर्स भी उठाने जिनके साथ अच्छी सिनर्जीज बने. बहुत सारी टीम्स के अंदर हमने देखा कि बेस पिक्स के ऊपर टीम गई हैं एंड बेस बाय करें उन्होंने. यही अगर हम चर्चा करें कुछ प्लेयर्स ऐसे भी गए हैं जो एक एवरेज वैल्यू के अंदर गए हैं. जैसे अगर हम चर्चा करेंगे टीम सोलारा सुल्तान्स के अंदर राहुल गेमिंग 50 lakhs और पास्ट उनका क्रिकेट एक्सपीरियंस भी रहने वाला है, काफ़ी अच्छे खिलाड़ी रहने वाले हैं. तो देखने वाली बात रहेगी राहुल गेमिंग कितना अच्छा एडिशन उनके लिए साबित होते हैं. इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे टीम अल्पाइन एसेस, देखने वाली बात रहेगी किस तरीके से अब ये टीम बनाने वाली है यार, इनकी टीम किस तरीके से हमें फॉर्म होती हुई नजर आने वाली है. बाकी बूया प्रीमियर लीग अपने आप में ये पहला एडिशन होने वाला है. एंड देखने वाली बात रहेगी कि टीम्स किस तरीके से यहाँ से सबक लेती है एंड ग्राउंड तक पहुँचती है. हमने इन्हें बैटल रॉयल के अंदर ऑफकोर्स फाइट करते हुए, युद्ध करते हुए देखा है, बट आज देखेंगे कि ये किस तरीके से एक्चुअल ऑन ग्राउंड, रियल ग्राउंड की प्रिपरेशन करते हैं. और जी हाँ, अब इसके साथ ही साथ कुछ और सेगमेंट्स की तरफ चलते हैं, कुछ और डेटा के बारे में बात करते हैं, कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं. जैसे बर्मुडा ब्लास्टर्स, देखिए अगेन हमारे साथ एक इंटरेस्टिंग टीम होने वाली है. एंड आई थिंक सो बहुत ही जल्दी हमारे साथ कुछ गेस्ट भी जुड़ेंगे. देखिए जॉन्टी गेमिंग, मैंने इनको खेलते हुए देखा है, मैंने इनको टर्फ में खेलते हुए देखा. बहुत कमाल के प्लेयर होने वाले अपनी टीम की तरफ से, और देखते हैं कि किस तरीके से ये अपनी टीम को आगे लेके जाते हैं. बर्मुडा ब्लास्टर्स की मैं चर्चा कर रहा था. देखिए रॉकेन आरडेक्स के ऊपर, ये मार्की प्लेयर के ऊपर पूरी टीम बनी हुई है, पूरी टीम उनके ओरिएंटेड बनाई है. इट्स वेरी क्लियर कि देखिए जिस भी प्लेयर को आप मार्की बना रहे हैं उसके ओरिएंटेड आप टीम बनाएंगे. उनका डिसीजन मेकिंग में काफ़ी ज़्यादा हाथ रहने वाला. उन्होंने काफ़ी अच्छे से प्लेयर्स को भी चूज़ करा अभी तक. इसके साथ ही साथ
यहाँ पे अगर हम बात करें ब्लैक फ्लैग आर्मी के बारे में तो वो 40 lakhs के साथ हमें नजर आए थे। देखते हैं कि आवारा भाई क्या एडिशन नया लेके आने वाले हैं। इसके अलावा चिरायु गेमिंग देखिए, वन ऑफ द फाइनेस्ट कास्टर, वन ऑफ द यंगेस्ट कास्टर इन इंडियन फ्री फायर मैक्सीन, वो भी काफ़ी अच्छा एडिशन लेके आएंगे। पर देखिए अभी हमने काफ़ी अच्छे से बिड्स देखी, काफ़ी अच्छे से हमने होते हुए देखा कि टीम्स ने किस तरीके से, कैप्टन्स ने किस तरीके से बिड डाली है। पर अब जानना जरूरी है उन्हीं कैप्टन से कि उनके माइंड में क्या है, किस तरीके से उन्होंने बिडिंग करी है। हमने बहुत सारे एक्चुअल रियल लाइफ वर्सेस देखे, हमने इन गेम वर्सेस देखे, रियल लाइफ में देखे, और वी हैव आवर कैप्टन्स ऑनर्स, वी हैव देसी गेमर अमित भाई, वी हैव जॉन्टी गेमिंग जॉन्टी भाई। कैसे हैं आप? बस बहुत ही बढ़िया, आप बताओ। बस मैं भी बढ़िया। बट आपने जो अभी बिड करी है, सबसे हाईएस्ट बिड में कौन सा प्लेयर उठाया आपने? मैंने 1 करोड़ में उठाया था। हाँ। और क्या था, अंशु जूनियर ना, अंशु जूनियर में उठाया था। एंड मेरे को मन था कि मैं ओल्ड मॉन्क को लूँ 1.5 करोड़ तक में जी। बट इन्होंने मतलब इंटेंशन ऐसा बना गया था कि बाकी प्लेयर ले लेंगे, बचा हुआ पैसा पूरे ओल्ड मॉन्क में लगा देंगे। ये लोग 2 करोड़ तक जाने के लिए रेडी थे, तो मेरे को भी टीम बनाना, मैंने अभी तक सिर्फ 3 प्लेयर खरीदा हुआ है, तो अभी बाकी और अच्छे से प्लेयर आने बाकी है, देखते हैं क्या होता है। अभी भी 3 सेट्स बचे हुए हैं और अभी भी पूरा राउंड 2 बचा हुआ है, उसके अलावा राउंड 3 भी बचा हुआ है। वैसे उसमें काफ़ी प्लेयर्स जा सकते हैं, पर मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमारी बात भी हुई थी पास्ट में, आपने बोला भी था जब हम लोग ऐसे बैठे हुए थे, जब चिट चैट कर रहे थे, आपने बोला था मैं टीम्स खराब करूँगा बाकी सबकी, मेरी तो अच्छी बनेगी बाकी सबकी भी खराब करूँगा। पर अब बताइए आज का प्लान लेकर के आए थे? तो मेरा ये प्लान था कि देखो, मैं टारगेट करके आया था कि मुझे केवी और ओल्ड मॉन्क चाहिए ही चाहिए, और उसका बजट मैं 3 करोड़ तक लेके आया था। लेकिन मेरे को वो 1.55 में जो ओल्ड मॉन्क मिला ना, तो उसकी वजह से अब मेरे पास 65 बचा है और मुझे लेने भी सिर्फ 3 प्लेयर हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा मेरे पास 45 लाख है ना, वो मैं हर एक प्लेयर पे डालने वाला हूँ, ताकि किसी को भी कोई प्लेयर सस्ते में ना मिले। 50 लाख तो उसको लगाना ही पड़ेगा हर एक पे, और अगर वो छोड़ते हुए तो भी मेरा फायदा होता है, क्योंकि मैं लगाने वाला हूँ अच्छे प्लेयर पे। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी कि जो मेरे पास पैसा बचेगा वो मैं सबका खराब करूँगा। अब ऐसा नहीं है कि अल्पाइन का सोच रही है 20 लाख में, नहीं, मैं 40 तक जाऊंगा, या तो आप उसको छोड़ दो। वाओ, तो अभी भी अग्रेसिव प्ले करने का आपका इरादा है। पर देखिए ये अग्रेसिव प्ले भारी भी पड़ सकता है अगर कोई यहाँ पे चैलेंजर मिलेगा। वैसे आपने अपनी लगभग टीम बना ली है, वैसे एक बार बताइए आपकी टीम में कौन कौन है थोड़ा दर्शकों को। मैंने ये सोचा था कि मेरे को 5 प्लेयर T2 से चाहिए, वो 10 लाख में आ जाए, और मैंने उसमें कोई बड़ा प्लेयर ऐसे नहीं सोचा था कि कोई बड़ा भी आए। मेरे को चाहिए था कि अच्छी फील्डिंग हो, अच्छा थोड़ा बैट भी चलता हो तो अच्छा है, क्योंकि 10 ओवर का मैच अगर होता है तो ऊपर को मेरे को अच्छे चाहिए ओपनिंग जोड़ी, ठीक है। तो मैंने क्या करा कि बादल पे पैसा लगाया, और वो मैंने ऐसे ही लगाया था, ठीक है। और वो बैट्समैन अच्छा था, बट मेरे को था कि वो सुल्तान के पास जाएगा, तो इससे अच्छा है कि मेरे पास आया, और वो 30 लाख में मुझे मिल गया, तो वो मेरे को एक अच्छा बैट्समैन मिल गया। तो नोबिता के साथ मैं खेला हुआ हूँ MIC के टाइम पे, और मुझे नहीं पता था कि वो एक तो वो लेफ्टी है, ऊपर से वो बैटिंग अच्छी करता है, तो वो 10 लाख में वो भी मुझे मिल गया। तो मेरे को जो छोटे प्लेयर्स भी लेने थे ना, उसमें भी मुझे एडवांटेज मिल गया कि वहाँ पे बैट्समैन बॉलर मिल गए। बाकी केवी और मॉन्क के लिए तो मैं आया ही था, तो वो मिल गए। क्या बात है, बहुत अच्छा प्लान बताया है। वैसे मैं आपसे जानना चाहूंगा अमित भाई, कोई एक ऐसा कैप्टन, कोई एक ऐसी टीम जो लग रहा है बार बार काम बिगाड़ रही है आपका? भाई ऐसी बात तो नहीं है, मैंने जिस प्लेयर को टारगेट कर रहा था उस टीम को बेसिकली इनकी टीम भी टारगेट कर रही थी, और इसी चक्कर में शायद से इनका थोड़ा ज़्यादा खर्चा हो गया, बट क्या करें, मुझे भी वो प्लेयर चाहिए था। बट बाय द वे, मैं अगर टीम अभी तक जो टीम बन रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि वासु की टीम काफ़ी बढ़िया बन रहा है, क्योंकि हम सिर्फ 2-4 प्लेयर पे ही फोकस कर रहे हैं। वासु एकदम समझदारी से, लाइक नॉन स्टॉप गेमिंग, उनकी टीम में 3 बंदे खेलते हैं, मार्की भी खेलता है, नॉन स्टॉप भाई भी खेलते हैं, मुन्ना भाई गेमिंग भी खेलता है, तो उनकी टीम काफ़ी बेस्ट बन रही है, लोगों ने ये नोटिस नहीं किया है। एंड दूसरी तरफ बात करें भाई TSG ऋतिक की जो टीम है, सुनीता की टीम, उन्होंने एकदम सोच समझ के पैसे लगा रहे हैं, उनके पैसे सबसे ज़्यादा शायद से बचे हुए हैं, और उनके जो मनपसंद प्लेयर शायद से अभी तक आए नहीं है, तो देखते हैं आए क्या होता है। और मेरा भी बाय द वे सिर्फ 3 प्लेयर उन्होंने अभी तक परचेस किया है, और 2 सेट बाकी है, उनमें से हम लोग और 7 प्लेयर उठाने वाले हैं। तो मतलब अभी तक आपने जो बैलेंस और कंट्रोल्ड वे में, इकोनॉमिकल वे में आपने जो बाय करा, थोड़ा एग्रेसिव तो आपको भी जाना पड़ेगा, क्योंकि अब सेट एक बचा हुआ है। नहीं, ऐसी बात भी नहीं है यार, मैं एग्रेसिव गया हूँ, मैं 1.2 CR 1.5 CR तक गया, बट अब इंटेंशन अगर किसी बंदे का माइंडसेट ये है कि मुझे लेना ही लेना है, तो उस टाइम पे हम अंधा खर्चा नहीं कर सकते किसी एक प्लेयर के लिए, क्योंकि हमारे उनकी टीम ऑलरेडी बन चुकी है, तो हमारी टीम तब तक बनी नहीं है। मेरा ये था कि मैं ओल्ड मॉन्क पे 2 करोड़ तक जाऊंगा, अगर वो मुझे नहीं मिला तो जिसको भी वो मिला उसकी टीम खत्म हो जाएगी,
क्योंकि उसके पास बजट ही नहीं बचेगा। और मैं तो वो सोच के आया था और मैं ओल्ड मोंक नहीं लेता, तो उसकी जगह मेरे पास 2 प्लेयर और ऐसे थे जिसपे मैं 1-1 करोड़ लगा के उनको परचेज कर सकता हूँ। बट हाँ, बाय द वे एक चीज़ हमको बेनिफिट ये है कि हमने कम प्लेयर अभी रखे हुए हैं और आधे से ज़्यादा टीम के पैसे ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है, तो हम लोग थोड़े सस्ते प्राइस में हो सकता है अच्छे प्लेयर्स मिल जाए, मौका चांस है, बट डिपेंड करता है क्योंकि ये बोल रहे हैं जैसे कि इनके पास 65 लाख बचे हुए हैं, ये तो किसी भी प्लेयर रैंडमली लाइक 40 लाख चले जाएंगे और हमको मजबूरन उस टीम को 55 में खरीदना ही पड़ेगा, तो ये थोड़े से हम काम बिगाड़ सकते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से प्लान स्टडी कर रखा, पर मैं ये जानना चाहूंगा ट्रॉफी आप लोगों ने अनरिवील करी एंड आप लोगों ने ट्रॉफी देखी, कैसी लगी ट्रॉफी? क्योंकि पर्सनली बताएं, मैंने इतनी बड़ी ट्रॉफी सोची भी नहीं थी, पर मेरी ये तो बहुत ही बड़ी ट्रॉफी है। ये मेरे स्ट्रीमिंग सेटअप के पीछे काफी बढ़िया लगी मुझे लग रहा है, बट ये मैंने सुनने में आया कि मैंने टच नहीं किया, हालांकि टच नहीं करना चाहिए, मैंने सुना है ट्रॉफी टच करने से हार जाते हैं, तो ये शायद से 14 केजी का है। अच्छा, 14 केजी? या तो वाओ, इनकी टीम वैसे भी कमजोर है, नहीं उठा पाएगी, मेरी बहुत तगड़ी है, मैं उठा सकता हूँ। 14 केजी हो 20 केजी हो, मैं उठा लूंगा भाई। देखिए उनके पास और भी प्लेयर्स हैं उठाने के लिए, अकेले नहीं उठानी है। अभी मैं से बता रहा हूँ, अभी ये 3-4 टीमें हैं जिनके पास अभी 2 करोड़ के ऊपर पैसा पड़ा है, तो मेरे को लग रहा है अभी तीनों का काम खराब होगा एक दूसरे से, और बीच में मैं वो बनूंगा जो 50 लाख से नीचे नहीं जाने दूंगा प्लेयर को। नहीं, मुझे ऐसा फील हुआ कि अगर अब तक ऑक्शन में थे, 3 सेट का ऑक्शन हो चुका है, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि सब लोग अपना माइंडसेट क्लियर करके आए हुए हैं कि मुझे इस प्लेयर में इतने रुपीस की बैटिंग लगाना है, क्योंकि मैं जब हम लोगों ने प्लान ये किया था कि ओल्ड मॉन्क पे हम लोग 1 करोड़ तक जाएंगे, बट फिर हम लोगों ने बोला एक अच्छा बैट्समैन तो चाहिए, और ओल्ड मॉन्क नो डाउट बहुत ही अच्छा, उन्होंने वीडियो जो सबमिट किया था बहुत ही खास था, सबसे बेस्ट था, वन ऑफ द बेस्ट था, तो हमने सोचा 1.5 करोड़ तक जाते हैं, एक कोई प्लेयर को सस्ते में ले लेंगे, बट इन्होंने जैसे माइंडसेट बना के आया था 2 करोड़ तक जाएंगे, और अब मैं 2 करोड़ डालूंगा तो मेरा टीम नहीं बन पाएगा, तो मेरे को मजबूरन बैकअप होना पड़ा। पर मैं इस बीच में एक और प्लेयर की बात करना चाहूंगा, ब्लैक 1.75। हमें पता था, आपने भी बोला था कि आपने उनके साथ 6-6 बॉल का वर्सेस करा था। ब्लैक का मेरे को ऐसा फील हुआ कि ज्यादा रेट होने का मतलब प्राइस जो है उनका एफएफ टोकन जो है 1.75 सीआर में गए। ब्लैक बेसिकली लाइक बेस्ट बैट्समैन भी है और बेस्ट बॉलर भी है, तो जिसने भी लिया उसको फुल्ली डबल एडवांटेज है। बेसिकली उसको ये समझो कि 75 लाख के 2 प्लेयर मिल गए। मतलब ऐसा है कि मैं ब्लैक पे भी 2 करोड़ मतलब मेरा था मोंक ब्लैक 2 करोड़ तक जाना ही है मुझे। 2 करोड़ तक केवीटन के लिए 1 करोड़ था मेरे पास, उन दोनों के लिए मतलब ये था कि 2 करोड़ तो मैं जाऊंगा, ठीक है, लेकिन ब्लैक को फिर मैं लेता गया ऊपर तक, तो 1.75 तक जब आया तो फिर मैंने कहा अच्छा खासा खर्चा हो गया है उनका, वरना 1.5 तक कोई टीम नहीं लगाती जी। तो 1.5 पे उनको मिलने ही वाला था, तो मैंने 25 लाख और एक्स्ट्रा करवा दिया कि ठीक है इन पे जाने दो, बजट खराब। हाँ, तो फिर मैंने कहा ठीक है ये चला गया, अभी ये तो हट ही गए रेस से, इनके पैसा है नहीं, अब हम लगाएंगे ओल्ड मॉन्क पे पैसा। असली गेम तो अब शुरू होगा, जो लोग लाइव में व्यूअर्स लोग देख रहे हो भाई, असली गेम अब शुरू होगा, क्योंकि अभी क्या है ना, सबको सोच समझ के पैसे लगाने हैं, और किसी के पास ज़्यादा पैसे है तो किसी के पास कम पैसे हैं, किसी का टीम कंप्लीट हो चुका है तो किसी का टीम मतलब पूरा बनना बाकी है, तो असली फन तो अब नेक्स्ट 2 सेट होने वाला है। क्योंकि अब देखिए जो आने वाले सेट्स उसमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। वैसे मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा, बैटल रॉयल आपने बहुत खेला है, आपने बहुत ज्यादा फ्री फायर मैक्स खेला है, आप तो प्रो रह चुके हैं, आपने तो क्या टियर 1 में धूम मचाई है, आपने तो ऑलवेज लोगों को एंटरटेन किया है एंड ऑलवेज आपने सपोर्ट करा है। पर मैं जानना चाहूंगा बूया प्रीमियर लीग जी, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आया, कैसा लगा जब पहली बार इसके बारे में सुना? क्योंकि देखिए गेमर्स को ग्राउंड तक लेके आना, वहाँ क्रिकेट खिलाना, ये अपने आप में एक बहुत नई चीज है। देखिए हम लोग पिछले 7-8 साल से लिटरली 8 के अब धीरे धीरे करके 10 साल में निकल जाएंगे, ठीक है, तो धीरे धीरे लिटरली हम लोगों ने इतना कुछ गेम के माध्यम से एक दूसरे को कनेक्ट किया, एंटरटेन किया, और मुझे ऐसा फील होता है जब भी फ्री फायर गेम के अलावा फ्री फायर मैक्स टीम कुछ होस्ट करती है, जैसे बूया अवार्ड टोटली सक्सेसफुल इवेंट था, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई हारता है कोई जीतता है, बूया अवार्ड हो या फिर बूया प्रीमियर लीग में भी हम लोग लास्ट भी हो सकते हैं, मे भी हम लोग फर्स्ट भी हो सकते हैं, मे भी हम लोग कुछ भी हो सकते हैं, कोई एक टीम लास्ट होगा फर्स्ट होगा, बट कम्युनिटी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिखाती है, क्योंकि उनको भी कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिलता है, और जो अरीना में जिस प्रकार से जिस प्रोडक्शन क्वालिटी के साथ ये क्रिकेट मैच बूया प्रीमियर लीग होस्ट किया जा रहा है, आई एम डेफिनेटली कि पीपल विल लव इट। हमने अभी ऑक्शन में देख रहे थे लोग कमेंट पे एक दूसरे को ट्रोल कर रहे हैं, फुल एंगेजिंग इंटरटेन हो रहे हैं लोग, एंड आई एम हैप्पी टू सी दैट। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। मतलब गेम में तो सबने देखा ही है कि हम मजे कर रहे हैं, मस्तियां कर रहे हैं, अब वो चीज फील्ड में दिखेगी, ठीक है, और फील्ड में मतलब ये नहीं कि सीरियस खेल रहे हैं, अब मैं इसकी बॉल पे छक्का मारूंगा, अभी लोगों ने बस मैं इसकी बॉल पे छक्का मारूंगा तो मैं नाचूंगा ना भाई वहाँ। सुनो, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ डिजिटली देखा हुआ है हमारा परफॉर्मेंस को, इस बार फिजिकली देखने वाले हैं। अब जैसे बॉलिंग कराएंगे, इनकी टीम के किसी को छक्का मारूंगा तो मैं नाचूंगा भाई वहाँ, फिर तो स्लेजिंग भी अच्छे से होगी, बहुत मजा आएगा। अगर मैंने गलती से भी 6 मार दी ना भाई, CR7 का सू करूंगा मैं।
देखिए आपको CR7 का सू नहीं करना चाहिए, आपको MS धोनी का कुछ करना चाहिए। तो मैंने नंबर 7 सच बोलूं तो CR7 को देख के लिया था, बिकॉज मैं उनका बहुत ही बड़ा फैन हूँ इसलिए। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। एंड देखिए बूया प्रीमियर लीग अपने साथ कई सारे सरप्राइजेस लेके आया है, पर वो सरप्राइजेस अभी भी बचे हुए हैं। कई सारे सरप्राइजेस आपको जल्दी मिलने वाले हैं, पर उससे पहले लेना पड़ेगा हमें एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस से मुलाकात करते हैं और बिडिंग के साथ।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक भाई। ब्रेक से पहले फर्स्ट राउंड ऑफ ऑक्शन हुआ बुआ प्रीमियर लीग का, जहां पर फ्री फायर मैक्स के बहुत सारे खिलाड़ी ऑक्शन में सामने आए। कईयों पर बहुत हैवी बिडिंग हुई, कई अनसोल्ड गए, लेकिन कुछ बड़े नाम जो हमारे सामने आए उसके बारे में फिर से हम बातें करेंगे। और मेरे साथ यहाँ पर ऑरा और शैडो हैं स्टूडियो में। एंड भाई फर्स्ट राउंड ऑफ ऑडिशन बोल रहा हूँ, ऑक्शन वाज वेरी 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 एक्साइटिंग। शैडो, तेरा बेस्ट मोमेंट कौन सा था फर्स्ट राउंड ऑफ ऑक्शन का? ब्लैक एंड ब्लैक। आगे भी बोल भाई, पूरे पैसे ले रहा है। ब्लैक का जिस टाइम ऑक्शन चल रहा था, आई वाज क्लूलेस कि ये कितने पे जाएगा। 1 करोड़, हाँ 1 करोड़ उसके आसपास, बट 1.75 दैट्स इनसेन एक्चुअली। एंड फिर बाकी मैंने देखा उसके थोड़े देर बाद जब बिडिंग स्टार्ट हुआ, प्लेयर्स उनका स्ट्रैटेजी मैं देखा, कई कुछ स्ट्रैटेजीज बनाकर आए थे, कुछ स्ट्रैटेजीज बने प्रॉपरली, कुछ स्ट्रैटेजीज टूटे, कुछ अभी तक बना नहीं पाए। मे बी इन द नेक्स्ट हाफ वो लोग करेंगे। स्ट्रैटेजी से मैं एक बात समझाऊं हो रहा, अभी आप ये जॉन्टी एंड देसी गेमर्स से बात कर रहे थे, तो जॉन्टी अपनी स्ट्रैटेजी बना के आया था कि यार मैं तो 2 करोड़ तक लगाने को रेडी था कुछ प्लेयर्स पे। वहीं यहाँ पर देसी गेमर्स कह रहे थे कि यार अपनी स्ट्रैटेजी क्लियर है भाई, कम भाव में अपन खिलाड़ी खरीदें ताकि अपने अगर कोई बहुत ही ज्यादा पसंद हो तो अपन उसके लिए पूरा पैसा लगा दे। सो व्हाट डू यू थिंक, किसकी स्ट्रैटेजी बेटर है? आप अभी इंटरव्यू कर रहे थे उनका। आई थिंक सो अब ना आपको बैलेंस होकर के सोचना पड़ेगा। अगर आपको कई सारी टीम्स है, जैसे पीक पैंथर्स की बात करें, देखिए इतना बजट नहीं है। कई सारे प्लेयर्स को हो सकता है वो एकदम बेस लाइन पे खरीदने की कोशिश करें, और कई सारे प्लेयर्स के लोग कर सकते हैं। अभी भी थोड़ी अपन 3 प्लेयर खरीदने हैं, 8 है उनके पास, 11 का स्क्वाड कंप्लीट करना है, एक मार्की है तो 7 खरीदे हैं, 3 और उनको खरीदने हैं। उनका बैंक है 65 लाख, मतलब अगर ए कैटेगरी का एक भी प्लेयर लेना चाहते हैं वो तो 20 लाख, तो मिनिमम टू मिनिमम वहीं गए, है ना। 3 अगर आप ए के ले लेते हो, पता नहीं वो शायद ले नहीं सकते 3, क्योंकि अपर लिमिट इज 5। तो और अगर आप बी कैटेगरी के लो तो बेस 10। अब यहाँ पे वो किसी का बैंक खराब भी कर सकते हैं। अगर उनको कोई बेस में 2 प्लेयर मिल गए तो उसके बाद वो सारा पैसा लगा दें, बिल्कुल एक ये भी स्ट्रैटेजी है। वहीं दूसरी तरफ जैसा हम बात कर रहे थे कि कलाहारी नाइट्स, उनका बैंक बहुत ज्यादा है, वो अपने पैसे का पावर दिखा सकते हैं। जस्ट आई हैव द मनी, डू यू हैव द मनी? पर सबसे ज्यादा बजट अभी यहाँ पे होने वाला अल्पाइन एसेस के पास। उनके पास 2.60 CR का ये टोटल बजट होने वाला है। आई थिंक सो अभी भी उनके पास इतने प्लेयर्स नहीं है, बट स्टिल दे हैव दैट ऑप्शन। जब आपके पास बजट होता है तो आप हैवीली बिड कर सकते हैं। जो बाकी सारी टीम जिन्होंने पहले स्पेंड कर दिया वो कंट्रोल कर लेंगी। आई थिंक सो एक टीम हमारे पास ऐसी भी होने वाली है, जैसे अल्पाइन एसेस, बर्मुडा ब्लास्टर्स। आई थिंक सो जिनके पास बॉलर्स है वो बाय नहीं कर सकते हैं, बॉलर्स वो बिड नहीं कर सकते। तो इस चीज का भी ध्यान रखिए कि एक अपर कैप पे आप आ गए, उसके बाद अगर आपको अच्छा प्लेयर मिल रहा है फिर आपको रिग्रेट ही होगा। अच्छा, मेरे को शैडो एक बात बता, बहुत सारे बड़े बड़े नाम आए चले गए, है ना। यू वर टॉकिंग अबाउट ब्लैक गया, भाई वाज टॉकिंग अबाउट ओल्ड मंक, वो भी गया, एंड देन वी हैव केवी है, यू नो। अब राउंड 1 ऑफ ऑक्शन चला गया, राउंड 2 ऑफ ऑक्शन में किन खिलाड़ियों के लिए हमें लड़ाई होती हुई दिख सकती है? मैंने जितने नाम सजेस्ट करे थे उसमें से मुझे लगता है एक बार फिर से याद दिला दे, please। डैडी कॉलिंग का नाम अभी तक डैडी कॉलिंग, ये डैडी कॉलिंग आप इतने प्यार से बोलते हो। बिकॉज कि मुझे लगता है उसके ऊपर आज भसड़ मचने वाली आज भसड़ मचने वाली है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर मतलब एक बार फिर से तबाही देखने को मिलेगी। लेकिन डैडी कॉलिंग जब ऑक्शन में आएंगे उस समय लेट मी बी वेरी क्लियर, हमारे पीक पैंथर्स कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे को नहीं लगता एक ही प्लेयर पे तो पैसे लगा भी नहीं सकते वो, उनको 3 प्लेयर और खरीदने। हु डू यू थिंक सबसे ज्यादा बिड करने वाले हैं डैडी कॉलिंग के लिए? और आई थिंक सो मुझे लग रहा है कि अभी भी अल्पाइन एसेस कर सकते हैं वो बिड, क्योंकि देखिए डैडी कॉलिंग अभी भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बने हुए हैं। इवन दो आज के दिन में बहुत सारे लोगों के लिए वो फर्स्ट टाइम अपना फेस रिवील कर रहे हैं, तो इट्स अ बिग हाइप कि यार फर्स्ट टाइम उनको रियल लाइफ में कोई उनको देखेगा, इससे पहले उनकी वॉइस सुनी है, तो एक वो बड़ी चीज़ रहने वाली है। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी भी बहुत सारी मिस्ट्री है कि वो किस तरीके से आएंगे। तो अभी भी डैडी कॉलिंग को मुझे लग रहा है कि अल्पाइन एसेस वो कर सकते हैं, उनके पास अभी भी चांस है। व्हाट डू यू थिंक, कौन सबसे ज्यादा बिड करेगा? आई थिंक कालाहारी नाइट्स। कालाहारी नाइट्स, बिकॉज़ दे हैव द बिगेस्ट बजट। यस, दैट्स द ओनली थिंग। एंड मुझे लगता है कि अमित भाई का स्ट्रैटेजी वही है, सुबह कुछ तो प्लान किए थे कि डैडी कॉलिंग वो मेरा बंदा होने वाला है, तो मैंने एक थोड़ा सा सुना था। भाई फर्स्ट राउंड ऑफ ऑक्शन में जहां हमने बहुत हाई बिड्स देखे, इस वक्त सबसे जो महंगे खिलाड़ी फर्स्ट राउंड ऑफ ऑक्शन के बाद अब तक इस ऑक्शन के हैं वो हैं ब्लैक 1.75 CR। उसके बाद दूसरे स्थान पर आए ओल्ड मंक 1.55 CR। नाउ द क्वेश्चन कम्स हियर इज कि यार क्या एक प्लेयर पे जब इतना सारा पैसा लगा दिया, बाकी प्लेयर्स के साथ ऐसा नहीं लगता बाकियों के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ जाएगा?
करना तो पड़ेगा पड़ेगा। देखिए इतना आपके पास अनलिमिटेड बजट हाँ। नहीं है, वही बात है ना कि आपके पास जो टोटल पर्स वैल्यू है ना वो बहुत लिमिटेड है। तो आप ऐसा नहीं है कि यार ये मैं अपनी जेब से डाल दूंगा तो हो जाएगा, नहीं आप वो नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे आप अपनी जेब से डाल देंगे। जितना आपको पर्स वैल्यू दे रखा है उस पर आपको लेके चलना पड़ेगा। टेल मी वन थिंग, जब ऑक्शन हुआ फर्स्ट राउंड, क्या कोई दो ऐसी टीम्स थी जिनके बीच में लग रहा था कि ये तो टशन टशन में ही बस उठाए जा रहे हैं पैडल? हाँ देखिए मुझे ऐसा क्यों लगा कि कालाहारी नाइट्स के हाथ से जा रहे थे। हर कोई उनको टारगेट कर रहा था एंड मेनली उनको जो टारगेट कर रहे थे वो जॉन्टी गेमिंग थे। लेकिन अब कालाहारी नाइट्स के पास बहुत पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा, और अब वो टारगेट बनेंगे नहीं, वो टारगेट करेंगे लोगों को। तो भाई बहुत ही जल्द हम आपको राउंड 2 ऑफ ऑक्शन की तरफ लेके जाएंगे, लेकिन उससे पहले टॉप 5 बाइज हम आपको दिखाते हैं। भाई जरा बताएं टॉप 5 बाइज के बारे में। बिल्कुल, हमें अनुराग ठाकुर नजर आते हैं 1.75 CR। इनको इन गेम नेम ब्लैक के नाम से जानते हैं। कमाल के एथलीट होने वाले। और ओल्ड मॉन्क योर फेवरेट 1.55। या इट्स वो ओल्ड मॉन्क 1.55 CR। एंड देखिए इसके साथ ही साथ आपको अजय शर्मा नजर आते हैं 1.20 CR। वो मार्की गए हैं बट ऑफ कोर्स अभी भी थर्ड पोजीशन बने हुए हैं। अजय कुमार आपको ऑफ कोर्स नजर आए, जॉन्टी भाई जो थोड़ी देर पहले आए थे, वो खुद 1 CR में गए। तो ऑफ कोर्स उन्होंने भी काफी ज्यादा पोर्स वैल्यू के ऊपर इंपैक्ट डाला है। एंड देन उसके बाद हमें नजर आते हैं यहाँ पे एक और प्लेयर, एंड वो काफी कमाल का बाय था। वी नो कि अभी भी यहाँ पे सोच समझ के बाय करना, बट देखिए काफी कुछ होने वाला है, काफी कुछ आने वाला है। ऑक्शन जल्दी स्टार्ट होने वाला है, क्यों ना आप उसकी तरफ बात करें। भाई बिल्कुल, फर्स्ट राउंड ऑफ ऑक्शन में धमाकेदार एक्शन दिखा, बहुत हाई बाइज हुए, कुछ पुराने दोस्त मिल गए जैसे कि माफिया बाला फौजी अजय के पास चले गए, लेकिन एक दोस्त को उन्होंने छोड़ भी तो दिया। अब क्या जब अनसोल्ड में आएंगे तो दिल में वो चुभन होगी, क्या दोबारा लेंगे? बहुत सारे सवाल हैं और उनके जवाब आपको मिलेंगे आने वाले राउंड्स में। फिलहाल चलिए वापस चलते हैं रमन भनोत सर के पास, हु इज द ऑक्शनर फॉर Booyah Premier League, and it's time for round 2 of the auction. Thank you very much. Ladies and gentlemen, welcome back. I hope you've had your refreshments. We're heading into an action-packed round 2 of the auction. Pehla round ho gaya. Very quickly, let's take a look and see what the auction summary is so that we know the top spenders. Of course, Peak Panthers, who spent 4.35 crores, and Solara Sultans, who spent 3.55 crores. But the two teams that have maximum funds left in their kitty, Nexterra Nawabs, have 2.9 crores in their kitty, and the Kalahari Knights, 2.85 crores still left in the kitty. Quick reminder, Bermuda Blasters have already fulfilled their bowlers quota. 4 bowler जो आप स्क्वाड में ले सकते थे वो उन्होंने राउंड 1 की ऑक्शन में पहले ही पूरे कर लिया। और दिलचस्प बात वहीं एक और है, और वो है कि कालाहारी नाइट्स के पास अभी तक एक बॉलर नहीं है। So that's another interesting scenario as we head into round 2, and we know how this is going to go now. Are we ready, teams? Yes? 3 sets in round 2 as well, and then we see how the squads look like. Chaliye, can we have set number D brought up to the podium for me, please? Can we have the player set brought up for me? Thank you so much. Thank you, ma'am. Teams ready? Paddles ready? You know the rules. I'm not going to repeat them. We're going to head straight into the auction. In round 2, this is going to be set D, and the first player, जो पहला player है जो इस round 2 की auction में आ रहे हैं, D1, player number 1 in set D, and that is going to be Shankar Thakur. Ladies and gentlemen, a category B player जो कि batsman है, gaming name Shanku17, base price 10 lakh FF coins. Bids start now. Is anybody bidding for the base price of 10 lakh FF coins for Shankar Thakur, a batsman? Do we see a bid coming in for him? Anybody? Fair warning. Fair warning once. Fair warning twice. And Shankar Thakur goes unsold for the moment. We move on to the next player. All teams have passed up on Shankar Thakur. Next player in round 2, set D, player number 4. Player number D4, and that is SK Sohan. Gaming name RGE Sohan, category B player, a batsman.
and bids starting at the base price of 10 lakh FF coins. क्या 10 लाख FF coins के लिए कोई bid आ रही है SK Sohan के लिए? Any bid for SK Sohan? Fair warning to all teams. They're all holding back their purse. Fair warning. Any bid? Fair warning twice and unsold. So we've got two players who've gone unsold at the start of round 2 of this auction. Both of them were batters. Both of them were category B players. So interesting tactics by teams. The next player in set D is player number D6. Player number D6, that's going to be Abhishek Ajit Jain. Category A player, an all-rounder, TSG Abhi, his gaming name. And we have bids starting at a base price of 20 lakh FF coins. And the bids come in from Peak Panthers at 20 lakh FF coins. Nexterra Nawabs at 25 lakh FF coins. 30 lakh from the Peak Panthers. 30 lakhs. 35 from Nexterra Nawabs. 40 lakhs from the Peak Panthers. 45 from Nexterra Nawabs. And Peak Panthers go out of this bid. It's 45 lakh FF coins for the Nexterra Nawabs. Do we have any other team coming in? Yes, 50 lakh FF coins. Kalahari Knights come in with a 50 lakh bid. 55 from Nexterra Nawabs. 60 lakhs from Kalahari Knights. 60 lakh FF coins. 65 it will be from Nexterra Nawabs. 70 lakh from Kalahari Knights. 75 lakh FF coins. Nexterra Nawabs. 80 from the Kalahari Knights. Going heavy for this all-rounder. 80 lakh FF coins. 85 from the Nexterra Nawabs. 90 from the Kalahari Knights. 95 from the Nexterra Nawabs. 1 crore from the Kalahari Knights. They had the budget. They had the money. They're breaking the bank here. 1 crore FF coins for the Kalahari Knights. Nexterra Nawabs, are you backing this bid? Are you going to come in with a counter bid of your own? No, they're out of it. Nexterra Nawabs say they're out of it. 1 crore FF coins. Kalahari Knights. Is there anyone else coming in to bid for Abhishek Jain? Is there anyone else bidding for Abhishek Jain? Going once to the Kalahari Knights. Going twice to the Kalahari Knights. Fair warning teams. And sold to the Kalahari Knights for 1 crore FF coins. Category A player. Category A player, the all-rounder Abhishek Jain goes to the Kalahari Knights. Congratulations. They did go after him and they've bagged the player. Right, next player coming up under the hammer or agla player D5. Player number D5. Set D, player number 5. Vivek Mishra. Category A player हैं, batsman हैं, Boss Spider इनका gaming name है. और opening bid 20 lakh की comes in from Peak Panthers. The base bid of 20 lakh FF coins from Peak Panthers. Are we going to see a counter bid from anyone? 20 lakh FF coins का bid आ चुका है Peak Panthers से. Fair warning to all teams. There's some discussions going on. Bermuda Blasters with 25 lakhs. 25 lakhs from Bermuda Blasters. Peak Panthers are out of it. 25 lakhs for Bermuda Blasters. 30 lakhs from Kalahari Knights. 35 for the Bermuda Blasters. 35 lakh for the Bermuda Blasters. 40 lakhs from the Kalahari Knights. They've found their mojo, have they? 40 lakhs. 45 from the Bermuda Blasters. 50 lakh FF coins. Kalahari Knights. 50 lakhs. Bermuda Blasters are out of it. 50 lakh FF coins. Kalahari Knights going once, going twice. Fair warning to all teams. Sold at 50 lakh FF coins. Vivek Mishra, a category player, a batsman, goes to the Kalahari Knights. Back-to-back buys for the Kalahari Knights, and they've spent a fair bit. They've spent a fair bit, 1.5 crore FF coins, in buying those two players back-to-back. Well done. Right, next player coming up under the hammer, or ye hai player number D7. Set D, player number 7, Daksh. Category A player, all-rounder hai ye, or gaming name TSG Daksh. Opening bid at 20 lakh FF coins. Peak Panthers not holding back. Opening bid by Peak Panthers.
दक्ष के लिए फिर क्या बिड आ रही है नेक्स्टेरा नवाब से? 25 की बिड नेक्स्टेरा नवाब से. 30 lakhs from Peak Panthers. 35 from Nexterra Nawabs. 40 lakhs from Peak Panthers. 45 from the Nexterra Nawabs. 45 lakhs from the Nexterra Nawabs. Peak Panthers are out. Nexterra Nawabs have bid 45. Bermuda Blasters come into the bid of 50. 50 the bid from Bermuda Blasters. 55 the bid from Nexterra Nawabs. दक्ष को अपने पास रखना चाहते हैं वहां पे Nexterra Nawabs. Bermuda Blasters, are we seeing a bid of 60 from you? Are we seeing a bid of 60? Yes, 60 the bid from Bermuda. 65 Nexterra Nawabs. 65 the bid from Nexterra Nawabs. Bermuda Blasters, are you still in the hunt? No, they're out of it. Bermuda Blasters are out of it. Nexterra Nawabs, 65 lakh FF coins for Daksh. क्या कोई और bid करेगा? Is any other team joining in this bid? Going once, fair warning. Going twice, ladies and gentlemen, fair warning. Nexterra Nawabs, bag Daksh. They wanted their player. He wanted his teammate there. He's got him. Nexterra Nawabs have bagged the all-rounder category A player for 65 lakh FF coins. Congratulations, TSG. Daksh, the gaming name Daksh, goes to Nexterra Nawabs. Next player coming up under the hammer is player number D3. Player number D3, which is going to be Saurabh Chaurasia. Saurabh Chaurasia, a category B player, an all-rounder, SK killer. Well, I tell you what, all-rounders can be a bit of a killer. Teams look for that. A base price bid of 10 lakhs. Can we see a base price bid of 10 lakh FF coins from any team for Saurabh Chaurasia? Saurabh Chaurasia. Do we have a bid coming in from anyone? Going once. Fair warning, all teams. Going twice. And Saurabh Chaurasia is unsold at the moment. Another player who stays unsold. We'll go back to the bag and we'll try and pull out that in round 3 once teams have finalized their rota more or less. Next player who comes up under the hammer is player number D11. Set D, player number 11, that's Hardik Singh. Gaming name of Hardik, a category A player, a bowler in category A. Base price bid starting at 20 lakh FF coins. Solara Sultans get into the act straight away. Solara Sultans with a 20 lakh bid. 20 lakh FF coins for Hardik Singh. Is there anyone else bidding now? Joining in the bid. Fair warning to all teams. Fair warning. Going once. Is there anyone joining in? Going twice to the Solara Sultans at 20 lakh FF coins. Somebody says, hold on, hold on. Final call. Final 5 seconds. Alpine Aces, you have your moment. It's a fair warning given to you. And I think there's going to be a lot of conference that's going to go on. Hardik Singh at 20 lakh FF coins. The base price is going to go sold to Solara Sultans. Congratulations. At base price, the bowler goes at base price, does Hardik Singh, to Solara Sultans at 20 lakh FF coins. Well, you had your moments, Alpine Aces. You thought आप bid करेंगे, मुझे भी लगा bid आएगी, लेकिन bid आई नहीं अंत में. चलिए. The next player under the hammer is D9. Set D, player number 9. And this is Yasir Manzoor. Yasir Manzoor, a category A player, an all-rounder, which means that his base price starts at 20 lakh FF coins. Do we have a bid coming in for Yasir Manzoor, the all-rounder? Teams always look for all-rounders in their squad. They want the all-rounders who can chip in with both bat and ball. Do we see a bid coming in for Yasir Manzoor? Fair warning, teams. Fair warning. First fair warning. Second fair warning. And unsold. We've got Yasir Manzoor goes back into the bag. And we will see what happens when we bring that name out again in the 3rd round of the auction, when we talk about the unsold players. चलिए, अब आखिरी नाम है ये, सेट डी का.
player number D8. Set D, player number 8. And this is Jash Dhoka. Category B player, a batsman. Jash is his gaming name. Bid starting at 10 lakh FF coins. Peak Panthers with a bid. Nexterra Nawabs straight away, 15 lakh FF coins. 15 lakhs, 20 lakhs from Peak Panthers. 25 from Nexterra Nawabs. 25 lakhs from Nexterra Nawabs. Peak Panthers are out of it. Nexterra Nawabs bidding 25 lakh FF coins. Is there anyone else coming in? Fair warning to all teams. Fair warning. Going once to Nexterra Nawabs, going twice to the Nexterra Nawabs, and sold to the Nexterra Nawabs. Josh goes to the Nexterra Nawabs for 25 lakh FF coins. There you have it. That is the end of set D. We've had 4 unsold players in this set. I'm putting their names back in the bag, and we will go back to this once we complete all 6 sets, and we still have unsold players left and teams having spots. Agar aapki team ke andar tab spot aapke quota mein hoga, so we'll pull out these names one more time later in round 3. Can I have set E brought out, please? Can we look at the set again now? Can we look at the screen one more time, the auction summary? Can we have the auction summary on screen? Now, ladies and gentlemen, important story here. We have got Kalahari Knights have got 4 category A players. Kalahari Knights, you broke the bank in the set D. You had some 2 big expensive buys, but that means you reach category A ceiling at the moment of 4. You can buy a maximum of 5, but you can only bid. आप वो 5वें player के लिए तभी bid कर पाओगे अगर Solara Sultans अपना 3rd category player pick, A category player, और Bermuda Blasters अपना एक और category A player pick कर लेते हैं. उसी के बाद that's the same story for Nexterra Nawabs as well. Nexterra Nawabs आपके भी category A के 4 player हो गए हैं. आप 5 ले सकते हैं, लेकिन वो 5वें प्लेयर की बिड आप तभी कर पाएंगे जब सोलारा सुल्तान्स और बर्म्यूडा ब्लास्टर्स के 3 कैटेगरी ए प्लेयर्स पूरे हो जाते हैं. सो जस्ट अ रिमाइंडर, रिमेंबर दैट्स हाउ द रूल्स गो, सो दैट मेक्स दिस ऑक्शन इवन मोर इंटरेस्टिंग. सेट ई की ओर रुक कर लेते हैं. जाते जाते पीक पैंथर्स का बजट भी देख लेते हैं. बिडिंग बहुत करी, बाइंग कम करी इस सेट डी में. Tactically an interesting ploy to raise other teams' budgets and costs. But whether the teams have figured that out, we'll wait and watch. Right. Going into set E now. Ladies and gentlemen, player number E7, 7th player, जो कि set E के हैं, और वो हैं Jayesh Yadav. Jayesh Yadav, category B player, a batsman, Mr. J. Jayesh Yadav. Base price bid of 10 lakh FF coins. 10 lakh की bid Peak Panthers से. 10 lakh की bid आई है Peak Panthers से. 10 lakh FF coins. Fair warning सब teams को. Is anybody going to match that bid, better that bid? Going once to the Peak Panthers, going twice to the Peak Panthers, and sold at base price to the Peak Panthers. So Peak Panthers have picked up their 4th batsman. They've picked up 4 batsmen now. They can pick a maximum of 6. That's the ceiling in the squad. They've picked 4. Now the base criteria is over for bowlers and all-rounders also for the Peak Panthers. So the only bids that we'll see from the Peak Panthers now is only going to be for batters. Just letting everybody know that they've reached a certain quantum. Let's see how things are going to go. Peak Panthers have picked up their 4th batter right now. That's how it stands. So now, Jayesh Yadav's gone. We move on to the next player. That's player number E8. Set E, player number 8. Praveen Chaudhary. प्रवीण चौधरी कैटेगरी बी प्लेयर है, एक बैट्समैन है, और इनका गेमिंग नेम है स्ट्रगल.
और इनके लिए बेस प्राइस की बिड आ रही है बर्म्यूडा ब्लास्टर्स से 10 लाख FF कॉइंस की बिड बर्म्यूडा ब्लास्टर्स से बैटर के लिए. What do we have? Do we have someone matching that bid? Bermuda Blasters have bid for Praveen Chaudhary at 10 lakh. That's the base price. Going once, fair warning to all teams. Going twice and sold to the Bermuda Blasters. What a bargain you've got. You wanted batsmen only and you've picked up Praveen Chaudhary at just 10 lakh FF coins. Base price. Gone well. Well done. बॉलर्स का कोटा याद दिला रहा हूँ बर्म्यूडा ब्लास्टर्स का पूरा था. अब तो बैटर्स के लिए ही पर्स खोलने के लिए तैयार थे, पर 10 लाख बेस प्राइस पे उनको प्लेयर मिल गया, तो दैट्स अ स्टील गिवन योर बजट एंड गिवन वेयर यू स्टैंड इन दिस ऑक्शन. वेरी लकी. राइट, प्लेयर नंबर E9, सेट E प्लेयर नंबर 9, और ये हैं सैयद अरमान अली. सैयद अरमान अली कैटेगरी B प्लेयर हैं, बैट्समैन हैं. Esitul Arman 19 is the gaming name for Syed Arman Ali. Bid starting at base price of 10 lakh FF coins for Syed Arman Ali. Do we have an opening bid from anyone? Do we have an opening bid for Syed Arman Ali? Fair warning to all teams. Do we see a bid for this category B player? A batsman, second fair warning. Yes, Bermuda Blasters come in with a bid at 10 lakh FF coins for Syed Arman Ali. Do we have a 15 lakh bid from anyone? 10 lakhs going once, 10 lakh FF coins going twice, and 10 lakh FF coins sold to Bermuda Blasters, Syed Arman Ali. They've had a bargain pick, two batters at their base price of 10 lakh FF coins each. Bermuda Blasters, what a start to set E. बहुत बहुत मुबारक आपको. चलिए, set E player number 5. So E5, player number E5 is Sumit Verma, and he comes under the hammer now, a batsman, and X Divine is his gaming name. X Divine, the gaming name, category B player, base price of 10 lakh FF coins. Opening bids, anyone? Opening bids from any team. Alpine Aces have been very quiet. So have the Solara Sultans. Everyone's been very, very quiet on the extreme corners of this room. Do we see a bid coming in for Sumit Verma? Fair warning once, fair warning twice, and unsold. We have Sumit Verma going unsold at the moment, so we'll put his name back in the bag. अगले नाम की ओर अब रुक कर लेते हैं, और ये है प्लेयर नंबर E3. सेट E प्लेयर नंबर 3, प्रथम शॉ. प्रथम शॉ बैट्समैन है, कैटेगरी बी के प्लेयर हैं, और इनका गेमिंग नेम फायर आइज. He's got fire in his eyes for sure. Do we see an opening bid of 10 lakh FF coins for Pratham Shaw? Fair warning teams, yes. Alpine Aces finally raised the paddle. 10 lakh from Alpine Aces. Is anyone else coming in with a bid now? Anyone with a bid to counter that? Going once to the Alpine Aces, going twice to the Alpine Aces, and sold to the Alpine Aces. They get Pratham Shaw, a batsman at his base price of 10 lakh FF coins. Now suddenly, Solara Sultans have been very quiet, very, very quiet in the bidding in this set. क्या मामला बदलने वाला है? I think 8 प्लेयर स्क्वाड में आपके पहुंच गए हैं, इसीलिए आप वो अगले 3 के लिए बहुत पिक करके जा रहे हैं. चलिए, मिनिमम कोटास भी आपने पूरे कर लिए हैं, सो यू बीन वेरी वेरी जुडिशियस इन टर्म्स ऑफ मिनिमम बैटर्स, मिनिमम ऑलराउंडर्स, मिनिमम बॉलर्स. वो 2 ऑलराउंडर 2 बॉलर्स का कोटा पूरा, मिनिमम कोटा पूरा कर चुके हैं आप. सो टैक्टिकल गेम्स नाउ, वेरी नाइस. चलिए, प्लेयर नंबर E10, that is going to be Adib Ansari. Adib Ansari, Esitul Adib 89, category B player, bowler हैं ये. Opening bid आती हुई Peak Panthers की तरफ से 10 lakh FF coins base price की bid Adib Ansari के लिए Peak Panthers की तरफ से आई है. Do we see a counter bid from anyone? A counter bid from anyone?
Nexterra Nawabs, are you thinking about it? Alpine Aces seem to be in a conversation as well. Come on, come on, come on. Adib Ansari, Mahmood, you want him? That's the interesting story. Right now, it's the bid that's coming from the Peak Panthers. Going once. Fair warning to all teams. Going twice. Fair warning to all teams. And sold. For his base price of 10 lakh FF coins, Adib Ansari goes to his gaming squad, the Peak Panthers. They wanted him, they got him. Well done. No wonder that paddle was already up. Peak Panthers ने तो मेरे खत्म करने से पहले paddle बिठा दिया था कि हमारे यहाँ चाहिए, हमारा लड़का है. Right, player number E4. E4, set E, player number 4, that's Ranjit Patel. Ranjit Patel, Mambasur. All right, category A player, a batsman. And इनकी base price bid रहेगी 20 lakh FF coins की. As a category A player. We have Bermuda Blasters going for him. Bermuda Blasters come in with the opening bid. Alpine Aces with 25 lakh FF coins. 25 lakh FF coins. Alpine Aces have come in with a bid. Do we see a counter from Bermuda Blasters? Bermuda, are you still in it? Bermuda Blasters, are you going to counter that? No, they're out of it. Alpine Aces with 25. Peak Panthers come in with a bid at 30. 30 lakh FF coins. Peak Panthers have got a bid. Yeah, we've got Ajay saying, hang on. We've got tactics that we are playing here. Peak Panthers, taiyar hai. Alpine Aces, 35. Peak Panthers with a bid of 40 lakh FF coins. 40 lakh FF coins. There's a game going on here. Or a game within a game. 45. What's happening here? Jonty says we're out of it. Jonty says we're out of it. 45 is the bid from Alpine Aces. 45 lakh FF coins. Jonty Gaming says we've done our job. We moved out. Is there anyone else who's going to come in and bid now? Is there anyone else bidding for Ranjit Patel? Going once, going twice, and sold to the Alpine Aces for 45 lakh FF coins. Well, Alpine Aces, you were drawn into spending some more money on that by the Peak Panthers and some smart bidding there. Right, we move into the next player that we're going to bid for. E11, category E, set E, player number 11, and that's going to be Samir. He's going to be a category B player, a batsman, goes by the gaming name of Senior 29, or should I say Senior 29, would probably be the right way to say it. Right, opening bids at 10 lakh FF coins, coming in for Samir by anyone, any team bidding. Opening bid of base price 10 lakh FF coins. Fair warning to all teams. Do we see a bid for Samir? Fair warning once. Fair warning. Oh, you want some time? You want some time on him? Samir, he's a category B player. He's a batsman. Alpine Aces. I'm giving you some moments there to confer and concur. No, you're out of it. So, final warning before we put him in the unsold stack. Unsold. Samir goes into the unsold stack for the moment. He's been passed up by the teams. देखेंगे तीसरे राउंड के अंदर अगर टीम्स के कोटा स्पॉट्स बचे तो ये नाम हम दोबारा ऑक्शन में लाएंगे. अगला नाम E6, प्लेयर नंबर E6, सेट E, प्लेयर नंबर 6, और ये है रोहित धोत्रे. रोहित धोत्रे कैटेगरी ए प्लेयर, एक बैट्समैन है और इनका गेमिंग नेम डैडी कॉलिंग, टॉप प्लेयर, कैटेगरी ए प्लेयर. इनके लिए ओपनिंग बिड पीक पैंथर्स की 20 लाख FF कॉइंस की, पीक पैंथर्स से आई है. Peak Panthers a bid 20 lakh FF coins for Rohit Dhotre. We got Bermuda Blasters with 25. Peak Panthers with 30. Bermuda Blasters 35. 35 lakh FF coins. Peak Panthers 40 lakh. 45 from the Bermuda Blasters, and Peak Panthers are out of it. Peak Panthers are out of it.
they don't have money, they don't have a lot of funds left. So 45, the bid from Bermuda Blasters. Is there anyone else joining the fray? Is there anyone else coming in with a battle here? Anyone? Nexterra Nawabs, are you going to join in? No, it's going to be going once. Bermuda Blasters going twice to the Bermuda Blasters and sold to the Bermuda Blasters. They get Rohit Dhotre at a bargain at 45 lakh FF coins. That's a bargain. That's a steal for the Bermuda Blasters. What a tactic there. What a tactic. Well done. That's a steal for this team, Bermuda Blasters. मुबारक आपको. चलिए अगले प्लेयर की ओर अब नाम कर लेते हैं. कैटेगरी प्लेयर्स जो हम बात कर रहे हैं, सेट ई प्लेयर नंबर 1 मान जैन. Man Jain is the player that we're going to focus on. Category A player, a bowler, and his gaming name is TSG Man. Base price 20 lakh FF coins. Do we have an opening bid from anyone? Do we have an opening bid? Peak Panthers 20 lakhs. They've bid 20 lakh FF coins for Man Jain. Do we have a counter from anyone? 20 lakh going once to the Peak Panthers. Going twice to the Peak Panthers at 20 lakh FF coins and sold to the Peak Panthers. Man Jain, the bowler, category A bowler, goes to Peak Panthers for 20 lakhs. So very quickly, what we want to tell you is that Peak Panthers have bid and completed their squad. That's what our technical team is updating us with. They've completed their squad already of 11 players completed, and we are not even done with set E of round 2, and they've got all 11. Also, let's very quickly take a look at the auction summary because I'm going to highlight another point here. Let's look at the auction summary on screen. Now, the important part is this is what the Peak Panthers, this is exactly what the Peak Panthers piece looks like. But the auction summary is here. Peak Panthers, they've spent their money and they've got their players. But what do? That's how, with 0.25 or just 25 lakhs remaining in their overall quota of 5 crore FF coins, they've completed their squad of 11 players. But the other important part is that Solara Sultans still have got only 2 category A players. So therefore, till they pick up their 3rd category A player, none of the other teams that remain to complete their quota can actually bid for a category A player. So just repeating, because except for Bermuda Blasters. Bermuda Blasters have the option because they've got 3, they can bid for a 4th. But the important part is none of the other 3 teams, Kalahari Knights, Nexterra Nawabs or Alpine Aces, because they've got 4 category A players already, they can't bid for the 5th category A player till Solara Sultans get their 3rd category A player. इसको मैं repeat कर रहा हूँ, इसको मैं repeat करके दे रहा हूँ सबके लिए. I believe we're getting a lot of comments online also. कि Solara Sultans जो हैं, उनके पास केवल 2 category A के players हैं. और rules ये state करते हैं auction के कि जब तक सभी teams के पास कम से कम 3 category A players ना हो जाएं, तब तक वो 5th कैटेगरी ए प्लेयर के लिए अपने स्क्वाड में बिड नहीं कर सकते. 4 अल्पाइन एसेस के पास हैं, 4 कालाहारी नाइट्स के पास हैं, नेक्सटेरा नवाब्स के पास भी 4 हैं. पीक पैंथर्स का कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके पूरे 11 के 11 पूरे हैं, तो वो तो किसी के लिए अब बिड नहीं करेंगे. बट द पॉइंट इज, बाकी जो टीम्स हैं जिनके 4 कैटेगरी ए प्लेयर्स हैं, दे कैन ओनली बिड फॉर देयर 5th प्लेयर एक्सेप्ट फॉर बर्म्यूडा ब्लास्टर्स. ऑल अदर्स विल हैव टू वेट फॉर सोलारा सुल्तान्स टू फाइंड देयर 3rd कैटेगरी ए प्लेयर. राइट. Interesting story also, Kalahari Knights. Well, they've spent on the batsmen, they've spent on the all-rounders, they're searching for their bowlers. So let's see how this is going to go. There's a smile that's coming on that table. वो भी जानते हैं कि क्या मैं कह रहा हूँ. चलिए,
अब इस सेट E का लास्ट प्लेयर, सेट E का लास्ट प्लेयर, दैट्स E2, प्लेयर नंबर E2, और ये हैं भार्गव। भार्गव एक कैटेगरी B प्लेयर हैं, एक ऑलराउंडर हैं, और वेक्स भागली इनका गेमिंग नेम है। Base bid at 10 lakh FF coins for a category B player. Can I see some bids coming in for this all-rounder? Are there any bids coming in from any teams? Yes, Solara Sultans bid for a category B player and their opening bid at 10 lakh FF coins. क्या कोई और इसको match करेगा? क्या कोई और team इस bid को match करेगी? Do we see something from the Nexterra Nawabs? Do we see something from the Alpine Aces? No quiet faces. Bermuda Blasters are smiling but not bidding. Fair warning going. Okay. Nexterra Nawabs coming with a bid of 15 lakh FF coins. 20 lakh FF coins. Solara Sultans. 20 lakhs FF coins. Solara Sultans with a bid. Going once. Come on, Nexterra Nawabs. Do we see a counter from you? Nexterra Nawabs are out of it. 20 lakhs the bid from Solara Sultans. Going once to the Solara Sultans. Going twice to the Solara Sultans. No, Nexterra Nawabs come back with it. 25 lakh FF coins. Nexterra Nawabs are in it. Solara Sultans, 30 lakh. 30 lakh the bid from Solara Sultans. Nexterra Nawabs, what's your offer going to be? Are you coming in with a bid? Is there going to be a bid for 35 lakh FF coins? Nexterra Nawabs, no, they're out of it. 30 is the bid from Solara Sultans. Is there any other team coming into the fray now? Do we see anybody else come in? Alpine Aces, Kalahari Knights, do we see a bid from you? Bermuda Blasters, is there a bid coming from you? No. Going once to the Solara Sultans, going twice to the Solara Sultans, and sold to the Solara Sultans. The all-rounder Bhargav is sold for 30 lakh FF coins to the Solara Sultans. Congratulations, ladies and gentlemen. That brings us to the end of set 2 of round 2. 2 players going unsold in this set. I've put their names back in the bag. और अगर टीम के रोस्टर्स में जगह बची तो हमें नामों को round 3 of the auction में निकालेंगे. फिलहाल can I get set F please on the stage? This is the final set in round 2. The final set of names. Teams ready. Peak Panthers have already, उन्होंने अपना स्क्वाड पहले ही पूरा कर लिया है, तो अब तो वो देख रहे हैं कि क्या होने वाला है. Let's see how it's going to go. Balance बचा है पर प्लेयर पूरे हैं. चलिए, we're heading into set F. Our team's ready. Calculations done, paddles ready. Player number F5, set F, player number 5, Anshul Rawat is the name that comes up. A category B player, an all-rounder, goes by the gaming name of TM Ansh. Do we have a bid for Anshul Rawat? A base price bid of 10 lakh FF coins. क्या किसी टीम की तरफ से bid आ रही है इस all-rounder के लिए? Fair warning once. Yes, Alpine Aces bid 10 lakh FF coins. Alpine Aces की तरफ से 10 लाख FF coins की bid है. उसको काउंटर करेगा कोई? क्या Solara Sultans की तरफ से bid आने वाली है? क्या Kalahari Knights bid करेंगे? Alpine Aces with a base price bid of 10 lakh FF coins. Fair warning to all teams. Going once, going twice, and sold. At base price, Anshul Rawat has found his team. He goes the all-rounder, category B player, at base price of 10 lakh FF coins to Alpine Aces. Congratulations. Right, next player coming up. Who do we have here? Squad combinations are also of great importance. Player number F6. Player number F6. And this is Pawan Advani. Pawan Advani, category B player, a batsman. RNTX Pawan, gaming name. We have opening bids. 10 lakh FF coins. Do we have a bid coming in from any team? 10 lakh FF coins for Pawan Advani. Anyone bidding for this category B batsman? Yes,
Kalahari Knights come in with a bid. Nexterra Nawabs with a bid of 15 lakhs. 15 lakhs the bid from Nexterra Nawabs. 20 lakhs from Kalahari Knights. 25 from Nexterra Nawabs. 25 from Nexterra Nawabs. Kalahari Knights are out of it. 25 lakhs going once to the Nexterra Nawabs. 25 lakhs going to the Nexterra Nawabs is Pawan Advani. Final warning. And sold to the Nexterra Nawabs. Pawan Advani, congratulations. He goes to the Nexterra Nawabs at 25 lakhs. Does the category B player, a batsman, bolstering their batting order. Right. Player number F1. Player number F1, set F, player number 1 is Sahil. And he comes under the hammer now. Sahil, category B player hai. RNTX Sahil 7, unka gaming name, ek batsman hai. Base price 10 lakh FF dollars, 10 lakh FF coins ki. Chaliye, do we have a bid coming in for 10 lakh FF coins for Sahil by any team? Do we see a bid? Fair warning to all teams. Sahil, a category B player, batsman, and going once, twice, and unsold. We put Sahil unsold at the moment. Move to the next name. F7 is the player number. F7, Himnish Ahuja, a category A player, a batsman, and bid starting at the base price of 20 lakh FF coins. Do we have an opening bid for Himnish Ahuja? Fair warning, all teams. Fair warning twice and unsold. Himnish Ahuja goes unsold at the moment. A batsman, a category A player. Next player is F11, player number F11. That's Krishna Gupta. Do we have Krishna Gupta? Take us for a category A player, a batsman. Krishna Gupta goes by the gaming name of Krishna. Opening bid at 20 lakh FF coins. Do we have a bid coming in from any of the teams? They're waiting at the moment, waiting for the right player to come around that fills their squad. Final warning once, final warning twice, and Solaris are not going for this. Solara Sultans are going for a bid now. They finally come in for a base price bid. Solara Sultans bidding at 20 lakh FF coins for Krishna Gupta. Krishna ke liye bid aa gayi hai 20 lakh FF coins ki. Going once to the Solara Sultans. Going twice to the Solara Sultans and sold to the Solara Sultans. Well done, well done. So now you've got your category A player. Your third category A player, you've got him now, and you got him only at 20 lakhs, which was his base price. And remember, that was a very smart move, very smart move. Very quickly, let's take a look at the auction summary. एक बार auction summary देख लेते हैं, क्योंकि ये pick जो था ना बहुत important था. और ये important क्यों था? क्योंकि अब आप देखेंगे कि सोलारा सुल्तान्स जो हैं, उनके पास भी कैटेगरी ए के अंदर अब 3 प्लेयर हो गए हैं. अब ये गेम खुल जाता है. अब ये गेम खुल जाता है क्योंकि ना सिर्फ बर्म्यूडा ब्लास्टर्स बिड कर सकते हैं, अल्पाइन एसेस भी बिड कर सकते हैं, कालाहारी नाइट्स भी बिड कर सकते हैं, और नेक्सटेरा नवाब्स भी बिड कर सकते हैं कैटेगरी ए प्लेयर के लिए. याद रखिए, यू गॉट दैट ऑप्शन. That option opens up now to have that category A player going to you. But again, you have to see Bermuda Blasters, क्योंकि आपका quota of bowlers पहले पूरा हो गया था. आपका quota of batsmen के max limit भी, I think you're close to that. So you're close to that, so you have to be very careful about who you go in for now. And you know, you'll have to see. You'll have to see, you do need a minimum one all-rounder at least. So it's going to be an interesting story. Yeah, I know. That's the story. So tactics, that's going to be important part. Next player coming up on the auction hammer is player number F10. और ये player हैं Abhinav Ayush.
Abhinav Ayush. Let's take a quick look at what Abhinav Ayush is all about. A category B all-rounder and goes by the gaming name of Abhi. Base price of 10 lakh FF coins for Abhinav Ayush. Do we see a bid from anyone? Do we see a bid from any team for Abhinav Ayush at 10 lakh FF coins? Fair warning, all teams. First fair warning, second fair warning, and unsold. We're putting him in the unsold list. Next player is player number F8. Well, you see that on a keyboard and you use that a lot, F8. But right now, the player number F8 is Ankit Waldia. Ankit Waldia all-rounder है, category B. प्लेयर हैं और कॉन्सेप्ट के गेमिंग नेम से जाते हैं. तो इनके लिए बेस प्राइस पे बिड आएगी 10 लाख FF coins की Solara Sultans की तरफ से. Big Panthers, you've completed your squad. Technical team, they can't bid, can they? They've already got their squad of 11. They can't. They cannot. Technical teams just reaffirmed that because your squad is over, even though you have money left, but your squad is complete. You've got 11 players. You've got 11 players on your team, so you cannot bid. Yeah, that's going to be an invalid bid. So we've got a bid from the Kalahari Knights. Kalahari Knights की तरफ से bid आई है 15 लाख FF coins की अंकित वाल्दिया के लिए. 15 लाख FF coins की bid Kalahari Knights की तरफ से. Is there going to be a counter? 20 lakh. The bid from Solara Sultans. 20 lakh FF coins. 25 from Kalahari Knights. 25 from the Kalahari Knights. 30 lakhs FF coins from Solara Sultans. 35 from the Kalahari Knights. They're going for the all-rounder. 35 lakh FF coins for the Kalahari Knights. Going once to the Kalahari Knights. Do we have a counter? Yes, we do. Solara Sultans is 40 lakhs. 45 from Kalahari Knights. Solara Sultans, are you still in it? 45 is the bid. Do we see a bid for 50? Do we see a bid? Yes, 50 from the Solara Sultans. 50 is the bid. Kalahari Knights, do we have a counter from you? Kalahari Knights का counter आएगा क्या? क्या counter आने वाला है? 50 lakh की bid है Solara Sultans की. क्या 55 की bid आएगी Kalahari Knights से? Yes, 55 lakh. Kalahari Knights, 55 lakhs. Solara Sultans, 60 lakh FF coins, उनकी bid है. Solara Sultans की bid, 60 lakh FF coins की. Kalahari Knights, are you still in the hunt? 65, yes, 65 for the Kalahari Knights. Solara Sultans with 70 lakhs. Now, we're getting into difficult territory here. 70 is the bid. Do we see a bid for 75? Kalahari Knights, are you going to press the accelerator? Are you going to come in with a counter bid? No, they're out of it. They're out of it. At 70 lakh FF coins, Ankit Waldia, will he go to Solara Sultans? Going once. All right, we get a counter now. 75 from Alpine Aces. Solara Sultans are out of it. They say, we're done, we're done. Alpine Aces, 75 lakh FF coins. Going once. 80 lakhs the bid from Bermuda Blasters for the all-rounder. 80 lakhs, 85, 90 the bid. 90, 95, 95. Are you going to counter with 1 crore? Yes. 1 crore the bid from Bermuda Blasters. 1 crore 5, 1 crore 10. Hang on. One by one. 1 crore 10 is your bid. Are we going to see 115? Are we going to see 115? Yes, 115. What's your counter going to be? That's 115. 120. Bermuda Blasters, 120. Alpine Aces with 125. 125. Is there a counter for that from Bermuda? 130. Well, they're breaking the bank. Raiding the vault at the moment. Bermuda with 130. The Bermuda Blasters really wanting that all-rounder. 130. Are we going to see 135? 135. 140. Suddenly it's gone up to 140, 145, 150, 1.5 crore FF coins
Remember, they want the all-rounder. That's the only slot left in the squad. 1.5 crores is what they've bid, the Bermuda Blasters. Alpine Aces, are you going to come in for a bid? 155. Now, given the fund balance, Bermuda Blasters cannot bid anymore. Alpine Aces, 1.55 crores for Ankit Waldia. They get the Category B all-rounder. He is sold to the Alpine Aces. Congratulations. Alpine Aces, आपने तो पूरा vault खाली कर दिया यहाँ पे. You were ready for it. Okay, Alpine Aces getting that big buy at 1.55 crore FF coins. Ankit Waldia. Well, he's probably in the top 3 most expensive players in this auction at the moment, if my memory serves me right. I believe. But we'll come back to that in a bit. Right, now for player number F2. I think he was the joint second highest player bid for, but right now, player number F2 is Harsh Singh. He's a Category A player, goes by the gaming name of DG Harsh, and he is a bowler. तो इनके लिए bid शुरू होगी, base price 20 lakh FF coins की. Nexterra Nawabs with that bid of 20 lakh FF coins. Nexterra Nawabs, 20 lakh FF coins. Do we have a counter from anyone? Nexterra Nawabs are almost trying to finalize their squad here. Kalahari Knights are very quiet. They need a bowler, but they're not going for it yet. Harsh Singh, a Category A bowler, at base price of 20 lakh FF coins, going once, going, oh my God, Alpine Aces coming into the battle. So there's a bid of 25 lakh from Alpine Aces. Nexterra Nawabs, do we see a counter to that? Nexterra Nawabs, yes, 30 lakhs is the bid from Nexterra Nawabs. 30 lakhs. Nexterra Nawabs have 1.75 crores in their bank. So you've got Alpine Aces. Are you going to bid? Are you going to come in with a counter bid? 30 lakhs is the bid. Do we see a bid of 35 for Harsh Singh? Do we see a bid of 35? Are you out of it? Oh, they can't. They don't have the money to bid for it, right? Alpine Aces, 40 is what they can go for. So 35, but depending on, yeah, they're out of it. So Kalahari Knights come in with 35 now. Right, so joining in the battle with Nexterra Nawabs, Kalahari Knights come in with 35 lakh FF coins. 40 for Nexterra Nawabs. 45 from the Kalahari Knights. Now they're raising the stakes for the bowler. 50 is the bid from Nexterra Nawabs. 50 from the Nexterra Nawabs. You'll have to update that, please, very quickly. Yes, thank you. 50 for the Nexterra Nawabs. Going once. Do we have a counter from Kalahari Knights? Kalahari Knights, do we have a counter bid from you for Harsh Singh? No, they're out of it. Is there anyone else coming into this bid now? Or Nexterra Nawabs may get Harsh Singh for 50 lakh FF coins. Going once, going twice, and sold to the Nexterra Nawabs for 50 lakh FF coins. Harsh Singh, a Category A bowler. So interesting. Kalahari Knights still searching for their bowlers. And let's take a look at the auction summary very quickly, because we'll know exactly what the funds are available to the sides. Solara Sultans, just 0.75 crores. 0.25 Panthers are done with their squad. 1.25 for Nexterra Nawabs. It's an interesting story. Kalahari Knights, 1.35 crores left. They need the bowler. Who's coming here? We've got 3 names left. We've got 3 names left in this round now. And the next name that comes up, player number F9, and that is Karanjot Mehta. Karanjot Mehta, can we have his stats up on screen, please? Player number F9, Karanjot Mehta, Category B batsman, DG Insane. Starting bid at 10 lakh FF coins. Do we have an opening bid? क्या हमारे पास एक opening bid आ रही है?
किसी भी team से. Karanjot Mehta, do we have a bid? Yes. Kalahari Knights, bidding for a batsman. Bidding for a batsman at 10 lakh FF coins. Okay. Do we have a counter from anyone? Do we have a counter bid from anyone? Solara Sultans are very quiet. So going once to the Kalahari Knights, going twice to the Kalahari Knights, and sold to the Kalahari Knights for his base price of 10 lakh FF coins. It's Karanjot Mehta who's found his team in Kalahari Knights. 2 players left now in the round. The next player is player number F4. F4 is Dev Kumar, a category B batsman, and goes by the gaming name TE Iconic. Do we have an opening bid of his base price of 10 lakh FF coins? Do we have an opening bid from anyone? Fair warning, all teams. Second fair warning to all teams, or he goes in the unsold bin. And unsold is Dev Kumar. He goes into that unsold bag. We'll bring out that name later if there is a requirement. Last name in round 2, ladies and gentlemen. And the last name in round 2 is of player number F3, Ashwini Yadav. Ashwini Yadav is an all-rounder, a category B player, and goes by the gaming name of DG Ignite. Straight away, Bermuda Blasters going with the base bid of 10 lakh FF coins. 15 lakh for the Nexterra Nawabs. 15 from the Nexterra Nawabs. Bermuda Blasters, 20. 25 for the Nexterra Nawabs. 30 from Bermuda Blasters. 35 for Nexterra Nawabs. 40 from Bermuda Blasters. 45 Nexterra Nawabs. 50 from the Bermuda Blasters. 55 from Nexterra Nawabs. It's 60 from the Bermuda Blasters. 60 from the Bermuda Blasters. Now, 60 from the Bermuda Blasters. What are the Nexterra Nawabs going to do? 65. 65 is the bid. 70 from Bermuda Blasters. 70 from the Bermuda Blasters now. Are we going to see a bid of 75? 70 from the Bermuda Blasters. 70. Do we have a counter? Raise that paddle. 75 is the bid. 80 from the Bermuda Blasters. 80, 85, 85, 90 from the Bermuda Blasters. 95 from Nexterra Nawabs. 1 crore from the Bermuda Blasters. 1 crore 5 from the Nexterra Nawabs. 110. Bermuda Blasters are spending their budget here. 110 is the bid. 115 from the Nexterra Nawabs. Is that? You cannot come in. 110 was that bid from the Bermuda Blasters. 110, while Nexterra, yes, they can come in. So 115, the bid from Nexterra. 120, the bid from Bermuda Blasters. 120 is the bid from Bermuda Blasters. Nexterra Nawabs say we are out. Is there anyone else joining in? 1.2 crore FF coins going once to the Bermuda Blasters, going twice to the Bermuda Blasters, and sold to the Bermuda Blasters. Yes, Ashwini Yadav. Finally, Bermuda Blasters get their all-rounder, get their last player to complete their 11 as well, which is why they were willing to break the bank just to make sure they got that all-rounder. Let's take a quick look at the auction summary now as we have completed round 2 of the auction. This is what the Bermuda Blasters squad looks like. They've got their 11 players that are there. They broke the bank for the last player they picked up, DG Ignite, at 1.2 crores. They had money in the bank and they went for it. That's the team summary. Let's also look at the auction summary here. 2 teams have completed their quota of 11 players. Bermuda Blasters just finding their 11th player, while Peak Panthers were the first team to complete 11 of their squad with money still left in the bank. Both teams, Bermuda Blasters and Peak Panthers, have found their 11 players each. The other 4 still in the hunt to complete their squad. We had 4 players going unsold in this set F, which is the 6th set. But that brings us to the end of round 2. We will take a breather and we'll come back
with round 3 very soon. क्या हुआ समाप्त, और राउंड 2 के बाद हमने देखा कि आखिरी सेट में 4 अनसोल्ड प्लेयर्स थे, लेकिन इस राउंड में भाई साहब क्या कमाल का ऑक्शन का दौर चला है। इससे पहले जहां एक तरफ हम देख रहे थे कि कालाहारी के पास बहुत बड़ा बैंक था, लेकिन इस राउंड में उन्होंने काफ़ी बाइस किए। एक बाय उन्होंने किया अभी, दे बॉट हिम फॉर 1 CR, देन दे बॉट बॉस स्नाइपर फॉर 50 lakhs एंड अदर स्टील डील्स। मेरे साथ और भी बातें करने के लिए वी हैव ऑरा एंड शैडो विद मी इन द स्टूडियो। गाइस, अनदर इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग ऑक्शन राउंड। या अभी जो इग्नाइट का हुआ है लास्ट ऑक्शन, वो काफ़ी कमाल की बिडिंग गई है। इवन दो इसके साथ ही यहाँ पे टीम बरमूडा ने काफ़ी अच्छे से अपनी स्क्वाड कंप्लीट कर ली, अपनी टीम कंप्लीट कर ली है। पर देखने वाली बात रहेगी किस तरीके से अब वो प्लेयर्स प्ले करने वाले हैं, बिकॉज जो भी उन्होंने पूरा प्लान करा है, इवन दो दे हैव डैडी कॉलिंग इन देयर टीम एंड डैडी कॉलिंग वाज अ शॉक भाई। He just went for 45 lakhs and we were talking कि यार काफ़ी हाई प्रीमियम, एंड यू वर स्पेशली सेइंग कि काफ़ी हाई प्रीमियम पे जाएंगे। बर्म्यूडा ब्लास्टर्स ने उन्हें लिया अपनी टीम में। हाँ, स्पेशली अगर बताने जाए तो यहाँ पे जितने भी टीम्स थे, पहले राउंड पे हमने देखा बहुत पैसे सबने स्पेंड करे बहुत प्लेयर्स के ऊपर, और इस राउंड पे मुझे फील हुआ कि शायद से वो उनके ऊपर नहीं जाना चाहे, क्योंकि उनका वो जो प्लेयर है ऑलराउंडर या फिर जो स्लॉट में वो थे, वो शायद से उनका फिल हो गया था। बट डैडी कॉलिंग ने पहली बार अपना फेस रिवील किया, सो दैट इज समथिंग जो कि बहुत सारे लोग चैट में बहुत बातें कर रहे हैं। एंड चलिए ऑक्शन समरी एक बार आपको दिखाते हैं कि अब 2 टीम्स हैं जिनका स्क्वाड कंप्लीट हो चुका है, पीक पैंथर्स एंड बर्म्यूडा ब्लास्टर्स। इनका स्क्वाड कंप्लीट हो चुका है, एक के 30 लाख बचे हैं, एक के 25 लाख बचे हैं, लेकिन जिनको स्क्वाड अभी भी कंप्लीट करना है वो है अल्पाइन एसेस, देन वी हैव कलारी नाइट्स, नेक्स्ट्रा नवाब्स एंड सोलारा सुल्तान्स। उनको एक खिलाड़ी चाहिए। तो बस इस आखिरी जो अब राउंड होने वाला है, राउंड ऑफ अनसोल्ड प्लेयर्स, जहां पर अनसोल्ड खिलाड़ियों को दोबारा लाया जाएगा और फिर उनमें से ये चूज करेंगे। कैटेगरी ए से मैक्सिमम 5 प्लेयर आप चूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट्रा नवाब्स अब कैटेगरी ए से तो कोई प्लेयर नहीं ले सकते, उन्हें कैटेगरी बी का ही प्लेयर लेना होगा। इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और इसी के साथ ही साथ कुछ टीम्स अभी भी काफ़ी दूर होने वाली है। कालाहारी नाइट्स की अगर हम बात करें तो अभी भी उनको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा अपनी स्क्वाड को कंप्लीट करने के लिए एंड अपनी टीम को कंप्लीट करने के लिए। आई पर्सनली फील उनको ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास जितना पैसा है और बाकी लोगों को 2-2 लेने हैं, तो उनको मेरे ख्याल से बेस प्राइस पे काफ़ी प्लेयर्स मिल जाएंगे। मिल तो सकते हैं, पर दिक्कत ये भी है कि कुछ टीम्स फिर भी काम बिगाड़ेंगी। देखिए थोड़ा ऊपर खींचने का तो जरूर से ट्राई करेंगी। जैसे हमने खुद देखा था कि यहाँ पे जो पीक पैंथर्स थे उन्होंने काफी काम बिगाड़े हैं आज के डे में। अल्पाइन एसेस फॉर एग्जांपल उन्होंने काम बिगाड़ा। आइए उन्हीं का स्क्वाड देखते हैं। सबसे पहले 8 खिलाड़ी अल्पाइन एसेस ने ले लिए हैं और टोटल उनके 9 अजय उनके मार्की प्लेयर हैं। शुभम और शुड आई से शैडो, क्या कहोगे आप? मैं कहना चाहूँगा अल्पाइन एसेस में जो कॉन्सेप्ट गया एंड मोमेंट पे, वो मुझे ब्रेक डाउन लगा, जहाँ पे कॉन्सेप्ट के ऊपर इतना एंड मोमेंट पे जो टीम स्पेंड कर रहे थे एक के बाद एक 1 करोड़, आई थॉट कि यहाँ पे शायद से एंड होने वाला, बट नहीं, 1.55 करोड़। द रीजन वाज क्योंकि अल्पाइन एसेस का कॉन्सेप्ट क्लियर था। वेल ये सडन था यार, बिकॉज बिडिंग किन्हीं और 2 टीम्स के बीच में चल रही थी। सडनली अल्पाइन एसेस बीच में आया और उन्होंने कहा अरे पैसे तो हमारे पास भी है भाई। और काफी टाइम से वो सेव भी कर रहे थे, काफी टाइम से सेव कर रहे थे। वो बहुत मिनिमल बिड्स डाल रहे थे, बहुत मिनिमल उन्होंने यहाँ पे अपने चांसेस लिए, पर कंसेप्ट उन्होंने फुल बाय करा, फुल स्पेंड करा है। तो देखते हैं कि अब जो बचा हुआ प्लेयर है उसके लिए जो बजट है वो क्या सफिशिएंट रहेगा। वैसे बचे हुए प्लेयर राउंड 3 में आएंगे। एंड कॉन्सेप्ट सेकंड जॉइंट हाईएस्ट उनके लिए बिड हुआ है। ओल्ड मॉन्क का भी 1.55 हुआ, कॉन्सेप्ट का भी 1.55 हुआ, ब्लैक के लिए 1.75 सीआरएफएफ पॉइंट्स हुए। सो ये है अल्पाइन एसेस की कहानी। 2 खिलाड़ी अल्पाइन एसेस को और चाहिए। आइए और दूसरी टीम्स का भी आपको स्क्वाड दिखाते हैं। अल्पाइन एसेस को तो अभी 2 खिलाड़ियों की ज़रूरत है जिन्होंने पूरा कर लिया अपना स्क्वाड, वो हैं पीक पैंथर्स एंड बर्म्यूडा ब्लास्टर्स। तो इसके अलावा बाकी टीम्स को अभी भी अपना स्क्वाड कंप्लीट करना है, लेकिन अब दिक्कत ये है कि जो अनसोल्ड हैं, जिन्हें वो पहले रिजेक्ट कर चुके हैं, उनमें से ही उठाने हैं। ये रही बर्म्यूडा ब्लास्टर्स, स्क्वाड इनका भी कंप्लीट हो चुका है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट देम? और
डीजी इग्नाइट, देखिए मैं बार बार बात करूंगा इस खिलाड़ी के बारे में, जो लास्ट बिड गई है इनके ऊपर, ये काफ़ी कमाल की गई थी एंड इसके साथ ही उन्होंने अपनी टीम्स पूरी कंप्लीट करी थी। टीम काफ़ी सॉलिड नज़र आ रही है, हर एक प्लेयर हर एक रोल वो समझ पा रहे हैं एंड बहुत स्मार्टली प्ले करा है कंपेयर टू अदर टीम्स। इवन तो हमारे ऑक्शनर थे वो भी काफ़ी तारीफ कर रहे थे कि आपने बहुत सारे बाइज ऐसे, आई थिंक सो उन्होंने स्ट्रिक पे 2 बाइज ऐसे लिए थे जो बेस पे लिए थे, जो स्ट्रगल एंड अरमान का बाई था उस पर किसी और ने बिड नहीं करा, उनको बेस प्राइस पे मिल गई 10 lakhs में, तो ये एक इंटरेस्टिंग बाय था। एंड रोनी प्लेयर्स हैं उनके बेस प्राइस पे, आप वो देखो। हाँ, मधु तो ऑफ कोर्स उन्होंने बहुत स्मार्टली बाय करा, बहुत स्मार्टली बाय करा है, सिलेक्टेड अप्रोच रखी, परफेक्ट कॉइन इकोनॉमी को बैलेंस रखा, सबसे इंपॉर्टेंट ये था एंड आई थिंक सो वो अल्टीमेटली ऑक्शन को समझ पाए बहुत अच्छे से। बर्मुडा ब्लास्टर्स, इन्होंने अपनी पढ़ाई फाइनेंस मैनेजमेंट में की है, इन्होंने फाइनेंस बहुत अच्छे से मैनेज किया और इसीलिए आई हैव वन इनसाइट, तो बर्मुडा ब्लास्टर्स के अंदर जो रॉकी एंड आरडीएक्स हैं वो पास्ट में बैंक मैनेजर रह चुके हैं। ओहो रॉकी भाई, आप बैंक मैनेजर हैं, आपको तो फंड्स अच्छे से मैनेज करने आता ही है फिर, और क्या कमाल के फंड्स मैनेज किए कि पूरी टीम भी कंप्लीट कर ली, 30 लाख FF कॉइंस बचा भी लिए, अब आप उसकी FD कराइएगा तो आपको 5.5-6% का रिटर्न भी मिलेगा। 7.5 तो मिलता है। चलिए अगली टीम की तरफ बढ़ते हैं। अगली टीम आपकी तरफ है कलहरी नाइट्स। इनकी टीम में से कोई बैंक में नहीं था भाई, क्योंकि इनके फंड्स बहुत बचे हैं और प्लेयर्स भरना भी काफी बचे हैं। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट देम शैडो? यस, क्योंकि कलाहारी नाइट्स पे जैसे पिछली बार आए थे देसी भाई, यहाँ पे अभी देखा जाए तो उनके अभी भी 4 प्लेयर्स उनको लेने हैं, और जैसे इस बार भी हमने देखा कि डीजी इनसेन को लेने के बाद वो ज़्यादा किसी पे पिक नहीं दिए एंड अभी उनको ऑब्वियसली लेना पड़ेगा उनमें से जो अनसोल्ड गए हैं, बट मुझे लगता है शायद से अपना स्क्वाड वो परफेक्टली बिल्ड कर लेंगे। बॉस स्पाइडर को देखा जाए तो 50 पेंट, उससे पहले जब लिए थे TSG अभी को, उस पे उन्होंने 1 CR स्पेंड करा। एक्चुअली में सेकंड राउंड ऑफ ऑक्शन में कलारी नाइट्स थोड़ी सी जागी और उन्होंने फिर पैसे खर्च करने का सोचा कि यार स्क्वाड तो हमें भी भरना है, तो उन्होंने अभी पे 1 CR खर्च किया और फिर स्पाइडर को लेके आए 50 लाख में। लेकिन उसके बाद फिर वो थोड़ा स्लो हो गए, क्योंकि दोनों अग्रेसिव बायर्स थे पूरा, एक के बाद एक लगातार। और वेल कलारी नाइट्स के बाद अब चलिए अगली टीम की तरफ बढ़ते हैं और हम आपको अगली टीम दिखाते हैं कि कैसा लग रहा है उसका स्क्वाड। ये है नेक्स्टेरा नवाब्स। इन्हें 2 खिलाड़ियों की अब भी तलाश है एंड और देखिए नेक्स्टेरा नवाब्स की जो अभी तक टीम बनी है वो पूरी TSG ओरिएंटेड बनी है। एक ही प्लेयर शायद से TSG का जो दूसरी टीम में गया है, इन्होंने कोशिश करी है, ऋतिक, जश, इसके साथ साथ दक्ष एंड लेजेंड, ये 4 खिलाड़ी। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी दूसरी टीम के अंदर शायद से इतना प्रैक्टिस ना मिल पाए, पर ये एक साथ रहते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं और आई थिंक सो ये ज़्यादा अच्छा ग्राइंड कर पाएंगे एंड ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर डिस्कस कर पाएंगे। तो आई थिंक सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ रहने वाली है टीम नेक्स्टेरा नवाब्स की तरफ से। एंड अब देखने वाली बात रहेगी कि अब टीम पूरी होने के लिए 2 प्लेयर बचे हैं, वो कौन से लेते हैं भाई। अगला राउंड ऑफ ऑक्शन बहुत ही जल्द शुरू होगा, वहां पर अनसोल्ड प्लेयर्स आएंगे और उनमें से जो टीम्स अभी भी अपना स्क्वाड पूरा नहीं कर पाई हैं वो उनमें से अपनी टीम के लिए खिलाड़ी चूज करेंगे। लेकिन पीक पैंथर्स इन्हें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले ऑक्शन में अपना स्क्वाड पूरा किया था। ऑल्दो ऑक्शन से पहले बातें कर रहे थे कि हम तो लास्ट में बिडिंग करेंगे, सबको बेस प्राइस में लेंगे, लेकिन बड़े बड़े और मोटे मोटे पैसे खर्च करने में ये भी किसी से पीछे नहीं रहे। एंड अगर देखा जाए तो उन्होंने अपने फ्रेंड को लिया है, जॉन्टी भाई एंड जय इन 1 टीम। अगर देखा जाए इसमें हमारे सोल हैं, फिर से गॉडल भी है, और देखा जाए तो गॉडल एंड सोल इस मैच के अंदर वो लोग आमने सामने नहीं, एक साथ खेलने वाले हैं। सो अभी आप स्टार्ट कीजिए। जी हाँ, देखिए मैं चर्चा करूंगा यहाँ पे ऑफ कोर्स पीक पैंथर्स की। देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से इन्होंने टीम एलीट या फिर टीम एसिचुअल ओरिएंटेड पूरी टीम बनाई है, जहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ओल्ड मॉन्ग, जॉन्टी, जय एंड पहाड़ियन अदीब, ये बहुत स्ट्रॉन्ग टीम मुझे लग रहा है। क्योंकि देखिए एक ओल्ड सिनर्जी, एक ओल्ड लीड जो ऑलवेज कहते हैं वो वाइब आएगी, एसिचुअल का तड़का लगेगा, तो ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। वहीं अगर हम बात करें सोलारा सुल्तान्स के बारे में, देखिए ये टीम बहुत इंटरेस्टिंग रही एंड मुन्ना भाई एंड नॉनस्टॉप भाई इसके ऑनर रहने वाले हैं, वासु भाई इसके मार्की प्लेयर थे। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे अभी रिसेंटली इन्होंने काफ़ी अच्छे से बजट बाइज करे हैं, बहुत स्मार्टली परचेज करा है, प्लेयर्स को बिड काफ़ी अच्छी डाली है, पर अभी भी एक खिलाड़ी अभी भी रह चुका है। देखते हैं कि किस तरीके से ये अगला बाई जाने वाला है। वहीं अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी सरप्राइजिंग पिक्स भी थी, जैसे हेलो तेलुगु गेमिंग
इनके पास होने वाला है, HTG प्रतीक भी इनके पास होने वाले हैं, तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। एंड RNTX ब्लैक अभी तक की हाईएस्ट बिड, इस पूरे ऑक्शन की सबसे बड़ी हाईएस्ट बिड इन्हीं की तरफ से नजर आई थी, एंड इन्होंने ही यहाँ पे वो सबसे बड़ी बिड डाली थी। उसके बाद थोड़ा सा शांति का माहौल आ चुका था, लग रहा था कि नहीं यार थोड़ी देर तक ये तो शायद से बजट बाइस की तरफ जाएंगे, पर ऑफ कोर्स उन्होंने सिलेक्टेड अग्रेशन दिखाया, बिल्कुल बहुत अच्छे से बाय करे। पर ये थी अभी तक की राउंड 2 तक की बिडिंग, अभी भी राउंड 3 बचा हुआ है। राउंड 3 में देखने वाली बात रहेगी क्या होने वाला है। पर राउंड 3 स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ जुड़ चुके हैं कुछ मार्कीज एंड कुछ ऑनर्स। वेलकम नयन भाई, वेलकम रॉकी भाई, कैसे हैं आप? स्मार्ट एलिजिबल बैचलर एज ऑलवेज। अच्छा, मैं ये कह रहा था, आपकी पूरी बिडिंग के अंदर सबसे स्मार्ट फाइनेंस आपने संभाला है, क्या राज है? बैंकिंग? आई थिंक हमें गाइड करने के लिए आयुष भाई और तरुण सर बहुत अच्छे मिले थे, ठीक है। बाकी नयन तो है ही, नयन ने बहुत अच्छा वहाँ पे स्टार्टिंग में बिड खेला, लाइक ही वाज ऑलवेज बिहाइंड इट कि नहीं रॉकी भाई हम जिन प्लेयर को टारगेट्स कर रहे हैं लास्ट में मिलेगा ज़रूर, बट पहले मेरे को कुछ प्लेयर्स जो हैं मेरे को लग रहा है कोई जाएगा नहीं, सस्ते में ले लेते हैं, एंड ही सक्सीड। वाह। अच्छा नयन भाई, मैं एक चीज़ पूछूंगा आपसे, आपके सेकंड ऑनर अभी यहाँ नहीं है, अब वो भी जुड़ेंगे हमारे साथ जब मैचेस होंगे एक्चुअल में ग्राउंड में, पर मार्की जो आपने पिक करा उसके पीछे क्या थिंकिंग थी? रॉकी भाई कमाल का वो, क्योंकि कास्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। जी हाँ, रॉकी भाई को मतलब लेने का यही स्ट्रैटेजी था मेरा कि रॉकी भाई अगर आएंगे तो रॉकी भाई के साथ में एक दिमाग भी आएगा मेरे टीम में, और उसी के साथ में बॉलर भी अच्छे हैं, तो 2-4 ओवर निकाल सकते हैं। मेंटोर? हाँ, मेंटोर भी बहुत अच्छे हैं, 2-4 ओवर्स भी निकाल सकते हैं, तो उस हिसाब से मैंने रॉकी भाई को लिया। एंड अभी हमारे पास 30 लाख बचे भी है, तो अब रॉकी भाई की उसमें शादी भी करा देंगे। देखिए ये टॉपिक हर हमेशा छिड़ता है, कुछ कहेंगे ये शादी वाले टॉपिक में? यार इससे ज़्यादा तो दहेज मिलना चाहिए। देखिए अब मैं जिससे ज़्यादा तो नहीं खींचूंगा इस कन्वर्सेशन को, पर हाँ मैं एक चीज़ आपसे पूछूंगा, आपने सबसे एक ऐसा बाय लिया है, एक ऐसा बिड डाला है आपने, डैडी कॉलिंग। डैडी कॉलिंग भाई का फेस रिवील हो रहा है, कितनी ज़्यादा उनकी फैन फॉलोइंग है, बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, बहुत कमाल के बैट्समैन है जहाँ तक मैंने सुना। वो बताइए क्या बैकग्राउंड रहा, किस तरीके से आपने, आप ही बताइए। मतलब बेसिकली डैडी कॉलिंग पहले से मेरे से बात कर रहा था कि मुझे आना है तो तेरी टीम से आना है, और हमें ट्रॉफी जो है महाराष्ट्र ही लेके आनी है, तो ऐसा उसका मतलब हम लोगों को मतलब हमारे इसमें लेके आनी है, तो उसका ऐसा कहना था, तो नयन मुझे उठा। और वो इवन बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा टेनिस प्लेयर है, उसके पास में ट्रॉफीज इतनी सारी है, उसने किसी को बताया नहीं है। तो एक स्ट्रैटेजी थी हमारी कि उसको हमने उसके लिए 1.8 करोड़, मतलब हमें जो इग्नाइट मिला है वो नहीं मिलता था, हमने 1.8 करोड़ उसके लिए ही रखा हुआ है जी, रखा हुआ था, बट हमें 45 में ही मिल गया उसको। मतलब वो प्लेयर हमें लग रहा था कि वो सबसे हाईएस्ट बिड जाएगा अगर ओलमोंग के बाद। ये किस्से मैंने सुने थे कि भाई रोहित भाई कमाल का क्रिकेट खेलते हैं, पर आप लोगों ने बड़ी पैनी नजर रख रखी थी, बहुत सस्ते में मिल गया। क्या उसने वीडियो भी नॉर्मली डाल रखी थी उसमें। ये आपने पहले समझाया था ना। आप बताइए। He had won more than 89 domestic tournaments with the particular ball we are supposed to play, और उनकी खुद की more than 89 tournaments with that 2-fly tennis ball only, और लेदर से भी खेल चुका है। Not just that, उसकी खुद की पुणे को रिप्रेजेंट करने वाली टीम भी है जी। इनफैक्ट काफी कम लोगों को पता है दैट डैडी कॉलिंग रोहित धोत्रे, वो एक फ्री फायर कंटेंट क्रिएटर बनने से पहले उनके वीडियोस काफी फेमस यूट्यूब में हैं क्रिकेट के साथ भी। हाँ, उसने अभी तक रिवील ही नहीं किया, उसका फेस रिवील ही नहीं हुआ है। और एक और चीज भाई, जो बंदा फेस रिवील कर सकता है क्रिकेट के लिए, टूर्नामेंट के लिए, तो वो बंदा कैसा खेल सकता है, सोचो आप। भाई ये तो कुछ इन लोगों ने पहले ही प्लान कर रखा था, पर ये प्लान और चीज है, हमारे पास डैडी कॉलिंग के साथ में लुइस भी है। हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग लुइस भी है, रूफानी भी है, वो भी अच्छा खेलता है। तो लगभग 5 से 6 प्लेयर्स जो है, मैं खुद भी अच्छा खेलता हूँ, रॉकी भाई भी अच्छे खेलते हैं, कुल्लू जो हमारे सेकंड वो भी खेलते हैं भाई, अच्छा प्लेयर, हाँ वो भी है। तो हम एक्स्ट्रास में भी रखने के लिए हमारे पास जगह नहीं, पूरी 11 के 11 हम लोगों ने अच्छे उठाए, तो 10 लाख में बेस में उठाए, वो भी अच्छे प्लेयर। अक्सर मैं कास्टिंग के दौरान ही बात करता हूँ कि आप विश्व का सबसे बढ़िया प्लान बना लीजिए, आप भी कहते हैं एग्जीक्यूशन नहीं होगा तो उसका कोई फायदा नहीं, कोई इसकी चर्चा नहीं कर रहा। मुझे लग रहा है प्लानिंग के साथ ही साथ अब ये जो एग्जीक्यूशन फेज है वो भी काफी स्ट्रांग होने वाला है आपका। डेफिनेटली होगा, क्योंकि हमने पहले यही दिमाग लगाया था कि पता नहीं जिन को टारगेट कर रहे हैं मिलेंगे कि नहीं, एंड टू बी ऑनेस्ट उससे बेहतर मिले हैं। इग्नाइट भी है आपके पास तो इग्नाइट का भी मुझे थोड़ा बताइए। डैडी कॉलिंग की बात हमने करी, पर इग्नाइट के लिए इतनी ऊपर आप बिड लेके गए? नहीं, एक्चुअली सीन ऐसा था, हो रहा हमारे 9 प्लेयर्स हो चुके थे और हमारे पास पूरा चंक बचा था 1.5 का, और हमें सिर्फ ऑलराउंडर ही लेना था, वही कैटेगरी हमारे पास बचे, वो भी कैट ए की।
तो उस हिसाब से हमें जाना ही था, तो हम पहले कंसेप्ट पे भी गए थे, हाँ। ऑल इन गए थे। हाँ। हमें लगा अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो सामने वाले का बजट तो वैसे ही बिगड़ना है। बिगाड़ तो दिया। जैसे ही बिगड़ा, पता ही था कि और उसके अलावा एक उनका और टीम दिक्कत क्या हो गया, अब उन्हें और प्लेयर्स लेने भी है, लेने तो भी उनके है। चक्कर में हाँ। हमने उनका बिगाड़ा भी और हमारा भी कुछ गया नहीं, और हमारे पास एक और ऑलराउंडर था इग्नाइट। और हमें लेफ्टी ऑलराउंडर ही चाहिए था जो लेफ्ट हैंडेड बैटिंग भी कर सके और बॉलिंग भी कर सके। क्या बात है, छोटी छोटी इंसाइट्स, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा, हर एक छोटी छोटी पॉइंटर के ऊपर उन्होंने फोकस करा और एक स्ट्रॉन्ग टीम बना दी। पीक पैंथर एंड बर्मुडा ब्लास्टर्स वो दो पहली टीम्स बन चुकी है जिन्होंने अपनी लाइनअप कंप्लीट कर दी है, पर अभी भी ऑक्शन बचा हुआ है, अभी भी राउंड 3 बचा हुआ है, पर उस पर जाने से पहले हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस मुलाकात करते हैं आपके साथ। चल दे ये भी एक्सपीरियंस मिल गया मेरा। इस मिट्टी से तेरे सपने बने कर दे धुआं, जिस रास्ते पे भी तेरे पाँव पड़े बस किसी से कभी मैं डरा नहीं, फालतू की बातों में पड़ा नहीं, नजर निशाने पे दुश्मन ठिकाने में कभी भी रुका मैं जरा नहीं। मेरा मुकाबला खुद से, मौसम बदले तेरे रुख से, कि खुदा भी किस्मत लिखने से पहले तेरी रजा पूछे तुझसे, तू शेर की दहाड़ दे, चिथड़े तू डर के भाड़ दे, इस दुनिया के हर कोने तक तू ख्वाब अपने पसार दे, खोल दे जो बंधा बैठा तेरी रग रग में, उफान है उफान है उफान है तूफान है तूफान है तूफान है तूफान है तूफान है, तू जीत का ऐलान है, तूफान है 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 तूफान है, तू जीत का ऐलान है, तूफान है 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 तूफान है, तू जीत का ऐलान है, तूफान है तूफान है तूफान है।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक भाई. सेकंड राउंड ऑफ ऑक्शन हुआ समाप्त एंड सेकंड राउंड ऑफ ऑक्शन के बाद हमने बहुत सारी चीजें देखी. 3 ऐसे प्लेयर हमने देखे जो 1 CR के ऊपर बिके एंड बहुत सारा तामझाम हुआ. बहुत सारी टीम्स के बीच में क्लैशेस हुई. कुछ टीम्स को आउटबिड किया गया, खास करके बर्मुडा ब्लास्टर्स. उन्होंने आउटबिड किया. उन्होंने कहा तुम्हारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है, कैसे खरीदोगे. थोड़ी देर पहले औरा के साथ बर्मुडा ब्लास्टर्स की टीम बैठी थी एंड दे वर टॉकिंग कि किस तरीके से उनकी टीम के जो प्लेयर्स हैं वो तो बड़े प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं. तेको लगता नहीं है पहले से ये ट्रॉफी लेके उन्होंने इस पूरी अपनी प्लानिंग कर ली है ट्रॉफी के लिए? आपने सुना ना ये ट्रॉफी का वेट कितना है? अरे वो तो हल्का फुल्का, इससे ज्यादा हल्का भारी मैं डंबल मारता हूँ. हाँ, वो दिक्कत नहीं है. तो देखिए काफी स्ट्रॉन्ग टीम बनाई है बर्मुडा ब्लास्टर्स ने. इट्स वेरी क्लियर कि दे आर वेरी स्मार्ट एंड सेकंड टीम बन चुके हैं जिन्होंने सबसे पहले अपनी टीम कंप्लीट करी, अपनी लाइनअप कंप्लीट करी है. तो कॉन्फिडेंट है, काम है, कंपोज है. इवन तो दे नो कि दे नीड लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और राइट हैंडेड बैट्समैन, और उनको बॉलर कैसा चाहिए. एंड एक प्लेयर जो डैडी कॉलिंग थे, अभी मुझे पता चला कि उन्होंने इनके बारे में तो बताया ही नहीं था. तो बेसिकली वो स्टेट लेवल एंड पुणे रिप्रेजेंट करते हैं क्रिकेट में. तो इस तरीके के प्लेयर लिए उन्होंने ऐसे 45 लाख में. अरे बाप रे भाई. देखिए 2 राउंड ऑफ ऑक्शन हो चुके हैं, तीसरा राउंड ऑफ ऑक्शन शुरू होने वाला है. यहाँ पर अनसोल्ड प्लेयर्स आने वाले हैं. 2 टीम्स हैं जो कि अपना स्क्वाड पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, बर्मुडा ब्लास्टर्स एंड पीक पैंथर्स. बाकी टीम्स को अपना स्क्वाड कंप्लीट करना है. तो अब मुझे क्या सुन रहे हो, ऑक्शन की तरफ बढ़ते हैं. Right, ladies and gentlemen, back to round 3 now of the auction. And very quickly, let me just remind what's happened. सबको याद दिला दूं. Peak Panthers were the first team to complete their squad of 11. So congratulations to them. Let's have a round of applause. Very judicious in their team planning. बहुत शानदार planning करी थी. टीम पहले ही बना ली, अपने players जो चाहिए थे, जानते थे उनको क्या चाहिए. Bermuda Blasters then finished their squad, so congratulations to them as well. ऑलराउंडर के लिए ब्लैंक जरूर ब्रेक किया अंत में, वो आखिरी 11th प्लेयर के लिए 1.2 करोड़ स्पेंड किए, बट वेल डन. यू कंप्लीटेड योर टीम, टिक्ड ऑफ ऑल द बॉक्सेस, कंप्लीटेड द कोटा. बट नाउ इस राउंड 3 में हम इसलिए जा रहे हैं बिकॉज देयर आर 4 टीम्स दैट स्टिल हैव स्लॉट्स टू फिल, एंड दोज 4 टीम्स आर Alpine Aces, Kalahari Knights, we've got Nexterra Nawabs and Solara Sultans. अलग अलग स्लॉट्स फिल करने के लिए. Alpine Aces के पास 2 स्लॉट्स हैं फिल करने के लिए. Well, you've got Kalahari Knights who've also got 4 slots to fill. So a long way to go. They've held back their money. Now is the time they have to use it. Nexterra Nawabs have 2 slots to fill. और वहीं Solara Sultans जो हैं उनके लिए 1 slot अभी भी भरना बाकी है. So right, I have the names of players who were passed up पहले 2 राउंड्स के अंदर ऑक्शन के. इन रैंडम ऑर्डर मैं इनके नाम ड्रॉ कर रहा हूं. प्लेयर नंबर F10, that's F10, he was from set F. प्लेयर नंबर 10 F10, that's अभिनव आयुष, ऑलराउंडर हैं, कैटेगरी B प्लेयर बाय द गेमिंग नेम ऑफ अभी. इनकी बेस प्राइस 10 लाख FF कॉइन्स रहेगी. कैन आई हैव एन ओपनिंग बिड from Nexterra Nawabs? They bid for the all-rounder at 10 lakh FF coins. Is there somebody else coming in with a counter bid? Is it going to be Alpine Aces? They come in with a bid 15. Nexterra Nawabs 20. Alpine Aces, do we have a counter from you? Do we have a counter from you? It's 20 lakhs at the moment for Nexterra Nawabs. Is it going to go their way? Alpine Aces, are you in with the bid? Yes, 25. Nexterra Nawabs raise it to 30. 30 lakh FF coins. Alpine Aces, are you out of it? Alpine Aces exit करते हुए इस bidding process को. Nexterra Nawabs के पास option है ये 30 lakh FF coins के लिए. Abhinav Ayush going once, going twice, and sold to the Nexterra Nawabs. Abhinav Ayush, all-rounder category B के Nexterra Nawabs के खेमे में जाते हुए. Nexterra Nawabs के अब इस बाइंग के साथ 10 स्लॉट पूरे हो गए, 1 ही स्लॉट बच गया है उनके पास. राइट, द नेक्स्ट नंबर वी आर ड्रॉइंग इज E11, प्लेयर नंबर E11, सेट E नंबर 11, E11, दैट्स समीर, बैट्समैन है, कैटेगरी B प्लेयर, यानी बेस प्राइस 10 लाख FF कॉइन्स की. कैन वी हैव अ बेस प्राइस बिड फॉर समीर प्लीज? Is there any team that's coming in with a bid here?
Kalahari Knights have 4 slots to fill. Do we see a bid from you? No bid, no bid, no bid, no bid. We're passing it up. No, there's a bid at 10 lakh FF coins from Alpine Aces की तरफ से ये bid आया है. Alpine Aces bidding for Samir. Do we see a counter from anyone? Do we see a counter coming in? Going once, going twice, and sold to Alpine Aces. They get Samir, a batter, category B. Batter goes to Alpine Aces. Now they also have only 1 slot to fill. The next name that's coming up is F7, player number F7, Himnish Ahuja, a category A batsman. A category A batsman, Himnish Ahuja. Do we have a bid? Yes, Solara Sultans with a bid of 20 lakhs. 25 from the Kalahari Knights. 25, 30 from Solara Sultans. 35 from Kalahari Knights. Solara Sultans, do you have a bid of 40? 40 from the Solara Sultans. I'll just excuse myself for a moment. Can I get a bottle of water, please? Can I get some water? 40 was the bid from Solara Sultans. 45, Kalahari Knights. 45 की bid है Kalahari Knights की. 50, Solara Sultans की bid. 55, Kalahari Knights. 60, Solara Sultans bank break करते हुए. 65, Kalahari Knights 4 slot fill करने हैं. 70, Solara Sultans. 75, Kalahari Knights. 75 for the Kalahari Knights. They've got a bid of 75. Going once to the Kalahari Knights. Going twice to the Kalahari Knights. And sold for 75 lakh FF coins to the Kalahari Knights there. That's Himnish Ahuja. Going to the Kalahari Knights. They've got 3 slots to fill now. Right, the next name, ladies and gentlemen, that I'm going to draw from this is D1. D1. D1, that's going to be Shankar Thakur, a batsman, category B player. Do we have an opening base price bid of 10 lakh FF coins? Do we have a bid coming in for 10 lakh FF coins for Shankar Thakur? 1 bid, second reminder, final call, unsold. Shankar Thakur goes unsold here at the auction. The next name that I will draw is D9, player number D9, that's Yasir Manzoor. Yasir Manzoor, a category A all-rounder. And do we have a bid coming in for Yasir Manzoor, a category A all-rounder? Opening bid of 20 lakh FF coins. Do we have a bid coming in from anyone? Do we have a bid from any of the teams for Yasir Manzoor? Final reminder, final call, fair warning. Yes, a bid of 20 lakh FF coins, base price coming in from the Alpine Aces. Alpine Aces have come in with a bid. Does anyone counter that? Do we have any counter coming in from anybody? Alpine Aces going once, going twice, fair warning, and sold to Alpine Aces. Yasir Manzoor finds a team. He will go to the Alpine Aces at his base price of 20 lakh FF coins. So, with that, Alpine Aces, I believe, have completed their squad. They had 2 slots to fill. They've picked 2 players. So they've completed their squad as well. Congratulations to the Alpine Aces. They have fulfilled their squad of 11 in this auction. Well done. Right. Next name that I'm drawing from the lot is player number D3. That's Saurabh Chaurasia. Saurabh Chaurasia is now going to come up. That's player number D3. Set D, player number 3, a category B all-rounder.
Opening bid 10 lakh coming in from Kalahari Knights. Kalahari Knights have bid 10 lakh FF coins, the base bid for Saurabh Chaurasia. Do we have a counter from anyone coming in? Yes, 15 lakhs from Solara Sultans. 20 lakhs from Kalahari Knights. 20 lakhs from Kalahari Knights. Solara Sultans, are you bidding 25? Yes, 25. 30 from Kalahari Knights. 35 from Solara Sultans. 35 from Solara Sultans, and Kalahari Knights cannot bid anymore due to a limitation of purse. So Solara Sultans going to Solara Sultans for 35 lakh FF coins. Going once. All right, got a bid coming in now from Nexterra Nawabs at 40 lakh FF coins. 45 from Solara Sultans. 45. 50 from Nexterra Nawabs. 55 from Solara Sultans. 60 from Nexterra Nawabs. 60 from Nexterra Nawabs. 65 from Solara Sultans. 70 for Nexterra Nawabs. 75 from Solara Sultans. 80 for Nexterra Nawabs. 80 for Nexterra Nawabs, and Solara Sultans don't have the budget to bid anymore. So Nexterra Nawabs will get Saurabh Chaurasia for 80 lakh FF coins. Going once, going twice, and sold. Saurabh Chaurasia, the all-rounder, a category B player, goes to the Nexterra Nawabs. And with that, they have also completed their squad. So congratulations, Nexterra Nawabs. Their squad of 11 is complete as well in the auction. And that now just leaves 2 teams in the fray for the remaining set of names. The 2 teams, Kalahari Knights and Solara Sultans. That's the way it stands. Now, 1 slot to fill for the Solara Sultans. 3 slots to fill for the Kalahari Knights. The next name is F1. Player number F1, that's Sahil, is the player from set F, player number 1. Sahil is a category B batsman. Do we have a bid coming in for Sahil from any of the teams? Fair call, fair warning to both teams. Do we have a bid for Sahil? Second warning, and we'll put him in the unsold bag. Unsold. Sahil goes unsold at the auction. The next name that we're drawing is player number E5. That's Sumit Verma. From set E, player number 5, Sumit Verma. Went unsold in round 2. Category B batsman. Do we have a bid? Yes, Kalahari Knights with a bid of 10 lakh FF coins. Solara Sultans, do we see a bid from you? 15 lakh FF coins. The bid from Solara. 20 from Kalahari Knights. 25 from the Solara Sultans. 30 from Kalahari Knights. 30 lakh FF coins. The bid from Kalahari Knights. 30 lakh FF coins. The bid going once, going twice, and sold. The Kalahari Knights get Sumit Verma at 30 lakh FF coins, which means they now have 2 slots to fill in their squad at the moment. 1 slot to fill in their squad for Solara Sultans. The next name that's been drawn is player number B1. B1, that's Gokul Kumar from set B, player number 1. Gokul Kumar is a batsman, category B player. Base price bid of 10 lakh FF coins. Do we have a bid for him? Do we have a bid for Gokul Kumar? Do we have a bid from Kalahari Knights or Solara Sultans? Fair warning once, fair warning twice, and unsold. Gokul Kumar goes unsold at the auction, which means we move on to the next player on the list. This is player number D4. Set D, player number 4, SK Sohan. Another batsman, a category B player, SK Sohan. Base price bid of 10 lakh FF coins. Do we have a bid coming in from any of the teams? Do we have a bid coming in from Kalahari Knights? No, we have a 10 lakh bid from Solara Sultans.
10 lakh bid from Solara Sultans, and Kalahari Knights say they are out of the bid. They cannot bid anymore, so Solara Sultans, they get SK Sohan for his base price of 10 lakh FF coins, and with that, Solara Sultans complete their squad as well. They've got no more slots to fill. Congratulations. So what we'll do is we'll pause the auction now for a technical recess, a technical break of 5 minutes, just to collate squads for all the teams. And since 5 teams are done with their squad selection through the auction process, just 1 team with 2 slots to fill, that's Kalahari Knights. So we will take a technical recess and be back soon. चल दे दिखा किस मिट्टी से तेरे सपने बने कर दे धुआं जिस रास्ते पे भी तेरे पाँव पड़े बस किसी से कभी मैं डरा नहीं फालतू की बातों में पड़ा नहीं नजर निशाने पे दुश्मन ठिकाने में कभी भी रुका मैं जरा नहीं मेरा मुकाबला खुद से मौसम बदले तेरे रुख से कि खुदा भी किस्मत लिखने से पहले तेरी रजा पूछे तुझसे तू शेर की दहाड़ दे चितड़े तू डर के फाड़ दे इस दुनिया के हर कोने तक तू ख्वाब अपने पसार दे खोल दे जो बंधा बैठा तेरी रग रग में उफान है उफान है उफान है तूफान है तूफान है तूफान है तूफान है तूफान है तू जीत का ऐलान है तूफान 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 है तू जीत का ऐलान है तूफान है तूफान है तूफान है तूफान है तूफान है तूफान है तू जीत का ऐलान
इस मिट्टी से तेरे सपने बने कर दे धुआं जिस रास्ते पे भी तेरे पाँव पड़े बस किसी से कभी मैं डरा नहीं फालतू की बातों में पड़ा नहीं नजर निशाने पे दुश्मन ठिकाने में कभी भी रुका मैं जरा नहीं मेरा मुकाबला खुद से मौसम बदले तेरे रुख से कि खुदा भी किस्मत लिखने से पहले तेरी रजा पूछे तुझसे तू शेर की दहाड़ दे चितड़े तू डर के फाड़ दे इस दुनिया के हर कोने तक तू ख्वाब अपने पसार दे खोल दे जो बंधा बैठा तेरी रग रग में उफान है उफान है उफान है तूफान है तूफान है तूफान है तूफान है तूफान है तू जीत का ऐलान है तूफान 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 है तू जीत का ऐलान है तूफान 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 है तू जीत का ऐलान है तूफान है तूफान है तूफान है Good evening, ladies and gentlemen. Welcome once again. It's been a very eventful auction of the Booyah Premier League. Well, बहुत सारी दिलचस्प बातें घटी इस ऑक्शन के अंदर 3 राउंड्स भी हुए और अंत में 5 टीम्स ने अपने स्क्वाड्स पूरे कर लिए और बची एक टीम. बट पहले congratulations to Peak Panthers. They were the first team to complete their squad. Clarity of thought. Let's have a round of applause for them. Bermuda Blasters were the second team to complete their squad. Again, well within the first 2 rounds, so credit to you as well. Got to the point, got to the finish line, got the balance in the team. उसके बाद completion देखा हमें Nexterra Nawabs से, Alpine Aces से और साथ ही साथ Solara Sultans ने भी अपना squad पूरा किया. So congratulations to you. The one team that still had 2 slots available, जिनके 2 slots बाकी थे, वो थी Kalahari Knights. 5 प्लेयर जो अनसोल्ड गए थे ऑक्शन में तब तक, उन 5 प्लेयर्स के अंदर से 2 प्लेयर्स का सिलेक्शन ऑन बेस प्राइस डिफॉल्ट पे कालाहारी नाइट्स करती हुई और वो प्लेयर्स हैं प्लेयर नंबर F4 यानी देव कुमार. लेट्स टेक अ लुक एट हिज प्रोफाइल प्लीज. देव कुमार, प्लेयर नंबर F4, a batsman category B, goes to Kalahari Knights at his base price of 10 lakh FF coins. Congratulations to Team Kalahari Knights. And they picked player number B1 from set B. Player number 1, Gokul Kumar, is the player that they've picked. Gokul Kumar, another batter, another batsman, a category B player going at base price of 10 lakh FF coins. So that's how Kalahari Knights have completed their squad of 11 players. तो एक बार फिर अब जल्दी से ना टीम्स पे नजर डाल लेते हैं. उनके प्लेकार्ड्स वहीं पहुंच चुके हैं. Let's take a quick look at the teams per se. This of course is the auction summary in terms of what happened, and I'm going to quickly run through that because the fact is Alpine Aces की तो हम बात कर रहे थे, 5 category A players ले लिए. So if you look at it, there were 3 teams that picked up the maximum category A players that they could. Alpine Aces, Kalahari Knights and Nexterra Nawabs. So well done. The auction pick worked out well for you because you got 5 category A players, the top players in the top category. Overall, the purse utilized was the best. Maximum purse left was for the Solara Sultans. Had a purse of 65 lakhs still left with them, the Solara Sultans, but they got their squad. So congratulations to them. That's how the spread has happened. Let's now very quickly take a look at what happened per team. Let's take a team by team look at the final squads. We'll start with the Alpine Aces.
Alpine Aces के लिए of course उनके marquee player जो थे फौजी अजय, वो तो marquee player उन्होंने पहले ही pick कर लिए थे. Broke the bank, paid that 1.2 CR FF coins, went into the auction which is 3.8, but in the end, in the auction, they went on and picked Concept for 1.55 crores. That was the biggest pick for them in their squad, a very expensive buy. Overall, that's what their squad looks like. Congratulations to you. Bermuda Blasters, the team that at one point of time had reached almost the final step, और एक ऑलराउंडर की तलाश में काफी देर तक फिर फंसे रहे उस स्क्वाड को पूरा करने के लिए till they finish their squad. This is what their squad looks like. Of course, Rocky RDX, they knew they'd got him, so they had a lot of money left in the bank coming into the auction. And what do they do there? 1.2 crores spent on DG Ignite. That was one of their more expensive buys, the most expensive buy for them. Of course, you got 90 lakhs spent for Luis as well. So congratulations, Bermuda Blasters. Let's have a round of applause for your squad. You've got the Kalahari Knights. And Kalahari Knights, when you look at TG Delete going their way at just 20 lakhs, they said, okay, we've got lots of money in the bank. That's what we're going to spend. And they become the last team to finish their squad. So well done. Well done. Different tactics. But look at that spend. The 1 crore that they spent for Anshu Jr. and also for Abhi in their squad. The two expensive buys in their team. The Kalahari Knights completing their squad in the end. Let's move on and look at the next team. Nexterra Nawabs. Nexterra Nawabs had TSG Legend as their marquee player. Had 4.5 crore FF coins coming into the auction. And in the end, spending 80 lakhs for SK Killer, who turned out to be their most expensive buy at the auction. Nexterra Nawabs didn't break the bank too much for one player. Spread it across the players they wanted. Round of applause for you. Well done. Let's move on to the next team. That, of course, is the Peak Panthers. Peak Panthers had got Jaunty Gaming, their marquee player, for 1 crore FF coins. And they were the first team to complete their squad also. So, Jaunty, I'm sure you had a say in who to pick, having seen these players play. Right, who's the most expensive one? They got a very expensive old monk at 1.55 crores in that squad. But that's where they broke their bank, really. And 1 crore spent for Awake King. That was the other expensive buy that they had. So well done. Congratulations to Peak Panthers. And last but not the least, Solara Sultans. Let's take a look at their squad as well. They had Vasio, their marquee player, at just 45 lakh FF coins, but broke the bank for RNTX Black, 1.75 crore FF coins. The most expensive buy that we saw in this auction was their RNTX Black at 1.75 crores. And then, of course, they didn't have too much more to spend over 1 crore on any other player. But in the end, they got their squad, so well done. Solara Sultans, congratulations to you. And ladies and gentlemen, with that, we come to the end of this auction. It was enjoyable for me. My name is Raman Bhanot. I enjoyed being a part of this auction. I thank all of you, and I hope you enjoyed being part of this auction as well. And we bring the auction to an end. थैंक यू मिस्टर रमन बनोत फॉर अमेजिंग ऑक्शंस इस तरीके से आपने कंडक्ट किया एंड फिर सारी टीम्स ने फाइनली अपना जो स्क्वाड है कंप्लीट किया. हम आपको स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं. देखिए, सबसे पहले जिन्होंने स्क्वाड कंप्लीट किया वो थे पीक पैंथर्स, उसके बाद बर्मुडा ब्लास्टर्स, उसके बाद वालों के नाम मुझे देखने पड़ेंगे. तीसरे पे थे अल्पाइन एसेस, चौथे स्थान पे थी नेक्स्ट्रा नवाब्स, पांचवें स्थान पे थी सोलारा सुल्तान्स एंड फाइनली छठे स्थान पर कलारी नाइट्स को ये ऑप्शन दिया गया कि भैया सबने ले लिया है, तुम अपनी पसंद की लोग बता दो यार, तुमको कोई पसंद तो आ नहीं रहा है. मेरे साथ है शैडो एंड ऑरा. गाइस, हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ द ऑक्शन? आई थिंक सो लास्ट का जो कालाहारी नाइट्स का रहा है वो सबसे इंटरेस्टिंग सेगमेंट रहा है कि उनको लास्ट में बोल दिया यार बेस प्राइस पे आप ले लो, एंड उसके बावजूद उनके पास पर्स में काफी सारा बजट पड़ा हुआ था. नहीं, अब नहीं बचत है यार, आखिर में तो कुछ भी कर सकते हैं आप, बट यस काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा वो. एंड लास्ट में उनको आइकॉनिक मिला. हम चैट पे देख रहे थे, प्लीज़ यार आइकॉनिक को ले लो, प्लीज़ यार आइकॉनिक को ले लो, रॉक एन RDX प्लीज़ आप आइकॉनिक को ले लो. फाइनली आइकॉनिक गए एंड वो भी गए देसी गेमर्स की टीम में. भाई इन ऑल सारी टीम्स ने अपना स्क्वाड कंप्लीट कर लिया. हमने आपको बताया था हर किसी को 11 प्लेयर का स्क्वाड बनाना है, एक एक मार्की प्लेयर हर टीम के पास है. यहाँ पे सबको
10 प्लेयर अपनी स्क्वाड में लेने थे, जहां एक तरफ हमने देखा कि पीक पैंथर्स स्टार्टिंग से बहुत क्लियर थे कि वो तो 2-2 करोड़ तक खर्च करने को रेडी थे किसी एक प्लेयर के पीछे। वहीं दूसरी टीम्स थी जो कि थोड़ा तोल मोल करने पे लगी हुई थी। शैडो, और जब ये तोल मोल हो रहा था तो कैसा लग रहा था? ये देखो सामने ऑक्शन समरी। यस, बात तो है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो अल्पाइन एसेस जो हैं वो पहले देख सकते हैं 5 लीग 1 प्लेयर्स लिए हैं, और देखा जाए तो कलहारी नाइट्स के भी हो चुके हैं एंड नेक्स्टेरा नवाब्स भी। बट कुछ टीम्स हैं ऐसे हैं जो कि कैटेगरी बी से भी अच्छे प्लेयर्स सिलेक्ट किए हैं। जैसे अगर देखा जाए तो बर्मुडा ब्लास्टर्स, पहले उनका सेगमेंट जो था वहाँ पे उनको टारगेट कर रहे थे वो बॉलर्स, एंड आफ्टर दैट जब वो बैट्समैन पे टारगेट करे उस टाइम ऑलमोस्ट सारे टीम्स अपने बैट्समैन को देख चुके थे, इसलिए उनको ज़्यादा कुछ उनका मनी स्पेंड नहीं हुआ, और जहाँ पे वो चाहे वहाँ पे अपना बजट को पूरा हाई लेवल तक लेके मैच को डन करा पाए। एंड मुझे लगता है इस बार तो क्रिकेट ग्राउंड पे इन रियल होगा बूया। ओहो भाई, कैटेगरी ए से मैक्सिमम 5 प्लेयर हर टीम ले सकती थी, लेकिन 3 ही टीम्स है जिन्होंने वो कैटेगरी ए का जो अपर लिमिट है ना उसे टच किया। अल्पाइन एसेस, कलारी नाइट्स एंड नेक्स्टेरा नवाब्स। बाकियों ने कैटेगरी बी पे ज्यादा फोकस किया। बर्मुडा ब्लास्टर्स 7 खिलाड़ी वहां से लिए, पीक पैंथर्स 6 कैटेगरी बी से लिए, सोलारा सुल्तान्स उन्होंने 7 प्लेयर कैटेगरी बी से लिए। अब देखो, अगर ये ऐसा होता ना, मुझे तुम लोगों से पूछना होता कि ये टीम बन गई है, बैटल ग्राउंड सेट है, तो बैटल ग्राउंड पे कौन ज्यादा अच्छा खेलने वाला है, ये तुम बता पाते, क्योंकि तुम्हें पता है सब बैटल ग्राउंड पे कौन क्या करता है, कोई स्नाइपर गॉड है, कोई स्प्रे गॉड है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि फॉर एग्जांपल अल्पाइन एसेस क्या ये ट्रॉफी उठा सकती है? अकॉर्डिंग टू द स्क्वाड सबसे महंगा खिलाड़ी इनका देखो, इनका सबसे महंगा खिलाड़ी कॉन्सेप्ट है 155 CR, 1 करोड़ 55 लाख FF कॉइंस। लेट्स बी क्लियर। जब देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग चीज इस टीम में रहने वाली है कि अग्रेसिव प्ले करने वाली है, ज्यादा बैटर ओरिएंटेड इनका प्ले होने वाला है, तो रन्स खींचने का ऑफ कोर्स ये ट्राई करेंगे। एंड फौजी जी का यही प्लान है कि जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा रन क्रिएट करें उन 10 ओवर्स के अंदर, एंड देन उसके बाद एक हाई स्कोर क्रिएट करके आप वहां पे सेटल कर दें, देन उसके बाद फील्डिंग में देखा जाएगा। पर देखिए, ये स्ट्रैटेजी बैकफायर भी कर सकती है, तो देखते हैं कि अभी किस तरीके से प्ले करते हैं। कंसेप्ट इनका सबसे इंटरेस्टिंग बाय था, जो मुझे लगता है कि सबसे इंटरेस्टिंग बिड जो डाली थी 155 लाख की। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो पूरी टीम के अंदर एक परफेक्ट प्ले होने वाला है, पर वही बात है कि अग्रेसिव, देखिए अग्रेशन एक अच्छा डिफेंस है, पर अग्रेशन कभी कोई बैकफायर भी कर सकता है। थर्ड टीम थी आज की रात जिन्होंने अपना स्क्वाड कंप्लीट किया था, एंड अल्पाइन एसेस के बाद चलिए अब अगली टीम की तरफ बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं दूसरी टीम का स्क्वाड। सबसे पहले आपने अल्पाइन एसेस का स्क्वाड देख लिया। इनके मार्की प्लेयर फौजी अजय हैं, जो 1 करोड़ 20 लाख FF कॉइंस में इन्हें प्री ऑक्शन में बिड करके ले लिया गया था, और उसके बाद सबसे महंगी बाय इनकी है 1 करोड़ 55 लाख की कॉन्सेप्ट। उसके बाद बर्मुडा ब्लास्टर्स दूसरे नंबर पे इन्होंने अपना बिड कंप्लीट किया, एंड जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पर ऑरा के साथ आके बातें की और दूसरी टीम्स को धमकी दी कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो ऑलरेडी क्रिकेटर्स हैं, डैडी कॉलिंग पूरे स्टेट के लिए खेलते हैं। स्टेट लेवल प्लेयर है। DG इग्नाइट पे उन्होंने एंड मोमेंट पे 1.2 CR लगाया। देखा जाए तो फर्स्ट देखते हैं, लुइस भी बहुत बढ़िया खेलता है। हाँ। देखते हैं यहाँ पे अगर देखें तो ब्लैक फ्लैग आर्मी 40 पे उनको मिल गए, चिरायू 25 लैक्स पे एंड लुइस 90 पे गए, बट देखा जाए तो इनको ज्यादा स्पेंड करना नहीं पड़ा है, कुछ वैसा ही सीन है। इनका भी काफी एंड में आके चीजें सॉर्टेड थी, और जैसा आप कह रहे थे ये बैंक मैनेजर रह चुके हैं रॉकी पहले, तो इनके फंड्स अलॉटमेंट बहुत क्लियर थे कि किधर क्या अलॉट करना है। सो बर्मुडा ब्लास्टर्स ये बनी थी दूसरी टीम जिन्होंने अपना स्क्वाड कंप्लीट किया। उसके बाद अगली टीम की तरफ बढ़ते हैं। कलारी नाइट्स आखिरी टीम थी जिन्होंने अपना स्क्वाड कंप्लीट किया। आखिरी 2 प्लेयर आइकॉनिक एंड नैंसी, ये इन्हें बेस प्राइस पे मिले, इन्होंने खुद चूज़ किए। उसके अलावा इनके अगर कुछ टॉप एक्सपेंसिव बाइस की बात करें तो अंशु एंड अभी, ये इनके 2 टॉप एक्सपेंसिव बाइस रहे। कोई, और इस बीच में इन्होंने इनसेन एरिना पे भी काफ़ी अच्छा स्पेंड किया था, 50 लाख मैनेजर आए थे। फिर अगर हम बात करेंगे बॉस स्पाइडर को, यहाँ पे इन्होंने पिक करा था 50 लाख में, एंड 75 लाख में इसके साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हिमनीश को भी इन्होंने बाई करा था। तो ऑफकोर्स ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बिडिंग रही। और लास्ट में जो सबसे इंटरेस्टिंग था, मन चाहा आपको प्लेयर मिल गया, टी आइकॉनिक एंड गॉर्डल नैंसी, एंड ऑफकोर्स यहाँ पे कलारी नाइट्स गए हमें जोर काफ़ी इंटरेस्टिंग टीम बनते हुए नजर आ रही है, काफ़ी इंटरेस्टिंग पिक्स रहने वाले हैं। पर अभी भी कुछ और टीम्स आनी बाकी है, कुछ और टीम्स की चर्चा करनी बाकी है, क्यों ना जंप करते हैं अगली टीम की तरफ। चलिए अगली टीम की तरफ बढ़ते हैं। कलारी नाइट्स, ये तो वो टीम थी जिन्होंने आज ऑक्शंस में सबसे लास्ट अपना स्क्वाड कंप्लीट किया। उसके बाद नेक्स्ट्रा नवाब्स, इनकी टीम में भी, अच्छा इनकी टीम में एक चीज़ देखो, इनकी टीम में कोई भी 1 CR+ वाला प्लेयर नहीं है यहाँ पे।
हाँ बात है। एंड अगर एक और चीज देखा जाए, जो फ्री फायर मैक्स खेलने वाले ऑडियंस देख रहे हैं, TSG यहाँ पे टीएसजी लेजेंड जो है, यस पूरा टीएसजी गैंग इसमें के अंदर घुसा हुआ है। हमारे ऋतिक भाई हैं, इस तरफ देखा जाए तो जैज भाई है, वहाँ पे लेजेंड अर्जुन, पूरा का पूरा टीएसजी गैंग इसी ग्रुप में है, नेक्स्टेरा नवाब्स के। और मुझे लगता है यहाँ पे पहले से ही उनका कोऑर्डिनेशन बना हुआ है। कुछ अगर अपने आप से ही अगर घर पे वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो मैच के अंदर उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला, और लगता है कुछ नेक्स्ट लेवल धमाका करेंगे ये। अब नेक्स्टेरा नवाब्स के स्क्वाड के बाद चलिए अब अगले स्क्वाड की तरफ बढ़ते हैं। पीक पैंथर्स अगला स्क्वाड, सबसे पहली टीम थी जिन्होंने अपना स्क्वाड कंप्लीट किया। जॉन्टी इनके मार्की प्लेयर, और उसके बाद दिस टीम वाज ऑन अ रोल। अगर ये किसी खिलाड़ी को चाहते थे तो फिर पूरे दिल से चाहते थे, फिर चाहे ओल्ड मॉन्क हो 1 करोड़ 55 लाख FF कॉइन्स खर्च किए, KV18 उनके लिए 1 करोड़ खर्च किया और अपना स्क्वाड कंप्लीट किया सबसे पहले। देखिए ये केवल आज इन्होंने टीम नहीं बनाई है, ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी क्रिएट करता है सामने वाली टीम्स के ऊपर कि हम तो पहले ही लेकर के बैठे हुए थे, हमने जो चाहा वो मिल चुका है, तो बाकी सारी टीम्स को एक बार अपने पिक्स की तरफ दोबारा से सोचना पड़ेगा, रीथिंक करना पड़ेगा। उस डिलेमा में जरूर से उस बाकी टीम्स को डाल दिया है। KV18 एक बहुत कमाल के बॉलर होने वाले हैं, मैंने इनको बैटिंग करते हुए देखा, काफ़ी कमाल का करते हैं प्ले। एंड जॉन्टी गेमिंग ऑफकोर्स मैनेजर आए थे यहाँ पे 100 लाख की एंड 1 CR के। सोलारा सुल्तान की क्यों ना चर्चा करें बच्चे से। बिल्कुल ज़रूर। सोलारा सुल्तान में हमारे नॉन स्टॉप भैया और मार्की प्लेयर्स को भी देखा जाए तो वासियो भाई इस ग्रुप में, और रात के 2:30 बजे तक जो मीटिंग चल रहा था, इसका मतलब कुछ तो प्लान ये लोग किए थे जिसकी वजह से यहाँ पे देखा जाए तो सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजिक टीम। शैडो जो मीटिंग चल रही थी, तुझे दिख रहा है कि वो मीटिंग में कुछ यहाँ पे काम आया है? मुझे लगता है उन्होंने शायद से ऑप्शन हमारे कैटेगरी A को छोड़कर कैटेगरी B के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया, और जिन लोगों पे प्लेयर नहीं देखते हैं उन लोगों पे इन लोगों ने बिड मारा है। भाई सोलारा सुल्तान के आज अच्छा, इस ऑक्शन के सबसे महंगे जो खिलाड़ी हैं वो ब्लैक हैं, और वो सोलारा सुल्तान की टीम में गए 1 करोड़ 75 लाख FF कॉइन्स, और ये सबसे एक्सपेंसिव बाय रहा है इस ऑक्शन का। दूसरे स्थान पर हमने देखा कि ओल्ड मॉन्क थे 1 करोड़ 55 लाख, और अंकित वाल्डिया उनको भी 1 करोड़ 55 लाख मिले थे। तो भाई ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो कि आज करोड़ों में गए हैं। चलिए फिलहाल मैं यहाँ पर 2 बहुत ही कमाल के लोग बुलाने वाला हूं, एक फौजी अजय और दूसरे नेक्स्टेरा नवाब से ऋतिक। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। क्या हाल चाल अजय भाई? हाउ आर यू ऋतिक? भाई अब सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि इट इज द इनॉग्रल सीजन है ना, फ्री फायर मैक्स मोबाइल पे खेल लिया, स्ट्रीमिंग कर ली, अब जरा मैदान पे उतर के चौके छक्के लगाने का सीजन है। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ द ऑक्शन? फर्स्ट आप बोलो भाई। अगर बात करूँ ऑक्शन की तो काफ़ी अच्छा ऑक्शन था मेरे लिए, मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और ये सब बिल्ड ऑक्शन की बिल्डिंग करना और उतना ही मुश्किल था मेरी टीम के लिए, क्योंकि उन्होंने मार्केट प्लेयर काफ़ी महंगा खरीदा था 1 करोड़ 20 लाख का, फिर और 1.55 का भी तो खरीदा आपने। वो बाद में, मतलब वो मैंने जब मेरे को जो प्लेयर चाहिए थे, जो बकेट लिस्ट थी, वो जैसे कंप्लीट होती जा रही थी, तो एक स्ट्रेटजी का गेम प्ले है। मतलब ऑक्शन इज लाइक नॉट फन, इट्स नॉट, ऐसा नहीं है कि आप एक बड़ा प्लेयर आप ले सकते हो, इसमें आपको पूरा दिमाग लगाना पड़ता है कब कौन सा प्लेयर आपको लेना है, कितना बीट तक जाना है। मेरा एक और सवाल है, ये बिल्कुल। चैट पे भी सवाल हो रहा है, जैसे आपकी बोलो ना बकेट लिस्ट ऑफ प्लेयर, तो 2 माफिया दोस्त हैं आपके, एक माफिया बकेट लिस्ट में नहीं था क्या? था बकेट लिस्ट में, वो डिसाइड ऐसा हुआ था कि उसको डिलीट लेने वाला है। मैं माफिया बाला को मैं पिक कर रहा हूँ एंड माफिया को डिलीट पिक करने वाला है, बट मैं शायद इतना शोर शराबे में समझ नहीं पाया क्या हुआ। तो जब मैंने देखा कि माफिया कहाँ गया है तो पता चला कि वो एनजी में जा चुका है, तो मुझे भी सरप्राइज लगा कि हुआ क्या, ये मतलब ये होना नहीं चाहिए था। ओके ऋतिक, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस भाई ऑक्शन का? लाइक इट वाज क्रेजी, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, एंड जो मैनेजमेंट था बहुत ही अच्छा लगा। समथिंग लाइक दिस, मतलब ये तो होना ही चाहिए बार बार। एंड फर्स्ट टाइम था, थोड़ी प्रॉब्लम्स हो गई, बट ये आने वाले टाइम पे और भी अच्छा होगा। बट ये बहुत ही खुश हूँ मैं कि जो बाकी टीम्स है जिन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे लगा के प्लेयर्स लिए, मेरी जो टीम बनी है सारे इक्वल लेवल के प्लेयर्स है ना आपकी टीम में? कोई भी 1 CR कोई प्लस भी नहीं 1 CR के ऊपर नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तो जो प्लेयर सोच के आए थे वो मिले, या फिर कोई ऐसा मिस हुआ जो आप सोच रहे थे कि यार अरे यार ये निकल गया यार? 1-2 प्लेयर में ऐसा हो गया, वो हो गया मन, एक मेरे को चाहिए था मन, और अभी ये दोनों मेरे बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट प्लेयर थे टीम लिस्ट में हिसाब में। बट प्रॉब्लम इधर हो गई कि मैंने कैटेगरी A के प्लेयर्स बहुत पहले उठा लिए, एंड मैंने ये मिस आउट कर दिया कि अगर दूसरी टीम के 3 प्लेयर नहीं होते तो हम नेक्स्ट प्लेयर नहीं ले पाएंगे। तो बजट तो अच्छा खासा पड़ा था मेरे पास, बट उस प्रॉब्लम की वजह से 2 प्लेयर मिस आउट हो गए, बट उनके बदले भी 2 प्लेयर जो मिले ठीक है।
भाई आपका तो एक माफिया मिस हुआ, ऐसा हुआ और कोई प्लेयर है जो आपका मिस हुआ कि यार ये मिस हो गया यार, इसको लेना था यार? ऐसा तो इतना नहीं हुआ, बट एक दो प्लेयर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि वो सरप्राइज रहेगा, क्योंकि अगर इतना हाइप मिलेगा प्लेयर्स तो वो ऑलरेडी जब ज़्यादा अच्छा खेले तो ज़्यादा दुख होगा। बट मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था, मतलब ऑक्शन के अंदर, क्योंकि बजट की बहुत प्रॉब्लम थी और जिस प्रकार से सब सिनेरियो चला था खेलने वाले प्लेयर्स, बट वो कंप्लीट हुआ। और जैसा ऋतिक ने बताया कि इसमें कुछ रूल्स ऐसे थे कि आपको फॉलो करने हैं, तो इसमें बहुत स्ट्रेटेजी लग रही थी, तो उसको देख के काफ़ी मज़ा आया। ऋतिक ने अपने प्लेयर मिस किए, मैंने भी एक दो प्लेयर मिस किए, बट अब जो मज़ा आने वाला है, क्योंकि जो टीम बन चुकी है वो भी कम नहीं है ऋतिक। भाई मजा तो बहुत आने वाला है। बहुत ही जल्द हम आपको बूया प्रीमियर लीग की डेट्स बताएंगे, ऑक्शन बताएंगे और आपके सारे फेवरेट गेमर्स क्रिकेट के मैदान पर चौके छक्के लगाते हुए वहां पे आपको नजर आएंगे। मैं हूं कुणाल सलूजा, मुझे दीजिए इजाजत। दिस वाज द ऑक्शन ऑफ द इनॉग्रल सीजन ऑफ बूया प्रीमियर लीग। फ्री फायर मैक्स के खिलाड़ी अब तैयार हैं क्रिकेट के मैदान पर अपनी स्किल्स दिखाने के लिए। गुड नाइट। चल दे देखा किस मिट्टी से तेरे सपने बने, कर दे धुआं जिस रास्ते पे भी तेरे पांव पड़े। बस बात बात नहीं घात घात कर, बस में तो सारे हालात लात कर। हुनर से अपने दिन को रात कर, अपना ही कुछ नया इजाद कर। तेरा मुकाबला खुद से, मौसम बदले तेरे रुख से, कि खुदा भी किस्मत लिखने से पहले तेरी रजा पूछे तुझसे। तू शेर की दहाड़ दे, चितड़े तू डर के भाड़ दे। इस दुनिया के हर कोने तक तू ख्वाब अपने पसार दे। खोल दे जो बंधा बैठा तेरी रग रग में, उफान है उफान है उफान है तूफान है तूफान है तूफान है तूफान है तूफान है। तू जीत का ऐलान है, तूफान है 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 तूफान है। तू जीत का ऐलान है, तूफान है तूफान है तूफान है। ओए किसी से कभी मैं डरा नहीं, फालतू की बातों में पड़ा नहीं। नजर निशाने पे दुश्मन ठिकाने में कभी भी रुका मैं जरा नहीं। मन में जो ठाना वो पाना है, चलना ना कोई बहाना है। कितना है दम बाजुओं में ये दुनिया को बिना झिझक के बताना है। सारा जमाना है कदमों के नीचे की चील सी मेरी उड़ान है। तूफान है तूफान है तूफान है तूफान है तूफान है। तू जीत का ऐलान है, तूफान है 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 तूफान है। तू जीत का ऐलान है, तूफान है 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 तूफान है। तू जीत का ऐलान है, तूफान है तूफान है तूफान है। आए हैं छोरे धूम मचाने, क्लच दिखलाने मस्ताने यार। हे आए हैं छोरे धूम मचाने, क्लच दिखलाने मस्ताने यार। कुड़िया भी हाजिर है रंग जमाने, रश करने को हरदम तैयार। तूफान बन के लड़, लीडर बन के बढ़, लगा के ग्लू वॉल और हेड शॉट लगा। अला रे फ्री फायर पे दिल अला रे, छाया रे फ्री फायर फीवर छाया रे। अला रे फ्री फायर पे दिल अला रे, छाया रे फ्री फायर फीवर छाया रे। अला फ्री फायर पे दिल अला रे, अला फ्री फायर पे दिल अला रे। ग्रैंड मास्टर बन या फिर कर तू किल चोरी, बदमाशी कर ले लॉल इमोट से। स्नाइपर लेकर
बन जा शिकारी, थोड़ा फ्लैंक करके कवर तो दे। डट के लड़ना है, बच के रहना है, एक ही एचपी पर कर ले बूया बूया बूया। आला रे फ्री फायर पे दिल आला रे, छाया रे फ्री फायर फीवर छाया रे। आला रे फ्री फायर पे दिल आला रे, छाया रे फ्री फायर फीवर छाया रे। आला फ्री फायर पे दिल आला रे, आला फ्री फायर पे दिल आला रे। Booyah! Drop.